Hi guys, all of you all have worked seriously hard for Catch 2022. But now is the time when all of that hard work is going to culminate on D-Day. First thing I want to tell you all is just remain calm, be composed, don't take undue pressure on yourself, it is not going to help you. You need to ensure that you become a big match performer. You become a Virat Kohli, a Sachin Tendulkar, an MS Dhoni or whoever else you might like, a Cristiano Ronaldo, a Leo Messi. I don't care the names that you might think of. You need to be a big match player. To be a big match player, you need to be confident of your ability and the hard work that you've gone ahead and put in, and you need to go ahead and just relax a little, okay? So while you do all of that, BYJU'S exam prep brings to you a whole lot of activities on the 27th of November. After your exam for the first slot, come to us quickly at around 11:30, just 45 minutes to an hour after the first slot for the first impression, where we'll talk a little bit about the LOD and just help the others in the other two slots calm their nerves. Then do catch us for the analysis that will happen after every slot, not only on the BYJU'S exam prep app but also on the YouTube channel. In addition to that, we are coming up with a score calculator where you can come in and state your estimated attempts, whereby we will be able to analyze the score across slots, and when the official response sheet comes around the 2nd or the 3rd of December, basis these inputs, we'll be able to give you an expected percentile as well. Hence, I encourage all of you to come on the 27th, give us your expected scores, expected attempts. Either you can do it on the website byju'sexamprep.com or you can do it on the app. It's very simple, download it, use it, okay? From all of us, do go ahead, utilize these things. It will help you calm your nerve, and all the very, very best. I'm sure you'll put your best foot forward and have an awesome 27th November. Good morning, everyone. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning, all of you. So, welcome back on day 2 of the marathon. So we all are here once again with you once again for that 8-hour session that we had yesterday. I'm sure you all liked it. And once again, we'll be discussing all the same things in a different manner today. Of course, not the same things. मतलब ये मत सोच लेना question भी same होंगे. But the topics are going to be the same. Same 4 people with the same energy. And I'm sure you also would be carrying the same energy as yesterday. And we hope that you all are not tired on the first day. And today you are going to start with more amount of energy with these new set of questions. हाँ मतलब बनाने से पहले तोड़ना पड़ता है ना तो. All right. So अब 2 दिन 8 घंटे पढ़ सकते हो लगातार, बैठ सकते हो. तो I believe for the next 1 week में 4-5 दिन 3-3, 4-4 घंटे लगातार बैठने की आदत डाल लोगे. Right? So are you guys ready to run? Yes? चलो शुरू करते हैं. Starting with the count today too. Yes. सरल सर को ठंड लग रही है? नहीं, सरल सर को ठंड नहीं लग रही. सरल सर ही ठंड है. I'm hot actually. इसलिए ऐसे केस में बाहर से ठंड ज्यादा लगती है. तो इनके रेडिएशंस बाहर निकल के दूसरों को अफेक्ट ना करे, इसलिए जैकेट पहना है. चलिए, we'll start. सरल सर, start करते हैं. Okay. So again, I'll just brief you about today's schedule. So we'll be starting with quantitative ability. QA से start करेंगे हम, and then Vikrant sir will take over at somewhere around 1 o'clock. All right, 1:30 के आसपास Vikrant sir will take over. Vikrant sir will have his session for 2.5 hours. We'll give you a small break like yesterday, 10 minutes break after Vikrant sir's session, and then after we'll start with LRDI. All right, so all the best. Keep your energy levels up. Take some energy drinks, some food with you so that you will not miss even a single second of this session. All right, okay, all the very best. Thanks. Likes, yes. So मैं starting में ही बोल देता हूँ. So right now there are more than 130 students who are watching live, and as usual, keep increasing the number of likes. Okay. I have already told them the rules that the number of likes is directly proportional to your percentile in CAT. वाह जी So वाह. keep that in mind. जितना ज़्यादा आएगा उतने ही ज़्यादा percentile भी आप लोग expect कर पाओगे. हाँ, when it is more than 100, तो जो भी excess है above 100, वो हम लोग VA की तरफ भेज देंगे. जब 200 से ऊपर चला जाएगा तो LRDI की तरफ भेज देंगे. ठीक है? 300 से ऊपर चला जाएगा तो बाकी पेपर्स में भेजना शुरू कर देंगे. So just keep doing that. And today we are planning to cover more number of questions. So all your seriousness should be there towards the session. All right. So make sure that you are very serious. You are attempting each and every question by yourself. When we
put that question in front of you. So try to solve these questions every time. Don't be tired. Okay. So all the best. स्टार्ट करें सर. बिल्कुल. Okay. ऐसे समझ लो यार, मतलब आज 8 घंटे के लिए तुम लोगों को दोबारा GOT का एक सीजन देखना है. सो yesterday was season 1 and today is season 2. तो सीजन 1 में भी आपने देखा होगा, जब हम लोग बैठ के देखते हैं ना, तो वी वॉच इट इन लूप, लगातार देखते हैं पूरा का पूरा. जैसे गेम ऑफ थ्रोन्स मान लो, या फिर आप लोग ये समझ लो फ्रेंड्स देख रहे हो, मनी हाइस्ट मान लो, बिग बैंग थ्योरी, वॉट एवर यू लाइक, या फिर रामायण महाभारत देखता है कोई, अगर उसको कोई 8 घंटे बैठ गए. मिर्जापुर जरूर मान सकते हो. काश हम लोग यहाँ मिर्जापुर वाला माहौल क्रिएट कर सकते हैं. ठीक है. सो बहुत जगह बीप 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 करना पड़ेगा, मन बहुत करता है वो करने का, अनफॉर्चुनेटली, है ना. तो यस्टरडे वी वर डिस्कसिंग कि शायद कभी ऐसा दिन आएगा, एक यूट्यूब अडल्ट भी आएगा जहाँ पे हम लोग उस तरह की बातें भी कर पाएंगे. लेकिन होप कि कभी होगा, दोबारा तुम्हें बुला लेंगे. ठीक है. जब तुम आयम में बैठे होगे, आओ अब की बार थोड़ा सा बढ़िया सेशन करेंगे. एनीवेज, बट without that also we can do good. So once again we'll start today with the arithmetic. Okay. So first few questions from arithmetic, then we'll be taking algebra, geometry, and also we start with the क्वांटिटेटिव एबिलिटी. उसका एक मेजर सा पर्पस ये होता है, बिगिनिंग ऑफ द सेशन में एक तो बहुत अच्छी कंसंट्रेशन भी नहीं रहती. वी थॉट ऑफ डूइंग LRDI फर्स्ट, लेकिन कंसंट्रेशन बहुत अच्छी नहीं होगी, तो शायद इसलिए क्वांट करना बेहतर रहेगा. ठीक है. आफ्टर दैट विक्रांत सर वुड कम. सम पीपल आर ऑलरेडी सेइंग दिस कि विक्रांत सर आएंगे क्या आज, तो विक्रांत सर वुड डेफिनेटली बी देयर. आफ्टर द QA सेशन ही वुड बी देयर विद द VA सेशन, एंड देन आई विल बी टॉकिंग अबाउट LRDI 2. तो ये सब हम लोग आज करने वाले हैं. तो एक बार लाइक सर दोबारा बता दो मुझे कितने हो गए हैं, तभी शुरू करेंगे. 165 watching. Only 34 likes. So please make the number of likes more than 100 only, then we are going to start, otherwise not. वरना तो कोई सेंस नहीं बनती स्टार्ट करने की. जब तक लाइक्स 100 से ऊपर नहीं चले जाते हैं तब तक तो नहीं. 100, अरे बोलते ही हो गए, 100 हो गए, अभी तो कह ही रहेंगे. शुरू कर दो सीधा सीधा. वंडरफुल. चलिए जी. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे. Okay, of day 2 of our marathon, the final day of the marathon. So शुरू करते हैं 8 घंटे की अगली यात्रा. तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा आपके सामने. ऐसे भी तो होता था चेंज, गया वो जमाना. हिल गया वो तो पूरा स्लाइड, है ना. ये कहेंगे कल भी ऐसे ही खेल रहे थे इनके साथ, आज भी ऐसे ही खेल रहे हैं. चलिए, हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन. लेट्स स्टार्ट. शुरू कर देते हैं फटाफट. अच्छा, बोल रहे हैं 100 से ऊपर आ गए थे. ठीक ठीक ठीक. वो पहले नहीं देख पाए थे. हाँ. Let's start with the first question. And today's questions of course are going to be a little high in difficulty level from yesterday. करना भी है ये हम लोगों को. कब तक आसान आसान चीजें पढ़ते रहेंगे यार, अब कुछ बढ़िया भी पढ़ना है. So we are going to do that today. First question on your screen. Let me see how many of you answer this correctly. Good question. Hates variables more than his enemies. Loves number of likes more than his lovers. More than his lovers. Lovers. काश ये एक वो होता, मतलब lovers plural होता. Currently it's a singular. Starting with a good question. Varun Ranganathan has answered as 248. Okay, Varun. Satyanshu has also answered as 2. सब बी पे अटके. हाँ, आज इसलिए हमने 2 कर दिया, बी करा ही नहीं. बी आंसर आया जा रहा था. Prakriti says 2. Rishabh Agrawal is getting 4th option, that is 64. Okay. अनुजा का आंसर 48 है. अभिलाषा का आंसर 48 है. जेठालाल भी 48 कह रहे हैं. 2 मीन्स बी क्या? हाँ, मतलब बी बोल दो 2 बोल दो, एक ही बात है. 48 48 48 48 64 48. बहुत सारे लोग फिर से आज बी से शुरुआत कर रहे हैं. मेरे ख्याल से समझ गए हैं कि शायद कुछ भी हो, बी तो सबसे सेफ ऑप्शन है ना. अनंत ने 50 बोला है. कृष्णा 48. आशीष 48. आज 2 नंबर का काम करेंगे. आज बी नंबर का काम नहीं करेंगे. सो फिर से 2 48 2, सब लोग 2 ही ज्यादातर बोल रहे हैं.
Okay, Siddhant Jain also got 2. Aditya Iyengar सब भी बोलना चालू कर दिए. Yes, Satyam Swaroop says 50, Anita 48, Akash 4th option, 64 as well is there. BYJU'S का प्रमोशन है. हाँ, ये हमने सोचा नहीं वरुण. ठीक है, तो कर देना चाहिए था हमें. ऑप्शंस का नाम लिख लेना चाहिए. A, BYJU'S, C, D. 4th 48. देन चलिए लेट्स स्टार्ट डूइंग इट. करना शुरू करते हैं. Average marks of the girls in a class is equal to the number of boys and average marks of the boys is equal to the number of girls. So if I talk about boys and girls, so एक तो है number of boys and number of girls और एक है average marks of boys and average marks of girls. ये दो चीजों का हम लोगों को यहाँ यूज करना है. Now he says average marks of girls is equal to the number of boys. So if number of boys is X, average marks of the girls are also X. This number is equal to that. तो अगर ये X है तो वो भी X होगा. Secondly, he says the average marks of the boys is equal to the number of girls. So if this is equal to Y, that is also equal to Y. So there are X boys with an average of Y, Y girls with an average of X. So total marks of the boys, of course, I can say is X into Y, and total marks of the girls also I can say Y into X or X into Y. That's one or the same thing. What next? It says that if the class average, so first of all, let us calculate the class average. So the class average would be the total score of the class, which is 2xy upon total number of students, which is x plus y. Class average is the total marks of the class, xy boys के marks, xy girls के marks, so total marks हुए 2xy divided by the number of boys and girls, that is equal to x plus y. This is the class average. It is 4 less than, ये किससे 4 कम है? It is 4 less than the average of the boys average marks, which is y, and girls average marks, which is x. So average of boys average marks, that is y, and girls average marks, that is x. So average of y and x, and average of y and x is x plus y divided by 2. So this is the equation that they have given us. The class average is total marks of the class divided by total students is equal to the average of boys average marks, girls average marks, उनका average निकाला -4 because उससे 4 कम है. This is what it is saying. Okay. So I'll do one thing. I'll just eliminate the denominator. Denominator eliminate करने का एक तरीका है 2 से भी और x plus y से भी पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो. So 2 into x plus y मल्टीप्लाई कर देता हूं. यहाँ x plus y कट जाएगा, सिर्फ 2 मल्टीप्लाई होके बन जाएगा 4xy. यहाँ 2 कट जाएगा, x plus y मल्टीप्लाई होकर बन जाएगा x plus y का स्क्वायर माइनस 2 into x plus y is 8 times of x plus y. 4xy into x plus y का स्क्वायर minus 8 times of x plus y. Now, whenever you have x plus y का स्क्वायर and 4xy और 2xy with it, तो उससे आपको कुछ तो पक्का ही क्लिक करना चाहिए कि x plus y के स्क्वायर में 4xy का क्या रोल है या 2xy का क्या रोल है. ऑफ कोर्स वी नो x plus y का स्क्वायर जो होता है दैट इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2xy. नाउ x plus y का स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर plus 2xy. So if I take this 4xy on the other side, ultimately actually it will become x minus y का whole square, right? x square plus y square plus 2xy. अगर इसमें मैं 4xy माइनस कर देता हूं तो ये बन जाता है x minus y का whole square. That means if this is taken on that side and that I took on this side, so 8 times of x plus y is x minus y का whole square. What does it tell you? Question is, which of the following could be the number of students? Could be the number of students. Now, what is the number of students here? The number of students here is x plus y. Question पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी वैल्यू x plus y की हो सकती है. This equation says कि 8 times of x plus y is actually a square. 8 times of the number of students is a perfect square. So 8 times of 24, 192, not a square. 8 times of 48, 392, not a square. 8 times of 48 कितना होता है? 384 I suppose. 384. 8 times of 50, it is a square. And 8 times of 64, it is not a square. So therefore, answer is option 3, which is equal to 50. So fortunately or unfortunately, we did not start with B as an answer. The answer is option C, that's 50. Got it now?
So Mandeep कह रहे वेरिएबल इज नॉट योर वे. आई नो दैट बट आई डोंट हैव एनी ऑप्शन इन दिस क्वेश्चन प्रोबब्ली. इसमें तो मुझे लग नहीं रहा बिना वेरिएबल के कुछ कर पाएंगे क्योंकि इक्वेशन सारी उन्हीं से बनती हैं. तो पॉसिबल एंड जरूरी नहीं है कि इस क्वेश्चन का एक यूनिक आंसर आएगा. तभी क्वेश्चन है कि which of the following could be absolutely. तो ऑप्शंस मतलब एग्जैक्ट एक आंसर इसका आना ही नहीं है. ठीक है, एक आंसर नहीं आएगा तो अलग अलग आंसर आएगा. बट द पॉइंट इज, देखिए ये मत सोचेगा कि इफ आई लुक एट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन कि अगर यही क्वेश्चन एग्जाम में आया तो क्या मैं करूंगा या मैं नहीं करूंगा, राइट? वो दिमाग में हम लोगों के रहता है. बट माई पॉइंट इज दैट व्हेन वी आर डूइंग दीज क्वेश्चंस यू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स, राइट? यू लर्न दिस कि हाउ डू वी कैलकुलेट द एवरेज हियर, हाउ डू वी मेक एन इक्वेशन, हाउ डू वी डील विद x प्लस वाई का स्क्वायर एंड 4xy. ये छोटी छोटी चीजें जो सीखने की हमारे लिए, जो कहीं और किसी भी और क्वेश्चन में काम आ सकती हैं. अब शायद आपके दिमाग में रहेगा आज के बाद कि x प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 4xy x माइनस वाई का स्क्वायर होता है. यू माइट यूज इट एट सम अदर प्लेस. सो नॉट दैट वन पर्टिकुलर क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट कि ये आएगा नहीं आएगा. इसके जो स्टेप्स हैं वो बहुत सारी चीजें हैं. मतलब एक जो रास्ता है उसमें आप बहुत कुछ सीख रहे हो. नॉर्मली बोलते हैं ना ऐसा कि जब आप अपनी मंजिल की तरफ चल रहे हो तो उसका रास्ता भी खूबसूरत अपने आप हो जाता है. यू लर्न अ लॉट फ्रॉम दैट. दिस इज द वे. ओके, सो अनुजा कह रही है लास्ट पार्ट एक बार और बता दीजिए, रिपीट इट इन द लास्ट क्वेश्चन. अभिलाषा भी कह रही है शायद नहीं अच्छे से समझ में आया, कोई बात नहीं, एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं इसको, ध्यान से सुनिएगा. ठीक है. इसमें हम लोगों के पास हाइलाइटर का ऑप्शन है क्या? शायद ये है ना? तो अच्छा लगेगा अगर हाइलाइटर यूज कर लो. एक बार पहले करके देखो और मोटा करना पड़ेगा उसको. हाँ हाँ, वो नई नई चीजें ट्राई करते हैं, मजा तो आ ही रहा है उसमें करने में. ये बात सही. ठीक है, बहुत सही. इसकी वो ना कम होगी. ठीक. हाँ जी. The average marks of the girls in a class is equal to the number of boys. So average marks of the girls is equal to the number of boys. So I took the number of boys as x. So average marks will be equal to that. So that would also be equal to x. So number of boys is equal to the average marks of girls. Similarly, average marks of the boys is equal to number of girls. So average marks of the boys उसको y लिया तो number of girls भी y होगी. They are also equal. The next important part is the class average. What is the class average? Total marks of the class divided by the number of students. Total marks of the class, boys के marks कितने हैं? X boys हैं, Y average है, marks are XY. Y girls है, X average है, total is X into Y. So the total score is XY plus XY, which is 2XY, divided by the number of students, which is X plus Y, which I got from here. X plus Y is the number of students. तो ये average आ गई हम लोगों के पास class की. This average is 4 less than, ये 4 कम है. किससे 4 कम है? The average of the boys average and the girls average. Boys average और girls average का average. Boys average is y, girls average is x. इन दोनों का average x plus y by 2, which I have written over here. राइट. सो मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके मैं यहां पहुंचा 4xy इज इक्वल टू x प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 8xy. एंड दिस इज व्हाट आई वांट टू टेल ऑल ऑफ यू कि ये ध्यान रखिएगा, x प्लस वाई के स्क्वायर में 4xy अगर आप माइनस कर रहे हो तो वो x माइनस वाई का स्क्वायर हो जाता है. लर्न इट एज अ डायरेक्ट रूल. एग्जाम में क्यों प्रूव करना है, वहां कौन हमारा सॉल्यूशन देख रहा है, व्हाट आर वी राइटिंग. So we are just concerned about the rule. Final rule is x plus y square minus 4xy is x minus y square. So ultimately I can say this minus this is x minus y का whole square. तो वो मैं इधर ले आया 8xy, which tells me कि 8 times of the number of students is a square, which is only possible in option 3. Okay. So people who are asking for it कि नहीं समझ आया है, I'm sure that they all understood it now without a problem. Some of the students must understand this thing that we can not start eliminating options in every question from the beginning. Like ऐसा जरूरी नहीं है कि from the beginning of the question हर question में आप elimination of options के through जाओगे, right? So there are some questions जहां पे आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी. This is CAT, और CAT ऐसा नहीं बोलता है कि हर कोई question options के through हो जाएगा. Okay, important point in this question is you must need to know, like यहाँ पे भी हमने क्या किया है, इस equation के बाद we have eliminated some options. So इस equation के बाद we started using the options. So important thing to know is at which point we should start using the options. Okay, so ये बहुत important चीज है. Not from the beginning. यहाँ पे भी equation solve नहीं किया सर ने, but at this point sir started using elimination of the options. So ये एक point important है.
Reason being, when you look at the equation form, there are two variables, one equation. So anyways, you are not going to get the value. You have to find some relation, जिससे कि आप कुछ निकाल सको. सॉल्व तो नहीं होने वाला. क्वेश्चन कह भी रहा है कुड भी, उसने बताया ये कि भैया आएगा ही नहीं एग्जैक्ट x plus y तो हम तो अंदाजा पूछ रहे हैं, अंदाजा बता दो. दैट वी डिड. So question has, I believe, given a hint by writing this thing, which of the following could be. So obviously we have to go with the options at some point in time. Also, दो variables हैं तो unique answer तो नहीं आ सकता, like Navin sir said. Okay, so make sure that you understand, you know the art of using eliminations and at what point you need to do eliminate the options which are given. Okay, this becomes very important. Okay, Shivraj is asking that why 50 is the answer. Shivraj, because it satisfies here. 8 into 50 gives me the square of something. That's why we are saying 50 is the answer. Rishabh has a good question though. What if two perfect squares are there in the option? See, पहली बात तो वो normally वो ऐसा करेगा नहीं. पहली बात तो वो दो ऑप्शन ऐसे देगा नहीं, दो आंसर दे देगा तो ऑफ कोर्स व्हाट वुड यू मार्क. बट यस, कुछ स्क्वायर्स हैं जो आप यहां नहीं रख पाओगे. फॉर एग्जांपल मान लीजिए वो 8 इंटू यहां पे कोई ऐसा नंबर दे दे जो किसी ऑड नंबर का स्क्वायर बन रहा हो, राइट. अब ऑड नंबर का स्क्वायर अगर मैं एक लूंगा तो x प्लस वाई ऑड हो जाएगा, सॉरी एक इवन हो जाएगा, एक ऑड हो जाएगा. वो सॉल्व नहीं हो सकते, ऐसा पॉसिबल है. हालांकि इस क्वेश्चन में मुझे नहीं पता हो पाएगा या नहीं, बट अगर दो ऑप्शन आ जाएंगे I'll try to put one of them and check कि ये सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है. क्या x और y की इंटीग्रल वैल्यू भी दे रहा है कि नहीं. राइट, अगर x प्लस वाई ऑड है, नहीं होना है. x प्लस वाई ऑड है, x माइनस वाई इवन है. फिर अगर ये ऑड है तो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा ही नहीं. बनेगा ही नहीं, क्योंकि इसमें एक और 2 चाहिए, एक और 2 चाहिए परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए. माय पॉइंट इज कोई और भी क्वेश्चन होता, अगर दो ऐसे मिलेंगे तो एक को फिर चेक करके देखेंगे एक बार कि यार वो x और y इंटीजर दे रहा है कि नहीं. द नेक्स्ट कंस्ट्रेंट इज कि x और y इंटीजर होने चाहिए. वो ट्राई करके एक बार देख लेते हैं हम लोग. ठीक है, चलिए जी, I'll move ahead from here. So this was question number 1. We'll move to question number 2 now on your screen now. Beautiful question once again. I'm sure many of you would have a doubt about this question, but I'll clarify that. क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा सब लोग. Where are my secretaries then? मुझे नहीं पता, पीछे नाम बदल दिया गया मेरा. कम से कम सेक्रेटरीज के नाम ही लिख देते हैं. सर वो फिर सबके सामने आ जाती इंफॉर्मेशन, दुनिया के सामने आ जाती इंफॉर्मेशन. नहीं, यहाँ पर कहीं फीमेल सेक्रेटरीज नहीं लिखा. That's obvious. सर It's obvious. इस आदमी ने करना है तो फिर पक्का ही हुई है. The question was difference between the boys and girls. The answer would be 8. इसको अपने कंटेंट टीम में ले लेते हैं. ऐसे सवाल करेगा, नए क्वेश्चंस बनेंगे. हाँ, वो चेक करना पड़ेगा सिद्धांत यार. उसके बाद पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं. अब 50 के केस में दैट्स वन ऑफ द पॉसिबिलिटीज ऋषभ, जिसमें 20 बन रहा है. किसी और में कुछ और भी हो सकता है. तो डिफरेंस में हमेशा वो ये होगा और इवन होगा. जैसे 50 के केस में वो 20 आ रहा है, किसी और केस में कुछ और आएगा तो इवन ही. ये सही बात है. इवन वाला ऑप्शन. सर आप सब भी अपने मोबाइल से लाइक करते हो क्या सेशंस को? ये बढ़िया वो है यार सजेशन. लाइक करना है अपने मोबाइल से भी. वगैरह मोबाइल से कर देते हैं बिल्कुल. आप बोलेंगे तो हम वो बना लो. हाँ हाँ. गौरव सर के एंट्री इन चैट बॉक्स वो ढूंढ रहे हैं सर. आपको आ गए क्या आप? नहीं, मैं एक बच्चे ने बोला था. अच्छा अच्छा. वरुण हैज गिवन द आंसर एज 1, दैट इज ए. ओके, अच्छा कह भी रहे, थोड़ा साइड हो जाओ. निहार सेज बी. कोई अपने सेट में ना अपना नाम नहीं डालता, दूसरे का ही डालता है. सर जितने मौके पे आपने डीएलआर सेट बनाए सब में अपनी पब्लिसिटी कर दी है. तुम लोग तो करते नहीं पब्लिसिटी. सरल सर अपनी रियल लाइफ सिनेरियो बता रहे हैं. सरल सर हैज एक्चुअली सरल सर के पास ज्यादा सेक्रेटरी होंगी, बट ये क्वेश्चन सिर्फ 4 लोगों का था, तो इसलिए यहाँ पे सर को एक कंस्ट्रेंट रखना पड़ा. 4 किसी को जेलसी ना हो. जेलेसी की भी बात है, और फिर क्वेश्चन सर कितना बड़ा बन जाता. सोचिए अगर आप एक्चुअल नंबर ऑफ सेक्रेटरीज देख देते. आंसर्स नाउ डी आंसर आ रहा है, सी आंसर आ रहा है, और फिर 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, सी 4. सो सी और डी दोनों तरह के आंसर्स आ रहे हैं. डी 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 बहुत लोग डी आंसर दे रहे हैं. इसका सिंपल आंसर है जो सरल को ज्यादा पसंद है. कैन नॉट बी एब्सेंट. किसी दिन ऑड छोड़ो, तुम एब्सेंट नहीं होगे. डी बिकॉज माई वाइफ नेम स्टार्ट्स विद डी. बाद में घर भी तो जाना है. सही बात है, वो भी देख रही हो गया. मरवाओगे तुम लोग भी है, तुम तो घर चले जाओगे, मैंने भी तो पहुंचना है.
कोई घर जाएगा? नवीन सर को मैंने मैसेज किया, आप नवीन सर हो क्या कंफर्म होने के लिए? मैं 4 बजे सुबह मैसेज कर रहा है, आपने उनको जवाब नहीं दिया शायद, सुजीत कुमार को। वो पूछ रहे हैं आप ही नवीन सर हो गया। मेरा नंबर कैसे पहुंच जाएगा? कल आपने दिया था ना 9717123456। नहीं, मेरे को कोई मैसेज नहीं आया। बी डी, अच्छा बी भी कुछ लोगों का आंसर आया। सो वी गॉट B, बी C एज वेल and एज D. सी एंड डी, तीनों तरह के आंसर्स आए हैं। A वरुण भी आ पात्रा चुका था। 20 स्टार्टिंग में वरुण ने A दिया अच्छा। था। चलिए चलिए, सो लेट्स स्टार्ट डूइंग इट नाउ। ओके, ऐप पे भी देखना, मैं कुछ ऐड तो नहीं उस पे, वो शायद चिपके इसमें। हाँ जी, Saral can do a job in 2 days if his 4 secretaries, that is A, B, C and D, are all present. Okay. After that, their efficiency got reduced to 1/6, 1/4, 1/3 and 1/2 respectively, according as A, B, C, D remain absent. Okay. Now, in any day, only one secretary remains absent. Also, Saral finishes his work exactly in integral number of days. Which of the following secretaries cannot be absent for an odd number of days? So, ध्यान से सुनिएगा अब ये बात। Their efficiency got reduced to these 4 according as A, B, C, D remain absent. If I look at these 4, 1/6, 1/4, 1/3, 1/2, let's take a common number which is divisible by 6, 4, 3 and 2. Okay? Which is divisible by 6, 4, 3 and 2, and that number is 12. So let's say Saral, along with his 4 secretaries, makes 12 units in a day. Let us say he makes 12 units in a day. ध्यान से सुनना। Saral, let us say, along with his 4 secretaries, makes 12 units in a day. ये मैं assume कर लेता हूं. Okay? He can do a job in 2 days if all of them are present. If all of them are present, he is doing the job in 2 days. That means the total job is 12 into 2. That is equal to 24. So he has to make a total of 24 units. Every day he has to make a total of 24 units. What next? The next point is now that their efficiency got reduced to these 4 as A, B, C, D remain absent. That means when A is absent, the efficiency reduces to 1/6 of 12. That means he is able to make only 2 units. ये ध्यान देना, reduced to है, reduced by नहीं है, right? So reduced to 1/6 मतलब he is just doing 1/6 of the work. तो वर्क है आपका 12, 12 का 1/6 हम लोगों ने किया, that comes out to be 2. So when A is absent, he is able to make only 2 units in a day. Similarly, when B is absent, he is able to make 12 का 1/4, 3 units in a day. When C is absent, he is able to make 12 का 1/3, that is 4 units in a day. And when D is absent, he is able to do only 12 का 1/2, 6 units in a day. Now there is a very common question at this point. वो ये, सर A absent अगर है तो वो 2 ही यूनिट बना पा रहा है और चारों सेक्रेटरीज और सरल मिलके दिन में 12 यूनिट्स बनाते थे. So can't we say that A was making 10 units in a day? Are you getting my point? Saral plus secretary A plus B plus C plus D, they are making 12 units in a day. The day A did not come, they are only able to make 2 units. That means A was making 10 units, right? But that is wrong, right? This is a very common thing we generally do in all the questions. But अगर यहां पे अगर A 10 units बना रहा था तो उस लॉजिक से तो B 9 बना रहा था, 12 minus 3. उस लॉजिक से C तो फिर 8 बना रहा था, 12 minus 4. तो वो तो टोटली 12 नहीं बनता फिर ऐसे केस में. Why is this happening? This is happening because this means the work is dependent. वर्क इज डिपेंडेंट से क्या मतलब हुआ हम लोगों का? सब लोग मिलकर काम करते हैं तो काम मान लो ऐसे होता है, ए जो है एक फाइल तैयार करता है, बी का काम है उसको दोबारा एडिट करने का, सी का काम है उस पर सिग्नेचर करने का, डी का काम है उस पर टेम्प लगाने का. अब जिस दिन ए नहीं आएगा तो फाइल ही तैयार नहीं होगी. अब फाइल तैयार नहीं होगी तो बी सी डी शायद काम ही नहीं कर पाएंगे, प्रोबेबली वर्क बहुत कम हो जाएगा, राइट? तो जहां वर्क डिपेंडेंट हो जाता है वहां पे आप ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि अच्छा ठीक है 12 में से 2 माइनस कर दिया तो ए 10 बना रहा था. दैट मींस ऑटोमेटिकली यू कैन से द वर्क इज डिपेंडेंट ऑन ईच अदर. शायद इसीलिए एक आदमी के लेट ना आने से इतना इंपैक्ट पड़ रहा है हमारे काम पे. ठीक है, आई होप ऑल ऑफ यू आर गेटिंग माई पॉइंट हियर. ओके, अब यहां आते हैं इसके बाद. अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? ऑल्सो सरल फिनिशेस हिज वर्क एग्जैक्टली इन इंटीग्रल नंबर ऑफ डेज. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेक्रेटरीज कैन नॉट बी एब्सेंट फॉर एन ऑड नंबर ऑफ डेज? व्हेन ए इज एब्सेंट,
उस दिन 2 यूनिट बनती हैं, राइट। जितने भी दिन ए एब्सेंट रहेगा, कहने से उतने दिन 2-2 यूनिट्स बनेंगे, इसका मतलब इवन नंबर ऑफ यूनिट्स बनेंगी। जितने भी दिन बी एब्सेंट रहेगा, नंबर ऑफ यूनिट्स इवन भी बन सकती हैं, नंबर ऑफ यूनिट्स ऑड भी बन सकती हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि बी ऑड नंबर ऑफ डेज पे एब्सेंट होता है या इवन नंबर ऑफ डेज पे। जितने भी दिन सी एब्सेंट होगा, वट एवर इज द नंबर ऑफ डेज ऑन विच ही इज एब्सेंट, ही विल ऑलवेज बी मेकिंग इवन नंबर ऑफ यूनिट्स। और जब भी ये एब्सेंट होगा, अगेन इवन नंबर ऑफ यूनिट्स विल बी फॉर्म्ड। बनानी भी इवन है, समझ रहे बात। टोटल यूनिट्स आर इवन। इफ ए इज एब्सेंट इवन बनेंगी, इफ सी इज एब्सेंट इवन बनेंगी, इफ डी इज एब्सेंट इवन बनेंगी। अगर बी ऑड नंबर ऑफ डेज पे एब्सेंट हो गया तो ऑड बन जाएंगी। तो इवन ऑड इवन इवन का सम कभी 24 बन ही नहीं पाएगा, राइट। If the person who cannot be absent on an odd number of days, that person has to be B, because if B is absent on an odd number of days, ध्यान से सुनिएगा, if B is absent on an odd number of days, number of units formed will be 3 into odd. 3 into odd is an odd number. Whereas for the other people, whether they are absent on even or odd number of days, the number of units formed will always be even, because 2 into something has to be even, चाहे even लो चाहे odd। 4 into something has to be even, 6 into something has to be even, और टोटल भी इवन चाहिए। टोटल इवन है, 3 नंबर्स इवन है, द फोर्थ नंबर ऑल्सो हैज टू बी इवन, राइट। और फोर्थ को ऑड आप तभी बना पाओगे जब ये ऑड नंबर ऑफ डेज पे एब्सेंट होगा। देयरफॉर वी कैन से दैट बी कैन नॉट बी एब्सेंट ऑन एन ऑड नंबर ऑफ डेज। आवर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 2, विच इज बी। गॉट इट एवरीवन? आई एम श्योर दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू नाउ। जरा एक बार बताइए, सब लोग समझ आ गई है मेरी बात? इज इट एब्सोल्युटली क्लियर? आई रिपीट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हम लोगों के लिए यह है कि हम इन चीजों में से इस तरह की चीजें सीखें। इट्स नॉट अबाउट द एग्जैक्ट क्वेश्चन, इट इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग दीज स्मॉल थिंग्स हियर, राइट। दैट ओके, इवन नंबर का सम है, 3 नंबर इवन है, द ओनली ऑड नंबर इज गिवन विद बी, तो उसका मतलब कुछ लॉजिक होगा। वही आपसे पूछ रहा है कौन ऑड नंबर ऑफ डेज पे एब्सेंट हो सकता है, तो यही तो लॉजिक हम लोगों को लगाना। दिस इज व्हाट यू आर लर्निंग फ्रॉम दीज क्वेश्चंस। वी आर नॉट एबल टू डू द क्वेश्चन, नॉट ए प्रॉब्लम, कोई बात नहीं, हम नहीं कर पाए, बिल्कुल ही कोई दिक्कत नहीं है, बट ये चीजें समझ आनी चाहिए। दैट्स ऑल इंपॉर्टेंट फॉर अस, ओके। चलिए, I'll move ahead now to the next question. Question number 3 is here on your screen. Once again, a beautiful question, brilliant question. Try करो जरा एक बार। इसका as clear as Sprite. That's great. किसका? सोचा ही नहीं। हाँ, वो जीपी बनते, जीपी बनते, हाँ जीपी। ये क्या लिख रहा है देखना दीपांकर, मैं तो बायजूस, तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके बी को आंसर बुलाते हो। बच्चों कॉमेडी मत करो यहाँ पे, सीरियस हो जाओ। 5 दिन बचे हैं कैट के लिए। कॉमेडी बस हमें करनी, तुम्हें नहीं। हाँ, कॉमेडी हमें करने दो, ये वाला काम हम पे छोड़ दो। जो कॉमेडी याद है तो याद करो कि अब अगले संडे क्या। हाँ जब जब नवीन सर बोले जब जब दिमाग में कॉमेडी आए तो याद कर लो कि अपकमिंग संडे पे क्या होने वाला है, ठीक है। सो प्लीज बी सीरियस, ओके। वरुण, ओनली वन आंसर। So Anil has got C, Jethalal has got C, Varun has got C. Varun says C or D. Okay, Siddharth Singh says C, Chirag C, Anil C, Pooja Garg got D, Siddhant Jain has got D, Subhendu Datta has got D. I have not got any answers on the app. Anyone on the app? Sumant, Prasanta, Aditi Sharma, Gaurav Singh, Shubham Ganguly, Piyush Sharma, Nivya, Vishnu, Sameer, anyone? C, D, B, आप ड्रीम 11 पे टीम बनाओ, ठीक है जी, बना लेते हैं। C आंसर है, बट B को साथ रखो, ये ठीक बात है। C, D, D, A, C, C, D, D, C, D, D।
नहीं, हम बायजूस के स्टूडियो में हैं। ऋषभ हैज गॉट डी, रितिका गॉट सी, गुरु प्रसाद गॉट सी। बहुत लोगों का आंसर आया है, कुछ लोगों ने डी भी बोला है। ओके सर, कांट सी द स्क्रीन, ये भूल जाता हूँ मैं। CACD, लगता है दोनों कैलकुलेटर लेकर बार्गेनिंग कर रहे थे। नहीं नहीं, इंटेलिजेंट थे, तुम्हारे जैसे नहीं थे। कर लेते थे बिना कैलकुलेटर के। एवरेज ही तो निकालना है, तो आराम से हो जाता। तरुण हैज गॉट डी ऑन द ऐप नाउ। सत्यम गॉट डी, आदित्य सी, कटेड सीन्स, ये क्या नाम है? ऐप पर चल रहा है क्लास? हाँ चल रहा है प्रज्ञा, ऐप पे चल रहा है क्लास प्रज्ञा, यस। निकिता गॉट डी, अनीता गॉट डी, साहिल गॉट डी। करना शुरू कर दे मेरे ख्याल से। हाँ, स्टूडेंट्स ऑन द ऐप, दोज हु आर वाचिंग, प्लीज थोड़ा सा रिस्पॉन्ड करो, बी अटेंटिव, ट्राई टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस। शिवराज राणे, दानिश, साहिल, सबने, अच्छा सी भी है, डी भी है। चलिए जी, लेट्स स्टार्ट, करते हैं शुरू। You want to attend a concert by your favorite musician. Unfortunately, you do not reach on time and all the tickets of the concert are sold. However, you find one seller who has an extra ticket and is willing to sell it to you. He offers you the ticket for ₹100. तो ये भाई आपको कह रहा है 100 रुपीज में टिकट ले लो। You counter by offering ₹50. So you are like, I'm in Palika Bazaar, सीधा 50. The bargaining starts, he countering by asking the average of the two offers and you countering by average of your previous offer and the seller's new offer. The process continues in this manner until both of you agree on the exact price. At what price will both of you finally agree? ठीक है, तो मैं थोड़ी सी जगह ले लेता हूँ इसको करने के लिए यहाँ पे, and I'll do it here. कौन सा कलर दिख जाएगा? नहीं व्हाइट कर, व्हाइट दिखेगा इस पे। चलिए जी, so first of all he said 100, you countered by saying 50. That means you reduced the price by 50 rupees, right? Then he gave you another offer. That offer is the average of 150 and average of 150 is 75. So basically he increased the price by 25. Then you countered by giving an average of 75 and 50, which is equal to 62.5. So you countered by reducing the price by 12.5. Then he would be giving you an offer by giving an average of these two. इन दोनों का average देखोगे तो कितना आ जाएगा? So this is 137.5 का आधा, तो कितना बना ये? 68 point, हाँ नहीं 68.75 होगा क्या? हाँ शायद 75 होगा। So it's 68.75, which means he has further increased the price by 6.25, है ना? So इस तरह से प्रोसेस चल रही है। Okay, so I see an answer from Aditi now. 68, अच्छा वो ये बता रही थी, प्रज्ञा has got the answer जी, ठीक है जी। अभिलाषा से 75, बट अदिति ने ऑप्शन सी आंसर दे दिया है पहले। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है जी। So if I look at the change in the prices, there is a series actually. 50 माइनस का, that is equal to 100 by 2. उसके बाद 25 प्लस का, which is equal to 100 by 4. उसके बाद 12.5 माइनस का, which is 100 by 8. उसके बाद 6.25 प्लस का, which is 100 by 16. So ultimately every time it is getting multiplied by -1 by 2. क्योंकि साइन चेंज हो रहा है, इसका मतलब माइनस साइन से बार बार मल्टीप्लाई हो रहा है, और माइनस साइन से मल्टीप्लाई होके बार बार नीचे डबल होता जा रहा है, ऊपर 100 है। सो द इनिशियल प्राइस वाज 100, राइट? इनिशियल कोटेड प्राइस वाज 100, देन इट डिक्रीज्ड बाय 100 by 2. सो 100 मल्टीप्लाइड बाय -1 by 2, इंक्रीज्ड बाय 1 by 4. सो इट अगेन मल्टीप्लाइड बाय +1 by 2, -1 by 2, +1 by 2. So what is the sum of this whole series? This is what we have to figure out. You all can see it's an infinite GP series with a common ratio of -1 by 2. फॉर्मूला इसका होता होगा, आप सब लोगों को पता है, सम ऑफ द जीपी सीरीज का फॉर्मूला, इट इज a, that is 100 upon 1 minus r, that is -1 by 2. तो ये 3 by 2 हो गया, 200 डिवाइडेड बाय 3, और 200 by 3 का मतलब है 66.66. सो फाइनली इट इज गोइंग टू स्टॉप एट 66.66. एक इनफाइनाइट सीरीज चलती चली जा रही है, और उस 66.66 पे आके द गैप वुड बिकम 0, राइट?
ये गैप ही तो है, धीरे धीरे करके इंफिनिटी की तरफ आपके पास जा रहे हैं. So 66.66 is the price at which they all would agree, and that's your answer, which is option D. So therefore I would say the answer for this particular question is option D, none of these. Got it, everyone? Nikita had got the answer as a Nikita. I hope it is clear now. Priyanka Patel got C. That's correct. Harika, Dipankar, Abhilasha, Sachin, and everyone who did not give an answer of D. I hope it is clear to all. Okay, one more thing. The students who have got none of these as the answer, in their calculation, if they have got 66.66, okay, so write yes. जिसका भी 66.66 आया था वो yes लिखो जल्दी से. एक बिहाइंड द सीन्स का वीडियो भी बनता है. लो भैया, तुम्हारे लिए काम आ गया, बनाओ. Yes, तो Tarun says I got it wrong, but option was correct. So this is what I'm asking. People who have marked option D as the answer and got 66.66 as the answer, write yes. हेलो चिराग, तरुण कह रहा है गॉट इट रॉन्ग बट ऑप्शन वाज करेक्ट. ओके ओके, अराउंड में नहीं मान सकते. नहीं अदिति, व्हेन यू हैव नन ऑफ दीज तब आप ये नहीं कर सकते. काफी मैनी पीपल आर सेइंग यस. दैट्स ग्रेट. क्लोज था सर मेरा. क्लोज से बात नहीं बनती. दिक्कत ये है क्वांट में ये सारे क्लोज हैं, बात कैसे बनेगी? Yes, the marked closes. So, keep that in mind, ज्ञानेश्वरी. If the answer is 60, या तो वो यहां लिख देता approximate, तो कहानी अलग है. अगर उसने एग्जैक्ट पूछा है तो जब तक 66.66 ना दिखे तब तक none of these ही मार्क करना. ये ध्यान रखना है ऐसे में. I got it first, then got confused and went with A. Okay, निकिता भी ये सही कह रही है. Okay. Actually none of these मार्क करने में ना सबको डर लगता है. डर लगता है. हाँ, कि none of these, इतने सारी मेहनत करके 3 ऑप्शन दिया, अगला none of these क्यों देगा? जनरली ये लगता है. इतना बड़ा क्वेश्चन बना और एंड में बोल दो cannot be determined. That does not make sense. Okay, I got wrong, but option was correct. That's great. मेरा भी 66.66 आया था, but option 66.14. 0.14 तो फिर दूर हो गया ना उससे यार, 66.66 से. Yes, Chirag, message visible. आपका message visible है Chirag. You are saying got correct. Pragya had got 66.9, but I'm sure that now it is clear. The solution is clear to all. समझ गए आप सब लोग. How did we get the answer? ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं. Let's move on to the next question. और ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से बहुत जल्दी कर लोगे आप लोग. सिंपल क्वेश्चन, विल बी टॉकिंग अबाउट इट एज वेल, बट आई वांट अ राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन फ्रॉम एवरीवन. आई एम श्योर everyone sitting in this class can answer this question correct. You have done such kind of questions many a times. और ये क्वेश्चन बहुत कॉमन भी है हर एग्जाम में. तकरीबन इस तरह क्वेश्चन हर एग्जाम में दिखेगा आपको, हर एग्जाम में. प्रोपोर्शनल वाला तो हमेशा कैट हो, जैट हो, आईएफटी हो, सी मैट हो, टिसनेट हो, एनमेट हो, स्नैप हो, सब में दिखता है ये. डी मार्क करने में डर लगता है, दीपांकर कह रहा है. बी मार्क कर दिया करो. इसका तो बी नहीं है ना. पता नहीं कुछ भी आ सकता है. जो भी आंसर तो बस बी साथ रखे. लो बी दे दिया फर्स्ट आंसर. अनिल ने बी बता दिया. अनिल सेज बी. वरुण also has got B. तो जल्दी कैसे आंसर कर लेंगे? Chirag has got C. Risky fighter says B is the public answer. 5:30 11. Yoga Parmar has got C. वो एक से ही पता लग गया. अच्छा वो तुम फोन पे देखो. पूजा गर्ग has got C. किसी ने पकड़ लिया आपको? सर चुपके से जा रहे थे. नीचे होके जाया करो. चिराग has got C. Bavandla has got C. DM Papoon has got C. यहाँ भी आ रहा है आंसर. डी. नीता ने बी बोला है. सत्यांशु ने बी बोला है. योगा वर्ल्ड बी. अभिलाषा सी. राजीव सी. बी का दिन ही खराब है. अंश ने बी बोला. प्राची ने सी. आशुतोष ने सी. शुभेंदु सी. प्रज सी. कृष्णा सी. काफी लोग सी बोल रहे हैं. बी भी दिया कुछ लोगों ने.
रूम में आप तीनों के अलावा भी और लोग हैं ना सर? क्यों बताएं? पूछ मना कर रहे हैं, हम नहीं बता रहे। C बिना कुछ किए कॉमन सेंस है, बिना कुछ किए। क्वेश्चन तो पढ़ना पड़ेगा ना। हाँ क्वेश्चन चिराग पूछ रहे हैं बेस्ट, कुछ ड्रॉ नहीं करना। चिराग का क्वेश्चन देखो, बेस्ट क्वांट टीचर कौन है आप सब में से? सर देखो हम तीनों से पूछोगे, तीनों का सेम आंसर है, दी अदर टू। बेस्ट सिंगुलर नहीं होता सर? नहीं, दो लोग बेस्ट हो सकते हैं। हो सकते हैं और क्या, क्यों नहीं हो सकते? मेरी वर्बल थोड़ी खराब है। टू पीपल कैन बी टॉपर्स। नहीं बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री 2 होता है। सुपरलेटिव 2 बचपन में मुझे सिखाया गया था कि सुपरलेटिव सिंगुलर होता है। क्वेश्चन पे डिपेंड करता गलत सिखा दिया। है। सर विकास सर नहीं आए, ये टाइम पिछले साल दिखे थे बायजूस ऑफिस में, वहां पे ठंड ज्यादा है चंडीगढ़ में, तो उन्होंने मना कर दिया आने से। शेडो रिफ्लेक्ट कर रहा है। But I'm sure, DM Papun, I mean, that's not creating a hurdle in reading the question. At least you are able to read it. Okay. Chaliye, let's start discussing the answers now. Let's see what is the right answer for this question. Many people have answered C. Some people have answered D as well. Some have answered B too. I see A generally किसी का आंसर नहीं आया. A बहुत कम लोगों ने आंसर दिया है. ठीक है, तो देखते हैं जरा एक बार क्या आता है. Let's start. Okay. और ध्यान से देखिएगा what is the right way of doing the question. ओके, इट्स अ सिंपल क्वेश्चन, और इसके क्वेश्चन नॉर्मली आसान ही होते हैं, बट पता नहीं आप लोग गलती इसमें कर देते हैं. लेट्स सी. अंशुमन लेफ्ट हिज होम बाय कार एट 7 AM फॉर बिलासपुर. सो लेट मी मेक दैट लाइन हियर थोड़ा सा. सो नहीं, कलर इसका ही चूज कर लेते हैं, ये था. सो ऐसा मान लेते हैं हम लोग दैट अंशुमन लेफ्ट फ्रॉम हियर, दिस इज हिज होम, and he's going towards Bilaspur. So this is Bilaspur. He started from here at 7 o'clock. So at 7 he started. At 7:30 AM he overtook a truck also traveling towards Bilaspur. So let's say here at 7:30 he overtook a truck. So Anshuman at 7:30 started from here. He overtook a truck. That automatically means that the truck is also going in the same direction. Otherwise, he would have read he met a truck. ठीक है, ओवरटेक का मतलब ये आप सेम डायरेक्शन में दोनों चल रहे हैं, तो ट्रक भी उधर जा रहा है, अंशुमन भी इधर जा रहा है. 7:30 पे अंशुमन ने ट्रक को यहां पे क्रॉस कर दिया. अब आगे बढ़ जाते हैं. लेट्स मूव अहेड नाउ. फिर कहता है 1 hour आफ्टर ही रीच बिलासपुर एंड स्टार्टेड हिज जर्नी बैक होम आफ्टर 2 hours. सो ही रीच्ड हियर, अंशुमन रीच्ड हियर. He spent 2 hours here and then he returned towards his home. 1 hour after leaving Bilaspur, he crossed the same truck. So यहां से निकलने के 1 hour के बाद, let us say at this point, he again met the truck here. So again he met the truck who was going in this direction, and Anshuman was basically coming from that direction, and Anshuman took a total of 1 hour to cover this distance. 2 hours का वेट किया, उसके बाद 1 hour के टाइम के बाद ही मेट द ट्रक एट ए पर्टिकुलर पॉइंट. आगे फाइंड द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ अंशुमन एंड कार इन द ट्रक इफ अंशुमन क्रॉसेस द ट्रक फॉर द सेकंड टाइम एट 1 PM. अब वो सेकंड टाइम मिला है 1 PM को ट्रक से, तो यहां जो टाइम था दैट इज इक्वल टू 1 PM. इफ दिस टाइम इज इक्वल टू 1 PM, सो कैन आई से ही लेफ्ट फ्रॉम बिलासपुर एट 12. भाई एग्जैक्टली 1 hour के बाद मिल रहा है ना, because he met after 1 hour, so he started from there at 12. He waited there for 2 hours. That means he reached Bilaspur at 10. That means he reached Bilaspur at 10. और अगर यहां से यहां आने में he took 1 hour, तो जाने में भी तो 1 hour लिया होगा. So if he reached there at 10, that means he reached here at 9. Okay. Anshuman, who started from here at 7:30, reached here at 9. So he covered this distance in 1.5 hours. But when I talk about the truck was here at 7:30. He met Anshuman at 1. So the truck took a total of 5.5 hours. अब तो बचा ही कुछ नहीं है. ट्रक जिस डिस्टेंस को 5.5 आवर्स में कर रहा है, उसी डिस्टेंस को ये 1.5 आवर्स में कर रहा है. सो द रेशियो इज 11:3. सो देयरफॉर दैट इज आवर आंसर ऑप्शन बी. जिसे इसने 5.5 आवर्स में किया, इसने 1.5 आवर्स में किया. रेशियो ऑफ स्पीड्स इज इनवर्स ऑफ द रेशियो ऑफ द टाइम टेकन, तो उसका इनवर्स कर दोगे तो यू विल गेट द आंसर दैट इज 11:3. और ये टेंशन वैसे भी तब होती जब कहीं 3:11 भी होता.
तो दिख रहा है 2 का रेशियो 11:3 है, तो कुछ भी होगा तो पता लग ही जाएगा दैट व्हाट इज द करेक्ट आंसर। बोलिए, समझ आई मेरी ये बात आप सब लोगों को? ऑल ऑफ यू, इज इट क्लियर? वंस अगेन बी इज द राइट आंसर। आई थिंक एनी अदर वे लग रहा है कुछ? तो बहुत ज्यादा स्लो है ट्रक। हाँ, ट्रक स्लो है, ट्रक बहुत ज्यादा स्लो है। हो सकता है हिल्स पे चल रहा हो ना, वो ट्रक बहुत धीरे धीरे चलते हैं, कार बहुत धीरे धीरे चलते हैं। हाँ। सामान बहुत हो जाता है। यस क्लियर, तरुण कह रहे हैं यस, डीएम बाबून सेज यस, अनिल कह रहे हैं माय आंसर इज करेक्ट ऑलवेज, आई होप इट इज ऑलवेज करेक्ट रहे, एग्जाम में भी रहे। बी को नेशनल आंसर बना दो, ठीक है जी। यप, यस यस, हाँ 5.5 आवर्स, थोड़ा समझा दीजिए सर। सुजीत, सीधी बात ये ट्रक की जहां तक बात है, ट्रक met Anshuman at 7:30 and truck did not reach Bilaspur. It is still going on. Anshuman went to Bilaspur, came back and met the truck at 1 p.m. So actually truck was running from 7:30 till 1. तो उसने तो पूरा 7:30 से 1 तक, it is 5.5 hours in which he has covered this distance. Okay? नवीन सर है some other approach also? नहीं, नवीन सर भी यही कह रहे हैं कि यही अप्रोच है, कि यही बेस्ट अप्रोच है इसको करने की शायद। उसका अंशुमन का टाइम टोटल कितना लगा? 5.5 आवर्स बस। सॉरी, अंशुमन का 1.5 1.5 आवर्स, यहां से यहां तक का ना। मैंने क्या किया सर? टी से वापस ए तक। टी से वापस ए तक वो तो 5.5 आवर्स, 5.5 वो अपने आप ही उसका हो गया ट्रक का टाइम, क्योंकि ट्रक ही चल रहा है। देख लीजिए। हाँ, 11 का मल्टीपल। हाँ, मैंने ये देखा कि 5.5 आया उसका, तो 5.5 का मल्टीपल जो भी ऑप्शन में था। बिल्कुल, सर का कहना ये है कि मतलब गौरव सर और नवीन सर दोनों ये कह रहे हैं दैट द टाइम टेकन बाय ट्रक इज 5.5 आवर्स। उसके बाद वो कह रहे हैं कि अंशुमान को ना देखो, 5.5 is a multiple of 11 or among the options there is only one multiple of 11. So by that logic we can say 11:3 is the right answer. ठीक है, ऋषभ कह रहे हैं 11/3 और 3/11। देखो उसने पूछा फाइंड द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ अंशुमन टू दैट ऑफ द ट्रक, तो पहले आप अंशुमन की स्पीड लिखेंगे फिर ट्रक की। अंशुमन का टाइम अगर होता तो रेशियो 3:11 आता, स्पीड का रेशियो ऑपोजिट होगा 11:3, तो 11:3 ही आना चाहिए। पहाड़ पर ट्रक में गए? हाँ, बहुत बार गया हूँ। कांट एलिमिनेट ऑप्शंस कॉज ट्रक वाज टू स्लो। ओके ओके, सो अंशुमन बीएमडब्ल्यू सा जा रहा इसलिए ट्रक स्लो लग रहा। ओके, हाँ जी, मेरे ख्याल से समझ सबको आ गया है, सो वी कैन मूव अहेड फ्रॉम हियर, राइट? ओके, दैट वाज दिस क्वेश्चन, सो वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन नाउ। लेट्स दिस क्वेश्चन, लेट्स ट्राई दिस। करो जरा एक बार। वो कहाँ गया सीपीएसपी वाला? अच्छा, डन। आसान था, आपने बोला हटा दिया। ये कल हटाया था, आज तो डाला हुआ था। कौन सा? नहीं, आज सुबह आपने बोला ना हटाने के लिए। हाँ, कौन सा था? कॉस्ट प्राइस से मतलब प्रॉफिट एंड लॉस का एग्जैक्ट क्वेश्चन था। करवाना है वो, निकाल दो। नहीं कोई बाद में करा देंगे, रिप्लेस नहीं होगा उसमें, टाइम बचेगा, बाद में करा देंगे। ब्लैंक शीट खोल के लिख देंगे। छोटा सा क्वेश्चन था, सिंगल 2 लाइन का था। Anil once again says D is the answer. Okay, Anil is answering very fast. Until now most of the answers have been correct. करवा लो सर। इस स्क्रीन पे क्या आ रहा है उधर देख लो, वो पुराना आ रहा है लेफ्ट साइड में ना, वो टीवी पे लगा। अच्छा टीवी पे है। दीपांकर गॉट डी, दर्शन गॉट डी, वरुण गॉट डी, चक्षु, रिस्की फाइटर हैज गॉट ए, कृष्णा सेज डी, आदित्य शर्मा डी, आदित्य शर्मा ए, देन अगेन डी 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 डी, बहुत सारे लोग डी आंसर दे रहे हैं इसका। बहुत फास्ट है स्टूडेंट्स में, ये नोटिस कर रहा हूँ। हाँ, एग्जैक्टली। ए डी 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 डी, काफी डी आ रहे हैं इस बार। बी किसी ने भी नहीं बोला अभी तक, एक भी आदमी ने। डी एम पापून हैज गॉट ए, चिराग हैज गॉट डी,
तरुण हैज गॉट डी, ए भी बोला है कुछ लोगों ने। चलिए जी, आई थिंक वी कैन स्टार्ट इट नाउ। शुरू करते हैं। ABC can complete a job in 12, 15, 20 days. So our first work is this only कि हम सबसे पहले total work को assume कर लेते हैं। LCM of 10, 12, 15 and 20 which is 60. So A can make 5 units in a day, B can make 4 units in a day, C can make 3 units in a day. This is the first job that we always do. Okay? ठीक है जी, आगे। All started together but C leaves when he was sure that the job will be done without him in the next 2 days. C left when he thought that, okay, now the job can be done without him in just 2 days. Without C, the job can be done in 2 days if in those 2 days only A and B are working. So A is making 5, B is making 4, 2 into 9, that is equal to 18. So can I say that C left when 18 units were left? Right? Did you get my point? C left when there were a total of 18 units were left. क्योंकि 18 बची होंगी. He thought that okay, 18 are left. So these two guys can make 9 in a day. They will do the job in 2 days. So I'll leave now. So C left when 18 units were left. So basically C left when 42 units would have been formed. C left when 42 units have already been formed. तब उसने छोड़ दिया, अब तो 18 ही बची है, 2 दिन में कर लेंगे, I am going now. Okay? Then उसके बाद क्या हुआ? Then B left when he was sure the job will be done without him in the next 1 day. C has already left. Now B also left when he thought that A alone would do the job in 1 day. If A alone can do the job in 1 day, that means only 5 units were left. So when B left, at that time, total number of units formed were 55. Total 55 बन गई. Then B thought that okay, now the job can be done in a day, so let's leave. तो वो भी वहां से चला गया. So इसका मतलब ये है, first of all, A, B, C they all made 42 units. Then B and A they made another 13 units, so that total 55 are formed. And then last 5 are made by A alone. A, B, C all they made 42 units. A plus B plus C is 42, right? After that, C left, only A and B are working. They made 13 more. Then B also left. The last 5 are made by A alone. This is what has happened. So now we have to find the number of days. So अब तो सीधी बात ये है, A, B, C together can make 12 in a day. A plus B, they can make 9 in a day. And A alone can make 5 in a day. How many days they are going to take? They are going to take 42 by 12. 42 by 12 is 7 by 2. They are going to take 13 by 9. And they are going to take 1 day. 7 by 2 plus 13 by 9 plus 1 is 107 divided by 18. So that is the answer. Number of days taken, अब ये आ गया हमारे पास. First 42 units made at a speed of 12. 42 by 12, 7 by 2. Next 13 units made at a speed of 9, so 13 by 9 days. And the last 5 units made at a speed of 5, 1 more day. This gives you the total number of days as 107 by 18. I hope it is clear. जरा बताओ एक बार मुझे. SSD कह रहे हैं A plus B का कैसे आया? A plus B का ऐसे आया SSD. If A, B, C together had made 42 units and then C left. C के जाने के बाद 13 more were left to complete 55. Right? 42 were already formed by all 3 of them. And then 13 more were formed. So 42 plus 13, that made it 55. The last 5 were made by A. Simple. That's how we get it. Okay. Finally D1. Yes, Chirag, that's correct. Bhavandla, Nikita, they are saying they got it. DM Papun says it is clear. So Varun, Jetalal, Kunal, Krishna, Darshan, they all are saying it is clear now. I hope. मतलब इसके बाद एक बार ये समझ आने के बाद तो फिर आराम से आदमी कर लेता है. There would not be much of a problem. Okay. Okay, so last part में वरुण कुछ नहीं है. A, B, C मिलके they are making 42. A plus B they are making 13. A alone is making 5. तो ऐसे में क्या करना है? 13 by 9 is 13 by 9 days. 42 by 12 is 7 by 2 days. And 5 by 5 is 1 day. Very easy question. को टफ दो. टफ इससे पहले दिए थे. तब तुम सही आंसर नहीं दे रहे थे. अब ये आसान लग रहा है. My answer always correct and me CAT preparation ranked on top 100. That's very good, Anil. Yes, I see all your answers have been correct and first as well. That's very, very good. I hope that continues. Chaliye, let's move on to the next question now.
Here is the next question on your screen. गौरव सर भी आ गए अब. आओ गौरव सर, आप ही आ जाओ फिर. आओ. अच्छा चलो आप अरिथमेटिक आप कर लो. नवीन सर अरिथमेटिक कर लो. हाँ नहीं कर रहा. अलजेब्रा और ज्योमेट्री. कंपटीशन भी आज थोड़े से क्वेश्चंस. लिख रहा हवा, शर्माओ मत. आपको बुला रहे. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं. कर लो, बाल ठीक कर लो, थोड़ा मुंह धोया. देखेंगे बच्चा आपको पूरा. अब पूछो कि आप किससे बात कर रहे थे. बाल ठीक कर. बच्चा पूछ रहा है गौरव सर फिशरमैन थे क्या बचपन में. गौरव सर अभी भी फिशरमैन है. कोई फिश नहीं छोड़ते. Chandrankar has got 5. Anil has got 8.89. Anil, 6 तो यहाँ पे. how many fish did he catch? लेकिन ओवरलैप भी तो हो सकता थोड़ा इनह्यूमन नहीं हो जाएगा 8.89 फिश. काट के ले. आधी कटी हुई थी फिश. Sir, I got 6, so wasn't did good practice in quants, did good practice in VRC. Now what can I do for quants? Recently doing only arithmetic. Shruti Shukla, now तो it's already 22nd of November. ठीक है. Just do arithmetic and algebra. थोड़ा सा रिवाइज कर लो. ठीक है. और भगवान का ध्यान करो. वरुण got 7. Darshan 8, Chandrankar 11, Yash 9, then 15, Akash 10, Krishna 11, Abhishek 16, Gautam 10, Dipankar 9, Akash 10, Gyaneshwari 11, AS 10, Dipanshu 10, Pooja 9, Ayush 8, 8, 9, 10, 11 8, 9, 10, 11 चल रहा है अभी तक तो. Yes Anil, try again. Probably you misread the question. Suddenly 10 के भाव बढ़ गए, देख रहे किसी ने 5 भी हो. दिया. योगा, शुभेंदु, ऋषभ, अखिल. अच्छा नहीं, योगा ने 3-4 बार आंसर लिख दिया तो इसलिए वो 10 ज्यादा दिख रहे हैं. गौतम रेडी नहीं. इट्स अ रिक्वेस्ट कि अपना आंसर एक ही बार लिखो. प्लीज राइट योर आंसर वंस. Okay, Chirag has got 8, DM Papoon has got 4, Tarun has got 8, Bavandla has got 8, 11, 10, 10, 7, 11, 10, 10, 10, 10, maybe क्या होता है 8, 10. Anand says 86, I don't know it's correct or not. No one knows. अभी तक तो जितने भी आंसर दिया है 10 सर के लिए काफी है. अच्छा गौरव सर के लिए 10 fish of 10 kg weight. Nikita got 8, 10, 10, 10. अगर अनिल से 6, okay. Tech Bite got 10, Ayush got 8, Vinayak got 8, Ayush got 8, Abhishek 10, Abhilasha 7, Aditi got 8, Dipankar got 106. Dipankar 6, Ajampa 7, Jaydev 11, Vinayak 10 पक्का. Chirag is asking, sir, your target score in CAT 22. Your target score in CAT 2022 100%. टारगेट तो 100% ही रहता है. नहीं 100% नहीं, अंग्रेजी के तो हम लोग करते नहीं तो 66% ही रहता है. हाँ लेकिन वेटेज अलग है उसका. 10, 10, 10, 8. सर तो शेफ हैं, बनाएंगे भी खुद. ये इनको ये भी पता आप शेफ हो. प्रिंस कौशिक कह रहा है. हाँ टोटल फिश पूछा है. एड मिनिमम मैक्सिमम. ओके, आई थिंक वी कैन डू इट नाउ, राइट? सॉरी इट्स 8. ओके, 10, 10, 10, 10, 8. Many people are saying 10 here. छोटा सा एक एडिशन कर देते हैं यहाँ पे. That 3 of the other heaviest fishes. 35. Why other? Common overlapping नहीं होगा, फिर 100 नहीं बनेगा. नहीं बनेगा ना 100. ठीक है, चलिए जी, आई थिंक वी शुड डू इट नाउ. अब करना शुरू करते हैं. ठीक है, सीधी सीधी बात. क्या
Okay. 3 lightest fish, 3 heaviest fish, and there are some other fish as well. The total weight of all of them is equal to 100 kg. This is what the question is asking us. Okay. Okay. 3 lightest, they have an average weight of 25 kg. 3 heaviest, they have an average weight of 35 kg. Now, just one simple point. That is, अगर 3 lightest का weight 25 है, so can I say the average is 8.33. Average ये बताती है that at least one fish is greater than 8.33 kg. That means at least एक fish 9 kg की तो है ही. I hope all of you are getting my point. At least one fish is there which is more than 8.33 kg, क्योंकि average है 8.33 तो. So some would be below 8.33, some would be above 8.33. Therefore I can say that it would be definitely greater than 8.33. मैं आशुतोष मैं एवरेज नहीं कह रहा हूं 25, टोटल वेट है ना 25 तो उन सबका. लाइटेस्ट फिश का टोटल वेट टोटल है तो उनका एवरेज 8.33 है. मैं ये कह रहा हूं 3 लाइटेस्ट का टोटल है 25 तो एवरेज तो 8.33 आएगा ना. तो मैं कह रहा हूं कि कम से कम एक फिश 8.33 kg से ज्यादा होगी. एवरेज इसलिए निकाल रहा हूं सो दैट आई गेट टू नो व्हाट विल बी द मिनिमम पॉसिबल वेट ऑफ दीज फिश. तो मैं कह रहा हूं 8.33 से तो बड़ी वेट वाली फिश आएगी ही आएगी, मिनिमम वन. I hope you all are with me on this. Similarly, when I talk about the 3 heaviest fish, so what is their average? Their average is 11.66. That means at least one fish is there which is less than 11.66 kg of weight. कम से कम एक फिश ऐसी जरूर होगी जो 11.66 से कम वेट वाली होगी. मेरे ख्याल से दोनों बातें आपको समझ में आ गई हैं. ठीक है, क्योंकि हाँ, और ये बोला ही उसने कि सारी की सारी इंटीजर्स में है. एटलीस्ट एक 8.33 से बड़ी मतलब कम से कम 9 वेट किसी ना किसी फिश का यहां जरूर है. इट कैन बी मोर देन 9 एज वेल. मिनिमम 9 इज डेफिनेटली देयर. एटलीस्ट 11.66 से कम का मतलब कम से कम 11 वेट यहां जरूर है. इफ दीज आर दी हैवीएस्ट वंस, दीज आर दी लाइटेस्ट वंस, सो दी अदर फिश उनके पास ऑप्शन ही सिर्फ एक बचा 10 kg का. 9 और 11 के बीच में एक ही नंबर तो बचता है. और यहां पे एक फिश अगर 10 वाली ले लोगे तो और फिश कहां जाएंगी? उनको तो हैवीएस्ट में जाना पड़ेगा फिर उसके बाद. दैट्स नॉट पॉसिबल. सो देयरफॉर आई एम सेइंग द अदर फिश मस्ट बी इन दिस रेंज. दे ऑल मस्ट बी 10 kg. वो सारी की सारी 10 kg की होनी चाहिए. तो यहां से अब मेरे पास 3 फिश तो हो गई है, 3 फिश हो गई है. सो 3 + 3 6. इन सबका टोटल वेट बनता है 60. बाकी 40 kg के लिए आई नीड 4 fish of a weight of 10. 4 + 3 + 3, the answer is 10 fish are required. So 10 is the correct answer. ठीक है. बीच वाले स्टेटमेंट में वो है 3 of the fish he caught were lighter in weight हाँ, than the rest. हाँ. And other three का मतलब 6 fish ही है. तो instead of other 3, अच्छा, it should be heavier than the others. हाँ, तो वो 3 अदर होगी. मतलब ये कि इनमें कुछ कॉमन नहीं हो सकता. ऐसे नहीं कि कोई एक फिश यहां से इतने वेट की आ जाए जो यहां पर पहुंच जाए. तो अदर 3 की जगह 3 of the others would be more consistent with the data. Other 3 was like कि 3 इधर है और other 3 मतलब remaining 3. तो सही होगी. सही होगी. राइट. पर वो 100 देगा नहीं. वो थोड़ा बेहतर हो सकता है मतलब स्टेटमेंट. आई एम श्योर इट इज क्लियर टू ऑल. ये समझ आ गई होगी सबको बात. एवरेज से बड़ा मतलब मिनिमम 9, एवरेज से छोटा मतलब 11 होगा ही होगा. उसके बीच में नंबर ही एक आता है 10 का. सो आई हैव टू टेक 9 हियर, 11 देयर. बीच में जो 10 बनेगा उसकी 4 फिश. सो देयरफॉर टोटल 10 फिश आर देयर. ठीक है. दिस कैन बी ए सिटर. यस वरुण, आई ऑल्सो फील कि अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है आपको तो शायद आपके लिए सिटर बन जाएगा ये. यू कैन से सो. बट हाँ, सिंपल क्वेश्चन विद लिटिल बिट ऑफ कंफ्यूजन. नो ओवरलैप इज व्हाट दैट मीन्स इन दिस क्वेश्चन. आदित्य, अगर ओवरलैप हो जाती तो फिर मैं बीच में बहुत सारी फिश ले पाता. मतलब यही 9 वाली अगर उसमें भी हो पाती तो बीच में फिर बहुत सारी और फिश 9 kg की ले लेते. दैट्स पॉसिबल, राइट. तो वो उस तरह से हम लोग कह रहे हैं. हाउ इज इट? ओके जी. सो अच्छा, एक बार और पूछनी. ठीक है, मैं फिर बता देता हूं, ध्यान से सुनिए. आई थिंक 3 लाइटेस्ट फिश दे हैव अ टोटल वेट ऑफ 25. दैट मीन्स their average weight is 8.33. so at least one fish is above 8.33. आप सभी फिश को, if you have all the fish with a weight of 8 or less, their weight, total weight can't be 25. You need at least one fish of above 8. ठीक है. So you can take a fish of 9 and then the other 2 can be taken as 8. There are other possibilities as well. I can take 7, 8 and 10.
That's also a possibility, and there are many other possibilities. When I talk about this, 3 heaviest are having a weight of 35. That means average is below 11.66. That means at least one fish is below 11.66. एक ना एक 11 वाली जरूर आएगी. 11 के साथ if I take 12 and 12, that satisfies. ठीक है? 12 plus 12 plus 11, 35 बन जाता है. Again, there are various possibilities. अगर मैं 11 को कम कर दूं तो. But the point is, 3 heaviest and these 3 lightest. The others are of course going to be between heaviest and lightest. तो उनके बीच में कुछ तो नंबर चाहिए ना मेरे को जहां मैं बाकी फिश को रख पाऊं. So that number can only be 10, and that too comes in a very extreme case when you are just taking it 9 and you are just taking it 11. So all other fish can be taken with a weight of 10, and that says that we have a total of 10 fish if you add them. Okay. So that was the last question. I think now I'll pass on this to Navin sir और गौरव sir. कौन आ रहे हैं? ठीक है, किसको आप देखना पसंद करेंगे? गौरव सर को ही ना? अब सारे खूबसूरत चेहरा देखना चाहते हैं सर. हेलो फिशेस. सो सबको आई बिलीव फिश वाला क्वेश्चन पसंद आया होगा. क्वेश्चन से ज्यादा फिशेस पसंद आई होंगी. दोज हु आर वेजिटेरियंस वो एक्वेरियम में रखो. दोज हु आर नॉन वेजिटेरियंस पैन में रखो. ओके, सो geometry. All of you can read this question. The area of the given rectangle ABCD is approximately. Fine. So obviously intentionally मैंने options नहीं डाले इसके अंदर. All right. So you just need to give me an expression for the area of this entire rectangle. Given that these 3 circles, so they are just touching each other as shown in the figure. And the sides of the rectangle are also touching the circles as given. Okay? बच्चे बोल रहे सर स्टोन पेपर सिजर्स कर लो, कौन पढ़ाएगा नेक्स्ट? Okay, so slightly I believe I can say not easy but moderate to difficult level question. I believe radius of these circles are clear. 2 centimeters, 3 centimeters and 4 centimeters. Chirag is answer. Okay, so Piyush, Varun, Chirag. Piyush ने आंसर डिलीट कर दिया. So Chirag says 144 on the app. Yash says 144, 144, 105. Guys, if you can write like जरूरी नहीं है आपको इंटीग्रल आंसर देना. इफ द आंसर इज कमिंग आउट टू बी अ नॉन इंटीजर वैल्यू, सो यू मे ऑल्सो राइट द एक्सप्रेशन फॉर योर आंसर. वो कर दो ना, आंसर का जीआईएफ करवा दो. जीआईएफ करवा दे मतलब किसी को 104.5 आ रहा है तो 104 आंसर कर दे. अच्छा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मतलब जीआईएफ फॉर्मेट में डलवा दो. मुझे भी लगा था. ओके, काफी आंसर्स आ गए. 156, 144 बहुत कॉमन है सर, है ना? हाँ, 144, 128, 12. 116, अच्छा, 63. इट्स नॉट नेसेसरी दैट द आंसर इज अ रैशनल नंबर. आंसर इरैशनल नंबर भी हो सकता है. ओके, 17 into 8 अभिषेक हैज गिवन द आंसर. ओके, जिसका 144 आया आंसर एक बार बताइए, लाइक हाउ हैव यू कैलकुलेटेड दिस आंसर? Are you getting an integral answer or not? मेरे को ऐसा लग रहा है लोगों ने width तो 8 कर दिया है, फाइन, बट लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल को 2 + 3 + 4 ऐसा कुछ किया है. तो नहीं आएगा ना? नहीं, नॉट फॉर 144. अच्छा, हाँ, 8 इधर कर दिया और इसको 8, 6 और 2 कर दिया इधर से. हाँ, 8, 6 और 2. 8, 6 और 2 कितना हुआ? 862, 864 क्या? 8, 6, 2, 16 कर दिया और इधर से 4 + 3 + 2, 9. ओह, 16 into 9. 44. अच्छा अच्छा, मुझे लग रहा है सर. हाँ, मतलब ये तो एविडेंट है कि width of this rectangle should be double the radius of this circle. Okay. मेरे को लग रहा है वो 8 तो इधर पता चल गया, पर इधर 8, हाँ, 6 और 8, 6 और 4 कर दिया. 8, 6 और 4 कितना? उससे भी 144 ही आएगा. 18 गुने 8, 18 into 8. हाँ, ओके, सो 18 into 8 आया. योगा वर्ड ने लिखा
8 + 6 + 4 क्या कर रहे हो लोगों तुम? हाँ क्या चीज? ओके निकिता से 17 into 8, Aditi on the app 20, Papun 144. ओके सबका ये कॉमन आंसर आ रहा है. 128 कॉमन 128 आ गया, 144 आ गया, बट ये छोटी सी मिस्टेक, छोटी सी नहीं है तो बहुत बड़ी मिस्टेक है मेरे हिसाब से. Okay, so these three circles are not one after the other. These circles are not drawn like this. Okay, these circles are not drawn like this. So the length of the circle, length of the rectangle is definitely not equal to the sum of the diameter of these circles. Okay, so make sure you are not making this mistake. Right, chaliye start kare. So first of all, easiest part of this question, let us calculate this BC. Okay, the width of this rectangle, right? Now, since this biggest circle of 4 centimeter radius is touching the opposite sides of the rectangle, okay, so I can say that the width of this rectangle will be the diameter of this biggest circle. Okay, so I believe all of you agree with me, all of you are with me when I'm saying that the width of this rectangle will be the diameter of this biggest circle. ठीक है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए. एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ यू हैव टेकन इट एज 8 ओनली. अब किसी ने इसको 17 into 8 किया है, 16 into 8 किया है. So different things you have done. Okay, so let's see what will be the length of this rectangle. Fine, width of this rectangle has come out to be 8, right? Okay, now length of this rectangle will be equal to 2, this is 2 plus 4. All right, I'll call this point P, I'll call this point Q. Okay, so this length 2 plus something which is this, okay, something which is this line plus the radius of this circle, okay, that is 4. So 2 plus 4 plus something will be the length of this rectangle. Now how to calculate this value of something? ठीक है, so मैं इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूं. I break this entire portion in 2 parts. First of all, I'll take these 2 circles. Okay, इन दोनों circles को consider करते हैं. So if I'll join this, okay, so first of all I'll calculate the length of PS, right? Break कर देते हैं इसको, length of PS. We'll see the method how do we find out the length of PS, right? And secondly, what I'll do is and QT. Okay, so I can say that the length of this entire rectangle will be equal to 2 plus 4, which we have already written earlier, plus PS plus QT. All right, so this will be the total length of this rectangle. Now separately I'll calculate the lengths of PS and QT. So पहले PS की length को consider करते हैं. Let's talk about the length of PS. Now I can say PS will be equal to under root of, I'm using Pythagoras theorem, this is right angle. So PS is equal to under root of PR square minus SR square. Directly Pythagoras theorem apply किया मैंने. Okay. Okay. Rishabh is saying it's not necessary that PS will be a tangent. Yes, 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 definitely. मैंने ये consider भी नहीं किया. So किसने लिखा था ये चीज, ये comment? So whosoever has written this Aditya, sir, aren't you assuming PS as the tangent? No, Aditya, not at all. I'm not assuming PS as the tangent. I'll make this figure once again. ठीक है? So ये वाली line को ओके जब नहीं चाहिए होता तो डिलीट हो जाता है. हाँ ये गड़बड़ है. चलिए कुछ नहीं होता, इजीली बन जाएगा. दोबारा वैसे बनाना.
ये क्या हो रहा है? And इधर भी मार दो, मुझे लग रहा है इधर भी निकल के आएंगे. Alright, those who are saying that मैं PS को tangent assume कर रहा हूँ, no, I have never mentioned that I am taking PS as the tangent. Okay, so this is point P, this is point Q, this is point R. Okay, so not necessarily that PS is the tangent. PS कुछ भी हो सकता है, right? So there is no relation between PS and this circle of 3 centimeter. This is 90 degrees, right? So I have drawn a parallel to AB from P and then from R मैंने एक parallel बनाया है इस वाली side पे. Okay, that's it. और मैंने कुछ नहीं किया है, right? चल सकते हैं आगे? Okay, done. So now my aim is to find out the length of PR. So PR is equal to under root of sorry, PR नहीं, मुझे कैलकुलेट करना है PS. So PS is equal to under root of PR square minus SR square, right? Okay. Now, what is the length of PR? All of you, what will be the length of PR? PR is the sum of the radii of these two circles, sum of the radius. So these two circles are touching each other. So the length of PR will be equal to 2 plus 3. So this is 2 and this is 3. So length of PR will be equal to 5. So this will be 5 square minus, important is to find out the length of SR. So SR can be written as, careful, huh? SR will not be the radius of this circle. Okay. The length of SR, this portion will be equal to the complete width of this rectangle, right? Complete width of this rectangle, that is 8 minus, ये ऊपर वाला 2 माइनस हो जाएगा. ओके, सो 8 minus 2 minus this portion 3 नीचे से. ओके, minus 3. So 8 minus 2 minus 3, that will come out to be 3. All right, am I clear? I hope this portion is clear to all of you, right? So I have not considered PS as the tangent, but वो tangent हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता. It is not necessary. So this complete width, that is 8 minus 2 minus 3. एक second. All right, ठीक है? So ये 3 आ गया. So 3 square. So length of PS, all of you give me the length of PS. Come on. What will be the length of PS? So 5 square minus 3 square, Pythagorean triplet use कर सकते हो. You can use Pythagorean triplet. So this value will come out to be 4. Okay? So side में लिख देते हैं. PS is equal to 4. I hope all of you are clear with this. Okay? All right. Now in the similar manner, you can apply a similar kind of thing and calculate this portion. Okay, let's say this point is T and I need to find out the length of QT. Okay, so I'm writing here QT will be equal to under root of QR square minus TR square. Okay, now the length of QR will be equal to the sum of the radius of these two circles, that is 3 plus 4, which is 7. So that is under root of 7 square minus TR. Find the length of TR in the similar manner. So again 8 minus 4 minus 3. 8 minus 4 minus 3, that is 1. So this will be 7 square minus 1 square. Okay. 49 minus 1 is 48. Under root of 48. Under root of 48, 16 into 3 लिखा 48 को. So 16 under root से बाहर आके it will become 4. So it will be 4 root 3. So this number, this value will come out to be 4 root 3. Okay. So QT will be equal to 4 under root 3. Fine. Now you can easily calculate the length of this rectangle. We have already calculated the width of this rectangle. Multiply those two numbers and get your final answer. ठीक है? So finish करते हैं इस क्वेश्चन को. So the length of this rectangle is equal to, हमने देखा था 2 plus 4
2 plus 4 plus PS plus QT or TQ. Okay. Now 2 plus 4 ये तो already पता है हमें. This value is 6 plus the length of PS came out to be 4 and the length of TQ or QT came out to be 4 under root 3. So this will be equal to 10 plus 4 root 3. This is the length and width of this rectangle was equal to 8. So multiply these two numbers. In दोनों को multiply कर दो and you will get your final answer. So product here will be product of these two, that is 80 plus 32 under root 3. So 80 plus 32 under root 3 will be your final answer. You can leave your answer like this. Education Word ने answer दिया है. Science Score has given this answer. TechBite has given this answer. Kirti on the app has given this answer. Good. So I'll leave this question as it is. Obviously, for this type of questions, either they'll ask you, if it is a theta question, so then you will have to simplify it and they may ask you the greatest integer function of this or the least integer function or round it off to the nearest integer. Otherwise, in the form of options, they may give you options in this manner. Okay, fine. I hope you all have understood the mistake that you have committed earlier when you were giving 144, 128 as the answer, right? So please be patient while doing these questions. सरल सर ने एक हिंट दे दिया था स्टार्टिंग में कि आज के क्वेश्चंस थोड़े से हायर लेवल के होने वाले हैं एज कंपेयर टू येस्टरडे. ओके, फाइन. सो कम ऑन, गिव मी अ यस if you all have understood how I have solved this one. Okay, Abhilasha says got it. Nice. Anyone else? So approximately if you're saying 136 is the answer, sir, approximate क्या होगा इसका? इसका 51, 135 के आसपास, 135, 136. So ठीक है, अगर किसी ने 135, 136 दिया है, but 128 cannot be the approximate answer, 144 cannot be the approximate answer. Okay. Yes, mirror show question. Okay. QT तो गौरव सर आप भी हो, मतलब CUTI. ओ तेरी. अरे यार, अरे वो तो आप इसमें क्या हुआ? Okay, wonderful if you have understood. शर्मा भी थे. Fine, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन अ क्वेश्चन ऑफ ज्योमेट्री. मरते दम तक नहीं बोलेंगे, सोच रहे ऐसा बढ़ा दिया आपने. यस, शाबाश. इतनी जल्दी मत करो यश मरने की, अभी बहुत जीना है तुम्हें. IIM में जाना है, अच्छी जॉब करनी है, फिर एक प्रॉब्ली स्टार्टअप ओपन करेगा यश एंड फिर यूनिकॉर्न बनेगा, फिर मछलियां आएंगी बहुत सारी. Sir, try explain the repeated concepts. मतलब repeat the last step again. Okay, Ranjini, you want me to repeat the last step again? Okay, I'll do that. So Ranjini, after doing this portion, right? After doing this portion, basically the most important part of this previous question was to calculate the length. Okay, and the length will always obviously not be the sum of the diameters. So I have broken the length of this rectangle in 4 parts. Radius of this square, radius of this circle, radius of this circle, 2 plus 4, I believe ये समझ में आ गया होगा. This portion I believe you would have understood. Okay, sir, marker इससे आता है? इसे इधर वाले. ये? ना वही था, वही बीच में थर्ड. हाँ ये. Okay. Fine. So I believe this part was clear to you. Right, so length was divided in 2 plus 4 plus PS plus TQ as I've drawn here. So PS plus TQ. Okay, now how to calculate this PS, this portion is using Pythagoras theorem, okay, which I have explained. So PS is equal to under root of PR square minus SR square. PR, it's clear, 5 hai. To calculate SR, again you need to focus. SR will be equal to the entire width 8 minus radius of this circle minus radius of this circle. Okay, so 8 minus 5, that is 3. So 5 is the hypotenuse, 3 is one of the sides, so the remaining side will be 4. Same thing you can apply on the second triangle to get the length of this QT.
Okay, fine. So question says two circles with radii A and B respectively touch each other externally. Let C be the radius of a circle that touches these two circles as well as a common tangent these two circles. Then we have to find out the relation between A, B and C. I'll give you one approach, and probably if Saral sir or Navin sir has another approach for this, then we'll have a look at it. Okay, people have given the answer as D. Chirag says D. Chirag, bet on D, sir. Wow. Chirag, such a confidence. Good. Yoga, Ritika, Shalu, Shubhendu, Yash, Ishika. All of you are giving D as the answer. I'm really surprised to see the level of the students. See how fast they are answering. How fast they are answering. Not an easy question. मेरे लिए तो easy नहीं है ये question. Kirti has given another shortcut as well. If three touch each other, then it's GP. And it's GP. If Okay. three touch each other, then it is three DP. touch each other. So तीनों touch ही कर रहे हैं? नहीं वो वैसे वाला होता In है. Common sequence. tangent होते हैं in sequence. हाँ. तो वो GP. So I think Kirti, you are talking about this figure. If three circles are made in this, है ना? हाँ. So one circle like this touching and then they're in touching. Yes. So their radius are in geometric progression. Yes. So this is one direct logic or concept or formula that you can remember. If the figure is like this, then the circles made will have their radius in geometric progression. But यहाँ पे थोड़ा सा different question है. थोड़ा सा नहीं, काफी different question है. Property by tangent, Abhishek says, sir, this is property everyone know. Good, Abhishek, that if you know this property, wonderful. Chaliye. So important part for this is first of all to make the figure. ठीक है? Now I'll tell you, like if let's say anybody don't remember what is the direct relation between such kind of question, I'm assuming that some of you, like handful of the students, might not know the direct relation, might not remember. पता है, किया है कभी, but भूल सकते हैं. Human brain है, ठीक है? Examination में pressure में आके भूल सकते हैं. So how to approach these type of questions? So this is one technique that I've used yesterday as well. Look at the four options. These relations are finite. सारे finite relations हैं, ठीक है? So it should be possible for each and every type of figure. Figure कैसी भी draw कर लो. So not necessary that the values of A and B should be different. I can assume the values of A and B to be same. I can assume the values of A and B both has 1. Right? So I'll draw two circles whose radius are 1 and they are touching each other. I'll start from here. Right? So मैं assume कर रहा हूँ that this will be true for any type of circles that I'll draw. Okay? Because the finite relations are given. In this way, I may be able to eliminate some of the options. Possibly elimination round, elimination से खेल सकते हैं, ठीक है? So मैं दो circles बनाता हूँ. Circle कैसे बनेगा? Circle ऐसे आ जाएगा. Okay. So one circle. And sir copy कैसे करें इसको? दोबारा बना दो. दोबारा ही बनाना पड़ेगा. नहीं वो हाँ बन ही जाएगा. Equal है सर? हाँ equal. चलिए. Touch भी हो रहे हैं? Almost. खींच लो. Okay, touch हो गया. Fine. ठीक है? So these two circles, equal circles, मैं assume कर रहा हूँ equal circles. Their common tangent. So this is their common tangent, right? Now where the third circle will be drawn? This can be a common tangent. ऐसे भी एक common tangent बन सकती है. But if I draw a common tangent like this, then I cannot draw a third circle which will be touching the other two circles as well as the tangent of these two circles. Fine. So there will be a unique figure for this. Okay. Now third circle, let's draw that.
वो भी कम करना पड़ेगा width. ओके ये बेटर रहेगा. हाँ थर्ड सर्कल. साइड में क्लिक कर दो. Okay, so third circle will be drawn somewhere here. Something like this. Okay, this will be the third circle. Now, if I'll start by assuming that radius of these two circles, the radius of this circle is 1, the radius of this circle is 1. So, center and this is 1. Okay, so if this is 1, this is 1, right? Now I have to find the radius of this small circle. Come on, give me the value of the radius of this small circle. How to find this? बच्चे डिमांड कर रहे हैं कटप्पा सर की. कटप्पा सर की डिमांड हो रही है. बस अभी आ जाएंगे. Okay, so 1 and 1, these two are given. Let's say I need the radius of this small circle from each and every one of you. हाँ ज्वाइन कर देते हैं. सो एक ही चीज कंसिडर कर लेते हैं. इन दोनों को ज्वाइन कर दिया. ओके, देन एक पैरेलल ड्रॉ कर दिया यहां से. एंड लेट्स से small r is the radius of this small circle. Small r is the radius. Okay, and this is point T. So we can say that PR square plus इसको O ले लेते हैं. ठीक है, प्लस TO square will be equal to RO square. Length of TR कितना होगा? Anyone? Length of TR will be half of PQ since the figure is symmetrical, and S consider कर लेते हैं. So PS and OT will be equal. Length of PS will be equal to how much? Radius of this circle, that is 1. ठीक है. So TO का वैल्यू तो 1 हो गया. So 1 square. What will be TR? TR will be 1 minus radius of the smaller circle. So 1 minus R whole square, and that is equal to radius of distance between O and R, that is 1 plus R whole square. अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है. दिस इक्वेशन विल नॉट बी अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. R square से R square दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ स्मॉल r. तो सॉल्व करते हैं. 1 plus R square minus 2R plus 1 is equal to 1 plus R square plus 2R. Okay, so the value of 2R will be equal to, sorry, हाँ ठीक है, 4R लिख दो इसको. So 4R will be equal to 1, R will be equal to 1 upon 4. ठीक है, R का वैल्यू 1 upon 4 आ जाएगा. Now R 1 upon 4 है, the other two values are 1 and 1. So basically I started with A equal to 1 equal to B, and C का वैल्यू कितना आ गया? 1 upon 4. Now are these three numbers in geometric progression? No, they are not. जो common answer आ रहा था. Are these numbers in arithmetic progression? They are not. So I'm safely able to eliminate these two options, right? Now let's check option C. 1 upon C is equal to 1 upon A plus 1 upon B. Is it true? Now 1 upon A plus 1 upon B, that is 1 upon 1 plus 1 upon 1. On the right hand side you will get a 2. Okay, on the left hand side, reciprocal of 1 upon 4, that is 4. So 4 is not equal to 2. Option C is also eliminated. Has to be option D, right? So 1 upon under root 1, this is 1 plus 1 on the right hand side. On the left hand side, 1 upon under root of C. Under root of 1 upon 4 will be equal to 1 upon 2. उसका reciprocal कर दिया, it is 2. So 2 is equal to 1 plus 1. Yes, it is correct. So the correct answer is option D. So मैंने क्या किया? I have assumed the values of A and B, convenient values of A and B, and derived this relation. Those who are saying that
ये वाला रिलेशन याद होना चाहिए, पता होना चाहिए. Yes, absolutely true. But in absence, like if you don't remember this formula, this is what you can do. All right, fine. Any other method, sir? Okay, so Naveen sir, किसकी डिमांड थी? Who wanted? Okay. Yes, Aditya, सरल मेथड नवीन सर. सरल मेथड नवीन सर देंगे. आइए नवीन सर. पूरा इरेज करना है हमें? लोग रिपीट करने. पूरा इरेज तो नहीं करना है, पर कोई और चारा है भी नहीं हमारे पास. पूरा इरेज ही करना पड़ेगा. पूरा इरेज करना पड़ेगा. एक नया पेज ले लो ना. अच्छा हाँ, ये ऐसे कर सकते हैं. इस पे अच्छा बैक कर. हाँ, जा सकते हैं बैक. हाँ मैं इरेज करता हूँ. अच्छा फिगर इरेज नहीं होता. नहीं, वो उस पे वैसे हो जाएगा, सिलेक्ट करके. चाहिए. Okay. So good afternoon, everyone. So just like Gourav sir said, we can assume the radii of the two circles, and we will, since the options are finite, right? So we can assume the radii of the two circles A and B to be 1 and 1. Okay. So let's take this as 1. Let's take this as 1. So these are the two centers. Let's call them center 1. Let's call this as center 2, and इसका वाला center को 3 ले लेते हैं. So if this is 1, this is 1, और ये वाला हमारा नहीं पता. We need to find out the relation, right? Now, do you guys agree that? Do you guys agree that the figure is approximate or accurate? It's more towards the accurate. Is it more towards the approximate part? ज़्यादा accurate है ना ये? खुश रहो चिराग. Okay, fine. So, see what happens if three numbers are in AP. So we are saying 1, 1 and C is, let's say, X. 1, 1, 1, 1, 1 and X, are they going to be in AP? Tell me this. Middle term क्या होता है? It's going to be the arithmetic mean of the terms before it and after it. So 1 and X का average 1 तो नहीं होने वाला. This is only going to happen if X is also going to be 1. So this can't be AP. Let's talk about 1, 1, X being in GP. Now, when three numbers are in geometric progression, then the middle value has to be geometric mean of the value before it and after it. 1 और किस तरह के number का geometric mean will be back to 1? X has to be 1 again. Not possible, right? Because X तो definitely, ये तो X जो है, ये जो छोटा वाले सर्कल का रेडियस है, 1 तो नहीं हो सकता, for sure. तो ये GP भी चला गया. Now, if you remember this formula is more like when we are talking about two people are working together, तो उनका A और B का individual per day का work, per hour का work को C के साथ equate करते हैं. As in, if I rewrite this, you will have C is equal to AB upon A plus B. यही आएगा अगर आप C को cross multiply and AB and if you cross multiply. Now, if I put the values of AB as 1 and 1, I'm going to get this as 1 into 1 upon 1 plus 1, which is going to give me 2. 1 by 2 बोले तो इसका half है radius. Do you think the radius is half? Which is X half of this line? This small part is half of this. Half तो इधर तक जाता है भाई. This is more like the diameter. और actually prove करो तो diameter ही निकल कर आया था. Because radius turned out to be 1 by 4. I'm saying I have no idea about that part. पर ये इतना तो नहीं है रेडियस उसका, तो ये भी नहीं हो सकता. You left with only one option, which says that root A, root C by 2 and root B are in HP. Root A, root C by 2 and root B are in HP. मतलब मैं ऐसे ही थोड़ा मॉडिफाई करके बता रहा हूं, पर ये तो निकल जाएगा. ओके, ठीक है. Let's move next question. So right. एक योगा का क्वेश्चन है काफी बार. Oh sorry. हाँ. So why can't we get tangent in middle of both circles? You can get the tangent in between both the circles. But you tell me this: if I draw the tangent
between both the circles. मैंने explain किया था. हाँ वो ड्रॉ करके दिखाना पड़ेगा. Suppose I draw this common tangent. Okay, Yoga? Now, can you draw a circle which is going to be touching both the circles now and the tangent? Where should I draw the circle now so that it touches the tangent and both the circles? I'll be drawing a circle. Either में, so it touches this circle and this tangent, but it doesn't touch that. If I draw the circle over here, it will touch this circle and the tangent, but it doesn't touch here. So the only possibility is that the common tangent should be the direct common tangent. सामने सामने वाला. Got it? And जो figure बनाया उसमें दिखता है कि approximately 1/4 है. हाँ 1/4 नहीं है, आधे से तो कम है. आधे से तो कम है. उतना श्योर है हम. Right? ठीक है. I hope that is clear now. Okay, the next question on numbers. Write down all 1852 natural numbers one after the another starting from 1. लिखना शुरू करो. कल मिलते हैं. नहीं, कैट तक मिलते हैं. कैट तक मिलते हैं. And find the remainder when first 1750 digits of this number are divided by 16. What would be the remainder? First from the left hand side. Rishabh, it will be very difficult. See, everybody, please understand, it's not that we don't know the proper solutions, but we always evaluate between the proper solution step by step and an alternative approach. And if you always learn and if we always go by the proper solution, we will get into the habit of doing so. And unless and until we don't do it, तो हमें ना satisfaction नहीं होगा. We will always have the thirst of going after it, and that will never help us in competitive exam. Competitive exam में हमें जुगाड़ चाहिए, जल्दी जल्दी करना है, कोई ना कोई तिगड़म लगाना पड़ेगा. So that my task is to solve questions as quick as possible. So time is the constraint over there. And if I write down all these steps, so it will be difficult. So we can solve all the questions that you have been seeing using equations, a lot of variables, every single question. पर उतना नहीं करना है. ठीक है. So even though you don't feel very comfortable because the proper solution is not visible, but whatever we are discussing, those are accurate solutions. As in, if I change the language, if I change some variables, वो तब भी काम करेगा. हाँ, फिगर चेंज होगा तो कुछ और लगाएंगे, है ना? Okay, I don't see enough number of likes. So today we have a target of अभी के लिए 300 likes. Everyone, please like करो. As you guys requested. जैसे ऐसा बोल रहे हो वैसे वैसे हमारे, है ना? Right, save and next. Yes, these are not, yes, these are little confusing, but these are so lengthy to write. Actually, we would not know this, right? So we have to pick up, patterns over there. So explain the concept like find the total number of pens if one person came and took half and leave something and two came, took rest half and so on. Oh, okay, Kirti. So people are giving answers as Alpha, Delta, Charlie, दीपक 1000 बाद में धीरे धीरे, राइट? जैसे प्रैक्टिस करते थोड़ा सा एक अपना टारगेट, फिर उस टारगेट को बढ़ाएंगे, फिर उसको बढ़ाएंगे. अभी तो 300. कम ऑन एवरीवन. चले. डेल्टा, चार्ली. यस, देयर इज नो शॉर्टकट. इफ आई चेंज द नंबर्स एंड डिजिट्स तो वो फिर मेरे को वो करना ही पड़ेगा थोड़े हद तक, है ना? World already lagging. Oh, sorry. Education of all electronic gadgets present in my home. All electronic gadgets. Washing machine से भी. Washing machine से भी. TV से भी. Siddharth, people come and go. So there are likes from people who already left. I'm talking about people who have not liked so far. चलो शुरू करते हैं. Now, since some of you will find this a little confusing,
Let's write down all the single digit numbers. 1 likha, 2 likha, 3 likha, and when you write up to 9, so how many digits have we written? 9 digits are written here. Because there are 9 numbers written over here and every number is a single digit number. Right? Okay. Now if I start writing from 10, 11, 12 and so on, and if I go up to 99, तो इधर कितना digits लिखा हुआ रहेगा? Every number is a 2-digit number, 2 digit, 2 digit, 2 digit, and there are 90 numbers. So you will have a total of 90 numbers. Each number is a 2-digit number. So 180 digits लिखे हुए मिलेंगे आपको. After 99, when you will start with the next natural number 100, then you will write down 101, and if this continue up to 999. How many digits are written over here? So we have a total of 900 numbers over here. Every number is a 3-digit number. So we will have 900 into 3. That is going to give us 2700 digits. किसी को कोई doubt, कोई problem, ये बताओ. ये basic चीज है, ये याद ही होना चाहिए. क्या कैसे आया? गौरव सर को डाउट है 900 कैसे आया? 900 कैसे आया? 90 कैसे आया? सर ये बताओ कि how many numbers are there from 6 to 10? जल्दी 15. 6, 7, 8, 9, 10, 5. अच्छा, तो आपने फिंगर्स पे काउंट कर लिया 6, 7, 8, 9, 10. अच्छा, how many numbers are there from 50 to 100? जल्दी. 100. 50, 51, 52. सर कल मिलेंगे फिर. इतनी फिंगर्स नहीं है. तो होता क्या है ना कि whenever we speak a number, suppose 100 बोला हमने, तो हमें भले ही पता नहीं चलता है कि हमने 100 का मतलब क्या है. 100 - 50. हाँ, वेरी गुड. तो 50 से 100 तक 100 - 50. नहीं, 51 से 100 तक. 51 से 100 तक 100 - 50. हाँ, तो आपको 50 तक नहीं चाहिए, आपको तो 51 से चाहिए. हाँ. तो 50 तक का हटा दो सीधे एक बार में. माइनस करना पड़ेगा. हाँ, तो मुझे 100 क्या से करते हैं हम 51 माइनस कर देते हैं और फिर +1 भी करते हैं. नहीं, हम वो भूल जाते हैं. अच्छा, भूल जाते हैं. मनदीप. थैंक यू मनदीप, थैंक यू. सर क्लियर लाइक योर हेयर स्टाइल. मतलब कुछ क्लियर नहीं हुआ उसे. So 100 to 999 means 999 minus 99, which will give us 900 numbers. Okay. Now, if I am asked to write down all the 1852 natural numbers, so I'll be writing down 1, then I will be writing down 2, 3, ये ऐसे चलते रहेगा. फिर अपने पास 9 भी आएगा. Then after 9 we will be writing down 10, 11, and this will continue, and then we will be writing down 99. After 99 we will have 100, and this will continue. अपन लोग को 999 तक जाना है और फिर 1000 लिखना है और फिर उसके आगे जाना है. कहां तक जाना है? It says 1852. पर सर ये जरूरत नहीं पड़ेगी. नहीं पड़ेगी. नहीं पड़ेगी. नहीं पड़ेगी. नहीं पड़ेगी ना. हाँ. नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारे डिजिट्स उतने नहीं है. आपने बोला कि नहीं कॉमा पड़ेगी. नहीं पड़ेगी. Okay, so this is what the first statement says. Now the second statement says find the remainder when first 1750 digits. There are a lot of digits here. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ऐसे चलते जाएगा. Right? Every number will have 2 digits, so we will be counting those. Okay. So we have to find the remainder when first 1750 digits of this number are divided by 16. So how many digits are written from here to here? 1 से लेकर 9 तक. Use this. 9. 9 digits are written over here. How many digits are written from 10 to 99? 90. इसकी जरूरत पड़ेगी. So 90 Into numbers 2. are written. So 180 digits. 180 digits. अब 17 out of 1750 digits, we have written so far 189 digits. So हमें और कितने digits आगे जाने हैं? कितना आगे जाना है? 1750 minus 189 कितना होता है? Yes sir. Sir, it will be 1511. नहीं. सर जी गलत मत बताना. हम तो गलत करेंगे आपका आंसर. हाँ, अच्छा क्या करना है सर? 1750 माइनस 189. तो 200 माइनस किए तो मतलब मेथड जैसे अगर मैं 200 माइनस कर देता हूँ तो इट विल बी 1550. बट 11 कम माइनस करना था तो 11 ऐड कर देते हैं तो 1561. Right. So we have to go up to 1561 digits. Remember, from where? Starting with 100.
इधर से शुरू हो रहा है 100 के 1 से आप काउंट कर रहे हो 1 2 3 4 5 6 एंड वी विल कंटिन्यू अप टू 1561 डिजिट्स And these will be all 3-digit numbers. हाँ. Right. Now every 3 digit that you take, it will give you a number. Okay, so if I talk about 1561 can be written as how many 3-digit numbers? So 1561 में अगर 3 का ग्रुप बना हो गया, क्यों 3 का ग्रुप बनाएंगे? Because every 3 digit is going to give us a number. Next 3 digit is going to give us the next number, right? So 333 करके कितनी बार जाने वाला है? So this is going to give us 1561 divided by 3 करेंगे and we'll write the quotient. 520 numbers you are going to write, and then there is going to be one more, Remainder. which is going to be remainder. Let me know if you guys understood this calculation. This is simple dividend is equal to divisor into quotient plus remainder. Is it clear? Perfect. So this 520 tells us that you have to be counting एक नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर करते करते 520th number. Its 520th number is not 999. It will be some number between 100 and 199. 520th number पे जाना है. And what does this one tell us? 521st number का first digit. The first digit that you are going to encounter when you move from left towards right. है ना? Now let's try to find out which will be 521st number. Sir, 1 second. एक बच्चा पूछ रहा है, Cool Life, who is asking, sir, 1561 कैसे आया? ठीक है. Total 1750 digits we have. 1750 digits में से पहले 9 digits हटा दिए. Then we removed 180 digits. So ये माइनस करके देखो कितना आता है. Cool Life. Solve. So total we needed 1750, 9 कम हो गया, 180 कम हो गया, जो बचा वो उधर 3 digit numbers का पैटर्न में उसके ग्रुप में फॉलो करेगा. So what we have done is we have first of all written all single digit numbers. Then we have written all 2 digit numbers. So अभी तक जब तक हमने all 2 digit numbers लिखे, so in total we have written 189 digits. Now sir has calculated how many more digits we have to write. So total digits हमने लिखने थे 1750, उसमें से 189 माइनस कर दिया. Simple. हाँ. Now let's count 521st number क्या होगा, जिसका पहला digit क्या होगा, right? We only don't need that first digit, we need the pattern along that. So what is the first number? 100. What will be the second number? 101. What will be the third number? 102. If we continue like this, तो ये 520 क्या बता रहा है? Numbers. So what will be 522nd number? ये क्या होगा? पहला नंबर अगर 100 है, सेकंड नंबर अगर 101 है, थर्ड अगर 102 है, तो 522nd नंबर क्या होगा? Is there any pattern between a pair of values that we have written? मिस्टेक है उसमें. 520 के ऊपर TH आएगा सर, ND नहीं आएगा. अच्छा. 520th number. अब आप जाना बोर्ड पे तो देखेंगे. Right? Which one will this be? So what is the pattern? इसमें कितना ऐड करोगे? 1 plus what will give you 100? Second पे कितना ऐड करोगे? You will get 101. On this number 3, what will you add so that you get 102? Is there any pattern in this? 100, 2, 101, 302. क्या है pattern? Can we say we are adding 99 in each case? So continue adding 99. So 520 plus 99 is going to give us 619. So that means the 520th number is going to be 619. And then that extra one tells us कि अब ये next वाले number का वापस से 620 का 6 पे रुक जाएंगे. 619, 620 का 6 पे. So can we be sure that these are the last 4 digits now? Are these last 4 digits? Exactly. Now, why am I thinking about last 4 digits? Well, if you look at the question that is asked, divisibility rule of 16 क्या होता है? In other words, how do you find out what remainder are you going to get when you divide a number by 16?
तो 16 इज रिटन एज 2 to the power 4. सो पावर आपको बताता है कि लास्ट के कितने डिजिट्स को 16 से डिवाइड करना है. नाउ दिस इज अ ह्यूज नंबर. इट स्टार्ट्स विद 1 2 3 एंड सो ऑन. लास्ट के 4 डिजिट 6196 है. तो लास्ट के 4 डिजिट्स को आपको 16 से डिवाइड करना है. इट मींस यू डोंट हैव टू डिवाइड द एंटायर नंबर बाय 16. ऑल यू हैव टू डू इज डिवाइड 6196 by 16 and tell me what remainder are you going to get. So by 6196 को अगर 16 से करेंगे तो 3 तो नहीं आना चाहिए, है ना? ऑड तो नहीं आएगा. What is this going to give us? जल्दी बताओ. ये तो पता चल गया. Right. 2 to the power 4. That's why 4 digit. Right. Last 4 numbers should actually हमारे पास यही था because 16 से डिवाइड करना था. So our target was not to find the entire number, जो कि anyways हम बता सकते हैं. Our target was to find the last 4 digits. Last 4 digits is 528th number and 521st का एक number. 528th number is already a 3-digit number and then you get a 521st का एक और digit. 4 digit मिल जाएंगे उधर ही. उसके पहले नहीं चाहिए आपको. हाँ सर जी. 11th ऑप्शन में है भी नहीं ऋषभ. क्या आ रहा है रिमाइंडर अगर 6196 को 16 से डिवाइड करेंगे तो 6196. हाँ अनीता इतने के बाद ही आएगा. राइट. There is no shortcut. That's why somebody said, sir, ये confusing होता है. Confusing इसलिए होता है because there are tons of steps. First step is something that you should be aware of. Then you further divide it into single digit numbers, then double digit numbers, then you move to triple digit. अब कहाँ तक जाना है वो depend करता है कितने digits बोले गए. 1750 is within the 2700. So you don't have to move beyond 3-digit numbers, right? And believe me, if you have a clarity of the concept, you will not take 45 seconds to reach to this number. No, Varun, that will not help. The last 4 digits to reach here, you will not take more than 45 seconds if you have a clarity here. First 9 numbers, 9 digits. Next 2-digit numbers, 180 digits. What you have to do is subtract 189 from 1750. Get whatever digits are remaining and convert them in 3-digit numbers. So 45 seconds to 1 minute, you will not take more than the time than this. If you are going to solve it for the first time, 5 minute 10 minute लगेगा, पर इतने में कुछ नहीं लगने वाला. Now सूरज, if you are thinking कि ये वाले questions को ऐड करना चाहिए टैकल के लिए एग्जाम में, तो मैं ये बता रहा हूँ कि अगर इनको नहीं करोगे ना तो बाकी करने लायक भी नहीं होगा. As in this is among the easier ones. You don't have a lot of calculation to do. You have to subtract ही तो करा था ना भाई. And a bit of multiplication. 90 into 2, 900 into 3. Simple multiplication, subtraction, and then finally 2 times remainder. एक, how many digits are left over for the next number? And finally जो पूछ रहे हैं कि remainder क्या होगा? इससे ज्यादा तो है नहीं. Right? Quotient is not required Mandip, but ठीक है आपने quotient अगर कर लिया तो. Next one. राहुल, सॉरी रिशाल, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन उसमें क्या लगना है? उसमें कोई एपी नहीं, बिल्कुल भी नहीं. उसमें कोई एपी का लॉजिक नहीं है. Abhinav, there was no use of 1852. It's just a redundant information which is not required in this question. Just to bring your focus to that number, confuse करने के लिए वो नंबर दिया हुआ था. पहले लाइन पढ़े बिना सॉल्व करो, सेम आंसर आएगा. Yes, Rajiv, these are scoring questions. मतलब आप यही होगा worst case, instead of like Gaurav sir is saying 45 seconds, you may take 1.5 minutes. चलो मैंने डबल कर दिया टाइम, पर ये doable है भाई, because there are going to be certain questions you will spend 2-3 minutes और तब भी कुछ नहीं हो रहा. So this is better. 4400 है, नीचे 3400. This is 4400. वो जिसने भी करा वो ध्यान कहीं और था उनका तो. Fishman. हाँ. Yes, it is 4400. 4400 Gautam. 4400 is फिश खा रहे थे क्या? क्वेश्चन बनाते हैं.
So people are getting A, 7, delta. What about people on the app? 99. Tarun says वो 99. पुराना वाला है। अच्छा पुराना है। हाँ। Nikita says 4. Sakshi says 4. वो भी पुराना है। नहीं 4 तो यहाँ पे है। पूरा रिमाइंडर वाला था लास्ट। अच्छा अच्छा उसका आंसर 4 था। निकिता says D, 4. वसुंधरा सबका चैट विजिबल है भाई। Chandranger says delta, Pratik says alpha, Kshitiz says alpha, Abhay का 7 था, Piyush alpha, Aditya delta, KS alpha, Tarosh 7, Aditya delta, Shrestha 7, AA. रिस्की हम तो खूब खा पी के आए हैं, तो हमारा लंच का टेंशन मत लो, हम चला लेंगे काम। Shubham says alpha on the app. Okay, fine. The answer is not delta. तो अब जो बच गया वो आपको पता ही है क्या होगा, क्योंकि nobody said Bravo or Charlie, right? Right? Now, Rishabh, I saw your question. We will do that when we get time. ठीक है? I saw your question. Now this 37, this is a prime number. Do you know what is the property if a number is divisible by 37? तो होता क्या है ना कि 37 into 3 is 111. क्या आपको पता? 111 is 37 into 3. And that's the only way of prime factorizing 111. There is no other way. Okay? So, vice versa, if I say, suppose instead of 111, somebody says this is 666. So can I say this is actually 6 into 111? Can this, I further write this as 6 into 111 को वापस से 37 into 3 लिख दे? If you look at these two, can I say that I can generalize and say that if you have a digit written exactly 3 times, abhi ke liye, then this is going to be always in the table of 37. The another way of saying the same thing is DDD is always divisible by 37. Multiple और divisible में same चीज है ना भाई, factor, multiple. Let me know if you guys understood this part. When any digit, okay, is written 3 times, it's always divisible by 37. Right? कहां से आया? ये 111 एक नंबर होता है बहुत अच्छा सा दिखने वाला 111, right? वो 37 के टेबल में होता है. Okay. So, if I have 444 ऐसे लिखा हुआ है मेरे पास, बहुत सारे फोर्स लिखे हुए. कितने फोर्स लिखे हुए हमारे पास? There are a total of 4400 force written over here, as in this is a number which is made up of 4400 digits and in every digit is a 4. अब इस पे अगर आप ध्यान दोगे, so can I say this is divisible by 37? 3 4 होगा तो 37 से divisible होगा ना, अभी देखा हमने. नेक्स्ट 3 भी होगा, नेक्स्ट 3 भी होगा. If I continue like this, तो out of 4400 digits, how many digits will we eventually be maximum able to take care of? As in उसको हटा सकते हैं कि भाई ये तो repetition चल रहा है, कितने हटा सकते हैं? So can I say 4400 digits में से आप इसके कारण 3 माइनस करोगे, आप इसके कारण 3 माइनस करोगे, आप इसके कारण 3 माइनस करोगे, and you'll continue like this. What is repetitive subtraction? एक नंबर से you are subtracting a number again and again and again. इसको क्या बोलते हैं? Division बोलते हैं. So can we change this to कि 40, इतनी बार तो subtract नहीं कर सकते ना. So can we say that 4400 को जब अपन 3 से divide करेंगे, as in we are doing the same calculation, we'll be left with a remainder of 2.
as in 4400 digits, if you form them in groups of 3 digits every time, you will be left with only 2 digits at the end, which will automatically be 44 only, no? 4 and 4 ही बचेगा, हर digit तो 4 ही है. So 4 डिवाइड अभी करना बचा हुआ है, क्योंकि उसके पहले वाला जो 3 का ग्रुप था ये तो हो गया था, 3 के प्रॉपर ग्रुप बने थे. 44 बच गया. So 44 when divided by 37, what is the remainder? 7. ये आपका आंसर हो जाएगा. Got it? हाँ, सी क्वेश्चन इज नॉट आवर कंसर्न. और जो क्वेश्चन बता रहा है ना, वो मोस्ट प्रोबेबली कैलकुलेटर लेके बैठा है. क्योंकि जो कैलकुलेटर लेके नहीं बैठा है ना, वो 3 का डिविजिबिलिटी रूल यूज करेगा. सम ऑफ डिजिट्स इज 8. 8 को 3 से डिवाइड करोगे 2 आएगा रिमाइंडर. वो सीधे डायरेक्ट यहां कर लेगा. 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? सम ऑफ द डिजिट्स, सिमिलर एज डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9, राइट? किसी को कोई डाउट? कोई डाउट? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स आर देयर विथ लेस देन 6 डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स? मैं तो आंख बंद करके फिर वही मारने वाला था बिना देखे. ना वो था. मेरे को ध्यान है. Not 130 exactly, somewhere around quarter to 2 to 2. VRC. नहीं 130. 130 पे? अच्छा 130 पे. ठीक है. So we have 15 minutes. अच्छा मेरी घड़ी लग रहा फास्ट. VRC will start exactly at 1:30. It will start at 1:30. आप सबके प्यारे ना 1 सेकंड कम, ना विक्रांत कथूरिया सर आने वाले हैं स्क्रीन पर थोड़ी देर में. So how many 4-digit numbers are there with less than 6 different prime factors? 1224 numbers, 8476 numbers, 7613 number, and none of the above. आदित्य दुबे 7 कैसे आया? प्लीज रिपीट करना सर. पिछले क्वेश्चन. हाँ पिछले क्वेश्चन में 7 आया कहाँ था? 44 को 37 से कट गया. अच्छा वो ओके. 44 को जब आप 37 से डिवाइड करते हो तो ये 1 टाइम्स आता है और ये आपको 7 रिमाइंडर दे देता है. दिस इज हाउ यू फाइंड रिमाइंडर. आदित्य सुजीत खाना लेके बैठ जाओ, घर पे ही तो हो और ट्रेन में हो तब तो और अच्छी बात है. वहां पे भी मिल ही जाएगा घर पे बैठे, मतलब अपनी ही जगह पे. तारुष, Kunal, David, Nancy, everyone has started giving none of these. None of these तो ऑप्शन है नहीं वैसे. None of the above है. Then directly do you have 40 37 करते? No Varun, that's pure coincidence कि 4400 को 37 से आ गया आंसर. वो नहीं करना है. सर मेरी एक रिक्वेस्ट है, इसको टीटा क्वेश्चन बना दिया जाए. टीटा बना दिया जाए. हाँ. चलो टीटा क्वेश्चन है. अब बताओ आंसर. +3 नेगेटिव नहीं होगा. अब बताओ. हॉस्टल में? अच्छा तो जाओ ना मेस से तुरंत लेते हैं ना, 1-2 मिनट को तो ब्रेक मिल जाएगा, भाग के लेकर आओ. ये तो पार्टनर होगा ना, रूम पार्टनर, उसको बोलो लेकर आएगा. इतना अच्छा खाना तो नहीं है कि वो खा जाता होगा. वो लाके जरूर देगा, अपना भी दे देगा कि लोग खाओ. तेरा करेक्ट. ट्रेन का खाना मत खाना, नहीं तो कैट तक उल्टी करते रहोगे. दैट्स करेक्ट. 0 आ रहा है. Money 0, Akhil 0. So everyone is saying D as in 0. Now Tarush has given us an answer 9000. So अभी 2 options है. None of the टीटा में एक कुछ लोग 0 पुट करे, कुछ लोग 9. क्वेश्चन पर दोबारा ध्यान से पढ़ो. हाँ. With less than 6 different prime factors. डिफरेंट. हाँ एक्चुअली यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट वर्ड्स है. Less factors, prime, different. 4 digit numbers. 4 digit. यहाँ पर काफी कुछ इंपॉर्टेंट है. घर वाले कहते हैं कि पढ़ने की जगह नहीं खाना चाहिए, खाने की जगह चले जाओ, वहां पढ़ लेना. 10,000, 10,000, 9,000.
Zero. See, most probably the way you guys are giving the answer, it feels like everybody understood the question, but you guys are not able to manipulate the language. यार लाइक्स बढ़ाओ जल्दी से वर्बल से पहले, so that we can see कि सर के आने पे कितने का चेंज आता है. सर ने बोला है तब मैं आऊंगा, तभी जब 300 लाइक्स होंगे. हाँ, विक्रांत सर उससे पहले नहीं आने वाले जब तक 300 लाइक्स नहीं होंगे. सो मेक श्योर, कम ऑन. हम पकड़ के लाए तो कमरे के बाहर से वापस चले गए देख के. ओके, सो लॉजिक सिंपल है, ठीक है. बिफोर यू आस्क रिपीट क्या हुआ, थिंक अबाउट इट. कैन यू गाइज टेल मी द फर्स्ट नंबर जिसके एग्जैक्टली 6 डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स होते हैं. पहला नंबर बता दो जिसके एग्जैक्टली 6 डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स होते हैं. पहला नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर. the smallest number which has got 6 different prime factors, or the first number which has got 6 different prime factors. सबसे पहला. हाँ वैभव सर, आप लोग डिस्कशन क्यों करते हो टाइम पास के लिए? हीटर्स कैसे निकाले? हाँ वैभव मैं समझ गया, लेकिन मतलब यू डिड नॉट लाइक इट, और लाइक हम लोग क्वेश्चन डिस्कस नहीं करते, हम तो वो कर रहे होते हैं. वह कह रहा है पढ़ो भी मेरा कमेंट, बाद में भी लिखा है. हाँ हाँ प्लीज रीड माई कमेंट. तो ऐसे ही टाइम पास कर रहा था. सो प्राइम फैक्टर्स 2, 3, 5, 7, 4 हो गए, 11, 13. So can I say that the smallest number, I'm not talking about 4-digit number, I'm not talking about 5-digit number. Can I say the smallest number which has got 6 different prime factors is going to be 2 to the power 1 into 3 to the power 1 into 5 to the power 1 into 7 to the power 1 into 11 to the power 1 into 13 to the power 1. This is the smallest number with 6 prime factors. I don't know कितना बड़ा नंबर है, 3 डिजिट, 4 डिजिट, 10 डिजिट, मेरे को नहीं पता. But this is the first number, whatever this will yield. कितना आता है सॉल्व करके देखो. Not a difficult task. If you know one very special number, which is 7 into 11 into 13 होता है आपका 1001. ये बहुत प्यारा नंबर है. 2 कान 2 आंख, राइट? इमोटिकॉन की तरह समझो, उल्लू की आंख है. And then you have got 2 into 3 into 5, which is going to give us 30. 30 into 1001 is not a difficult task to calculate. This is going to be 30030, which is 30,030, which is actually a 5-digit number. 5-digit number है ना ये? हमसे क्या पूछा जा रहा है? 4-digit numbers. Now listen to this argument very carefully. When I'm saying that the smallest number, kitna digit? I don't care. When I'm saying the smallest number, which is going to have 6 prime factors, is going to be 30,030, which is a 5-digit number. So can I say all the numbers less than it will not have 6 prime factors? Yes or no? 6 प्राइम फैक्टर्स तो नहीं होंगे उसके, 5 होंगे, 4 होंगे, एक ही प्राइम फैक्टर बार बार होगा, पर 6 डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स तो नहीं होंगे, बिकॉज द फर्स्ट नंबर विच हैज 6 प्राइम फैक्टर्स इज 30,030, which is a 5-digit number. So can I say all 4-digit numbers exist which will have less than 6 different prime factors? 5 प्राइम फैक्टर से बनता होगा, 2 से बनता होगा, 1 से बनता होगा, पर 6 से नहीं बनता होगा, क्योंकि 6 से तो 5 डिजिट है. सो कितने 4-digit नंबर्स होते हैं? हाउ मेनी 4-digit नंबर्स डू यू हैव? वी जस्ट सॉ दिस कपल ऑफ क्वेश्चंस एगो. कपल क्या, पिछला ही क्वेश्चन था, पिछला का पिछला. So 9,000 numbers होते हैं 4-digit. So that will become your answer if the question had been a theta 1. Right now it's none of the above. Now people who answered 0, I understand where did you guys had the confusion, right? You guys were thinking कि ये सारे के सारे हैं तो 0 numbers होते हैं. क्वेश्चन है less than है, right?
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तुरंत करते हैं एक और. Factorial. What is the only possible value from the options below which will divide n? N is this sum of factorials of all the first 1000 natural numbers, and you have these four options: 10, 9, 16, 6. वैभव कॉन्सेप्ट्स तो हम लोग क्लास में पूरे करें वैभव ना. अभी डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन व्हाट एवर कॉन्सेप्ट इज रिक्वायर्ड वी आर डूइंग दैट. अपार्ट फ्रॉम दैट कॉन्सेप्ट करने लगेंगे तो भाई 8 आवर्स नहीं चाहिए होंगे और 2 डेज नहीं चाहिए होंगे, है ना. सो उतना नहीं कर सकते. एंड if you are looking at the revision concepts, we have had all this series, no, topic wise सारे हैं वैभव. इट्स देयर ऑन द ऐप, आप चेक करो. यूट्यूब पे भी है, वाईटी पे भी है. Alpha, Alpha, Bravo, Bravo, Alpha, Bravo, Alpha, Bravo, Alpha, Bravo. I hope you guys are seeing this. There is a plus between the factorials and not multiplication. Bravo, Charlie, Ishika, single person with a Charlie. Alpha, Bravo, Bravo, Shubham, Bravo. Shubham, capital B, small b, capital B. तीन अलग अलग है. Tarun, Alpha. So they think 10 is trapped. 10 is trapped. Like, other than the correct answer, all the three options are trapped. सीधे शॉर्टकट बता दो, कितना सॉल्व कौन कर रहा है. शुभम ने बता दिया. हाँ, shortcut बता दो सर, बिल्कुल. So cannot be divided by n. Very good, Shubham. Very Good, good. Shubham, very good. ये शुभम यूनिट डिजिट अच्छा. भी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं थी एक्चुअली में. शुभम, you must have solved up till 4 factorial. That was also not required. So Navin sir, Let's solve. Can you guys tell me what kind of number the eventual sum will be? Odd या even? केवल ये बता दो. 1 factorial plus 2 factorial plus 3 factorial plus 4 factorial and so on and so forth up to 1000 factorial is going to be an odd number, even number. कितने डिजिट का, लास्ट डिजिट क्या है, मेरे को कोई लेना देना नहीं है. मेरे को ऑड इवन बताओ. The sum, the value of n, whatever that is it odd, is it even? That's it. और कुछ नहीं चाहिए मेरे को. good, very good. Off क्या होता है? Off digit. टाइपो, डी की जगह. So can I say this is odd? अब मेरे को ये बताओ, ऑड नंबर इवन से डिविजिबल Odd कैसे हुआ सर ये? ये ऑड इसलिए हुआ सर क्योंकि 2 फैक्टोरियल इवन है. Okay. 3 फैक्टोरियल इज व्हाट? प्रीवियस नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करना. Even. अब इवन तो बैड एप्पल है बास्केट का, वो सबको खराब Apple करेगा, बना देगा. सबको बनाएगा बैड एप्पल. तो 3 फैक्टोरियल भी आपका इवन हो जाएगा. एवरी फैक्टोरियल विल बिकम इवन एंड वी हैव टन्स ऑफ इवन नंबर्स प्लस 1. Okay. सो इवन प्लस 1 विल रिजल्ट इन ऑड. Perfect. ओके. ना ऑड नंबर किस तरह के नंबर से डिविजिबल होता है? इवन नंबर्स या फिर ऑड नंबर? कॉमन सेंस है. डिविजिबल एज इन 0.1 नहीं सोचोगे आप, राइट? देयर इज गोइंग टू बी अ रिमाइंडर, आइदर 0 और नॉट 0. An odd number is going to be definitely not divisible by any even number, while an even number is definitely divisible by at least one odd number. 1 से तो होता ही है हर नंबर इवन. मैं तो वैसे बोलता हूँ, मैजिक देखोगे, कोई भी नंबर लो 1 से डिविजिबल होता है, तब उनके दिमाग में रहता है कि फैक्टर्स में 1 से लिखना चाहिए. नहीं तो वो वैसे याद नहीं होता, राइट? So we can say that 9? odd number will not be divisible by even. Cool life, the answer, if answer would have been, I mean, the question would have been a theta 1, then there can be infinite answers. That's why this question cannot be theta, because ये जो आपके पास n है, ये तो बहुत सारे नंबर से डिविजिबल हो सकता है. नहीं, आपको नहीं लगता? 3 से डिविजिबल है, ये 9 से है, राइट? किसी और बड़े कोई प्राइम नंबर से होगा. इट डिपेंड्स हाउ मेनी factorials you can take out common, whatever is left, फिर वहां से आगे देख सकते हो. So infinite answers होंगे. So this question cannot be theta. So you guys now have 4 to 5 minutes, as in not 4 to 5 minutes. अब अपने घड़ी के हिसाब से देख लो. 1:30 is when Vikrant sir will be here
instead of me. ठीक है? ICAT So, is just quickly- around the corner, and we at BYJU'S Exam Prep know how important this is for you. And we are with you at every step of the way, even on the D-Day. Catch us live on 27th of November. ICAT is just around the corner, and we at BYJU'S Exam Prep know how important this is for you. And we are with you at every step of the way, even on the D-Day. Catch us live on 27th of November, where we will provide you with detailed CAT analysis, expected cutoffs, paper pattern, and much more. Not only this, BYJU'S Exam Prep presents the CAT 2022 Score Calculator as well, a tool designed to gauge your CAT performance and estimate your score. So what are you waiting for? Join us on November 27, 2022 for all the CAT Day activities, and do not forget to subscribe to BYJU'S Exam Prep YouTube channel and press the bell icon to get notifications. We wish you all the best from entire BYJU'S Exam Prep team. ICAT is just around the corner, and we at BYJU'S Exam Prep know how important this is for you. And we are with you at every step of the way, even on the D-Day. Catch us live on 27th of November, where we will provide you with detailed CAT analysis, expected cutoffs, paper pattern, and much more. Not only this, BYJU'S Exam Prep presents the CAT 2022 Score Calculator as well, a tool designed to gauge your CAT performance and estimate your score. So what are you waiting for? Join us on November 27, 2022 for all the CAT Day activities, and do not forget to subscribe to BYJU'S Exam Prep YouTube channel and press the bell icon to get notifications. We wish you all the best from entire BYJU'S Exam Prep team. ICAT is just around the corner, and we at BYJU'S Exam Prep know how important this is for you. And we are with you at every step of the way, even on the D-Day. Catch us live on 27th of November, where we will provide you with detailed CAT analysis, expected cutoffs, paper pattern, and much more. Not only this, BYJU'S Exam Prep presents the CAT 2022 Score Calculator as well, a tool designed to gauge your CAT performance and estimate your score. So what are you waiting for? Join us on November 27, 2022 for all the CAT Day activities, and do not forget to subscribe to BYJU'S Exam Prep YouTube channel and press the bell icon to get notifications. We wish you all the best from entire BYJU'S Exam Prep team. ICAT is just around the corner, and we at BYJU'S Exam Prep know how important this is for you. And we are with you at every step of the way, even on the D-Day. Catch us live on 27th of November, where we will provide you with detailed CAT analysis, expected cutoffs, paper pattern, and much more. Not only this, BYJU'S Exam Prep presents the CAT 2022 Score Calculator as well, a tool designed to gauge your CAT performance and estimate your score. So what are you waiting for? Join us on November 27, 2022 for all the CAT Day activities, and do not forget to subscribe to BYJU'S Exam Prep YouTube channel and press the bell icon to get notifications. We wish you all the best from entire BYJU'S Exam Prep team. ICAT is just around the corner, and we at BYJU'S Exam Prep know how important this is for you. And we are with you at every step of the way, even on the D-Day. Catch us live on 27th of November, where we will provide you with detailed CAT analysis, expected cutoffs, paper pattern, and much more. Not only this, BYJU'S Exam Prep presents the CAT 2022 Score Calculator as well, a tool designed to gauge your CAT performance and estimate your score. So what are you waiting for? Join us on November 27, 2022 for all the CAT Day activities, and do not forget to subscribe to BYJU'S Exam Prep YouTube channel and press the bell icon to get notifications. We wish you all the best from entire BYJU'S Exam Prep team. ICAT is just around the corner, and we at BYJU'S Exam Prep know how important this is for you. And we are with you at every step of the way, even on the D-Day. Catch us live on 27th of November, where we will provide you with detailed CAT analysis, expected cutoffs, paper pattern, and much more. Not only this, BYJU'S Exam Prep presents the CAT 2022 Score Calculator as well, a tool designed to gauge your CAT performance and estimate your score. So what are you waiting for? Join us on November 27, 2022 for all the CAT Day activities, and do not forget to subscribe to BYJU'S Exam Prep YouTube channel and press the bell icon to get notifications. We wish you all the best from entire BYJU'S Exam Prep team.
Hi there, good afternoon and welcome back. So, how are you guys doing? जल्दी कैसा कर रहे हो, क्या चल रहा है, आज क्या जानना चाहते हो? आज the focus is going to be more on options, elimination, along with whatever you guys ask. And it is really nice to see quite a few of you here. हाँ, पुराने मैसेज अभी तक आ रहे हैं. निकिता से स्ट्रेस होता ही क्या है यार? तुम्हें पता है, you know the opposite of stress? You know the opposite of stressed? Desert. तो desert is it लो, काम चलाओ. That's how it's going to work. Right? Hi there. Production engineer. Cat is just around the corner. है ना, कितनी ऑब्वियस चीजें बता रहे हैं ना. आज मैं उठा, मैंने देखा सूरज पूरब से निकला. हाँ जी, कहाँ हैं और लोग यार? आज बड़े कम लोग हैं अभी तक. हाँ, तो जल्दी आओ यार, है ना. जी मी आजा. Okay, main idea of paragraph. चलो, I'll address this question. So, Vasundhara, what I do is that when I read the passage, I try to think of two things. Number one, what is the subject matter of the passage? And number two, what is the purpose of the author? The moment you combine these two things, you get the main idea. And when you go to options with this clarity, it makes it easier for you to eliminate the answer choices. Baki, you can also try, when you stuck between two answer choices, try treating both of them as an essay topic given to you. So think of what all you'd put in that essay. And then compare that with the passage. That will also give you terrific insights. प्रज्ञा says इंटरवल के बाद आने में टाइम लगता है सबको. वे थिएटर में होता है वो, because the restrooms are crowded. Okay, how to eliminate? Akanksha, any particular question type where you want this input? Because particularly when it comes to reading comprehension, different question types may have, or why may they actually have different ways of eliminating close options. For instance, I told you in main idea, think of those two things before you go to the options. When you're stuck, treat them as essay topics and they can actually help. हाँ, what else? VRC में 40 plus नहीं आ रहे यार. देख, ऐसा है, देख, सबसे पहली चीज, we are not equally good at all the three sections usually. So, for example, for somebody like me, VARC is obviously my strength. This is where I usually go so far ahead of the others, so far ahead of the competition, that in the remaining two sections, if I'm as good as the rest, it generally suffices. It works. So, do you have a section or two where you can pull ahead of the competition? Then focus on those sections. If VARC is not one of those two sections for you, it is okay. तो क्या हो गया, है ना? उस केस में VARC में decent performance दे दो. And then you can pull ahead in the other two. Jetalal says how to find easy set. Jetalal, the session after mine will be a session where we discuss DILR, and in that session, we definitely give that input to you. VRC में स्कोर ही नहीं आ रहे मेरे तो यार. एक्चुअली ना, सबसे पहले ना टारगेट लेकर के चलने चाहिए. हाँ, सो फॉर एग्जांपल, आई हैव 40 minutes, राइट? इन दीज 40 minutes, कैन आई फर्स्ट अप अटेम्प्ट 10 questions with great accuracy? That gives you 4 minutes per question. Once you notice that, oh, I am actually able to attempt 10 questions with relative ease and I still have some time left over, you can set your next target as 11 questions, 12 questions, right? Whichever number you reach. Do not try to go beyond your ability. So notice, when we prepare at home, we try to push our ability further. हाँ, हम जब घर पे तैयारी करते हैं तो अपनी औकात बढ़ाते हैं, और जब पेपर देने जाते हैं तो अपनी औकात दिखाते हैं. So paper में don't overextend yourself, right? So you already know that. Push yourself during your preparation. In the exam, you know your limits. Just attempt accordingly. Ashutosh, we'll be talking about some of those questions today.
Sneha says, how many questions should we attempt at least to get more than 98, 99 percentile? Sneha, I can answer that question, but then let me approach it from a logical perspective. Let us say that I tell you that you need to attempt 15 questions. Now, what will you do? Will you solve 15 questions of the section and then stop? नहीं ना, time पड़ा होगा तो करोगे ना, और है ना? Or let's look at the other way. I said 15 and you're not able to attempt 15. So what will you do? Will you just go ahead and blindly start attempting questions because you need to reach that magic figure? No, just stay within the ability that you've developed through your preparation. Make sure that you select your questions, your passages wisely, and you manage your time well. That's all that is needed. Okay. Club of Berozgar, यार, this is a really nice question. VARC में कभी 20-25, कभी 10 से नीचे. यार, अगर VARC में आपका स्कोर हो रहा है फ्लक्चुएट, कभी ऊपर कभी नीचे, हाँ, कभी नीम कभी शहद, हाँ, it basically means that when you attempt your questions, you are not entirely being logical. When you pick up your answers, you do not pick them up because you have a very sound reason behind them. You may feel one option is better. So the moment we start attempting questions intuitively, our scores start fluctuating in VARC. So don't do that. Okay. And okay, so once again, because we are transitioning, let us refocus. So keep your fingers ready. Okay, keep your fingers ready. Here is a sentence for you on the next slide. Just write this sentence, the one which is in white. Just write this sentence in the comment box really fast. Let's see how quickly you can share that. Let's see who the first 5 are going to be. Come on. Varun says, how would my approach be? Okay, so Varun, once this is done, I'll talk about it. Oh, not a single person has typed it so far. What happened to your fastest finger first? Nikita, vice versa. Okay, Sakshi has shared. Who else is going to send it? Okay. Sanskriti. Nikita, that's sharp. Piyush, that's great. So, did you write this sentence or not? You notice that the was written twice. Were you paying attention? Okay. So, now to answer that question, how to approach. So, in fact, somebody asked this yesterday as well. So, you know that in CAT VARC, you have some RC passages and you have some VA questions. So, how would you want to attempt it? RC first or VA first? I'm saying, yeah, basically there are combinations. Okay. So, if you're really strong at VA, start with VA. You're really strong at RC, start with RC. Now, when to attempt VA? You can solve all the VAs and then shift to RC, all the RCs or then shift to VA. Or what I generally do is that once I start with the paper, I give myself 10 seconds for every RC passage where I try to see how familiar I am with the subject matter of every passage. Once I know that, I decide on a priority order, okay, the sequence in which I plan to attempt those 4 passages. Once I've done that, I attempt 2 passages, then I go over to VA, and then I attempt certain questions, then come back, attempt the other 2 RC passages, and then once again go back to VA. That's how I approach it. Or in fact, a couple of times I actually recently experimented with this, where instead of starting with RC, I actually started with the best summary questions of VA, because in a way they are like mini RCs, right? You still need to comprehend the paragraph, get the gist out, and then eliminate. So I experimented with that and I realized that it is actually putting me in the right frame of mind. So if I were to write a paper today, I am probably going to start with best summary questions, then go to passages, figure out my priority order, attempt 2 passages,
Go to VA, see which questions, the rest of the VA questions, and see which questions I can solve really fast, and then come back, attempt the other two RC passages. So that is how I generally attempt it. But chaliye, so let us start practicing. We'd actually make it a little VA heavy today. So questions 1 to 5 are going to be para jumbles. So in each one of these questions, I'm going to give you 4 sentences. Your job will be to arrange them and form a coherent paragraph. Risky Fighter says, Quant के 3 सर आते हैं अंग्रेजी के क्यों यार? Actually ना हमारी team is spread across India. तो जो लोग दिल्ली में अभी, the sessions are being beamed from Delhi. So people who are here, they are the ones who go ahead and take it. So unfortunately, my other team members are as of now not here in Delhi. Otherwise, I'm sure they would have loved to join, and I would also have loved to have them around. Chaliye, so question number 1, as usual, you have this question, and those of you who were there with me yesterday, you guys know that here is a timer. It's a 1-minute timer, so I'm pushing you with this timer really. So if you can solve it within that 1 minute, great. Otherwise, it's okay. You can still take your own time. I will give you 5-10 seconds extra. So question number 1, para jumble, your time starts now. All right, so let's go ahead and have a look. What do you think the answer should be? So all of you starting with 4, which makes a lot of sense. It is the loudness that a century later still echoes around Ireland as an unanswered question, how we lost Michael Collins. So you notice if you look at the other 3 sentences, we are talking about somebody and that person is mentioned only in 4. So it makes a lot of sense to actually start with sentence 4. But where do we go thereafter? So sentence number 1. Who did it and why remains a source of speculation that now bubbles as strong as ever. Okay. So you notice sentence 1 says that there is a speculation around somebody's death. Sentence 3 talks about some kind of agreement. So what should I put in? I can say everyone agrees and then write who did it and why remains a source of speculation, or I can write 1 and then write 3. I think both of them appear decent. However, if I look at second, the upcoming centenary and the discovery of new evidence have prompted historians, filmmakers and forensic scientists to reinvestigate the matter. Sentence 2 should be better placed after which sentence? Sentence 1 or sentence 3? Think along those lines. So what do you say? Sentence 2 will be better placed after 1 or after 2? There are 2 things in sentence 2, okay? It talks about centenary, 100 years, and it talks about discovery of new evidence. Which one will be a better bet for us? So I'd say 1 appears better primarily because
You notice there are other clues too. Third goes ahead and talks about the date. It also goes ahead and talks about the place. It also gives you some additional information about Michael Collins. So it's actually better to introduce these ideas before mentioning sentences where you do not exactly talk about that person. So I'd prefer 3, then 1, and then 2. And even if you look at 1 and 2, it talks about speculation, and then sentence 2 talks about discovery of new evidence have prompted a revisit. So 4, 3, 1, 2 is likely to be a better choice for us. So as you can see, what do we basically do? We read all the sentences, we locate clues. Those clues can come in the form of a word, they can come in the form of the idea that a sentence represents, and then start thinking of how best to arrange them. Okay, here is your next question, and your time starts now. Fantastic, Varun. I'm glad that what we teach works. You told me yesterday that when it comes to 4 sentences, that trick seems to be working for you, right? Yes, Ranbir, it's a theta parajumble. Because it's a CAT session, we're just going to mimic the exam, right? Okay, our time is up. I thought that this is a relatively easy question, so let us see. Sentence 1 introduces a park and mentions the presence of a map. Fair enough? Now, if you look at all the other 3 sentences, sentence 3 seems to mention something that can be termed as a map, although it does not use the word map. But if I look at it in terms of ideas, it somehow suggests it is a map. There is another clue. Look at 1. This is a map to unlock the secrets of the universe. And look at 3. Measuring around 1.8 meter in diameter, Sakwala Chakraya, which translates to universe cycle, is shallowly carved onto a low rock face among the protected park ruins. And then, okay, when do we use in fact? When do we use in fact? We use in fact to join 2 similar ideas where the second one is supposed to provide additional evidence for the first one, where the second one substantiates the first one. For example, I can say that Ravi is my best friend. In fact, whenever I have needed a friend, he's the one who's always been around. So you notice? So that's a transitional expression that can offer valuable clues. In fact, 4 seats have been sculpted into a flat rock surface opposite that. So opposite what? Providing the ideal viewing area. This is what you're supposed to view. Then let's look at second. Both the map and seats. So we know that second should definitely come after fourth. And this confirms our speculation, because we are saying the map, it confirms our speculation that whatever is given in sentence 3 is definitely a map, and therefore 1342 is going to be the best sequence. And I think most of us have managed to get this right. But some of us, for example, if you're putting 2 before 4, both the maps and seats, see, seats are introduced in sentence 4. So 2 should definitely come after 4. We just need to locate these clues, and that should enable us to arrive at the right answer. Okay, next. If you have any question, any concern, just share. I'll just give it a couple of minutes before we dive into the next question. Shall we? Here is the next one.
And your time starts now. Yes, the logic in the last question, we basically identified clues scattered around various sentences and we used them. We rely a little more on main idea while solving the odd one out questions. Right, so let us go ahead and see. One of the first things that I picked up while solving this question was, but they are not the only problems that lie ahead. So they is a plural pronoun, must refer to a plural noun, and I saw two places where we have multiple issues being mentioned. Sentence 1 talks about two things, carbon emissions and tax policy, and then sentence 2. So this they can refer to either the issues mentioned in sentence 1 or the issues mentioned in sentence 2. Okay. Then the next thing that I picked up was sentence 4. It says the last issue. So which issue would this be? Which issue should this refer to? So I already know that I need to have either 1.3 or 2.3, right? The reference of they, remember? Then this last issue, if you read it further, it is talking about tax. And now if you look at first, it is talking about tax policy, which means that this last issue has to refer to sentence 1, which means that I need to have 1 and 4 coming together. And since 1 and 4 are together, 1 and 3 cannot be together. So it has to be 2, 3. Now, which one of these two should come before? 2, 3, 1, 4 or 1, 4, 2, 3? So when I look at this as another government body, that can help me put it after. If you start with 1, 3, then from 3 to 2, there is no transition. So it's better to put 2, 3 first, and that is why we should write it as 2, 3, 1, 4. So just locate the clues and that should help. Here is your next question. Let's just give it a few seconds so that if anybody has any question, you can perhaps ask. So you notice clues, clues, clues. That's what matters. Okay. Here is your question and the time starts now. Fifteen seconds to go. Okay. So let us see. Right. So let's focus on one of these clues. The newly
carved berg. It should have been carved. I don't know why it is L. The newly carved berg. When do we use the? Remember, the is called a definite article. When are we supposed to use the? There are 2-3 reasons behind or using the normally, but one of the primary reasons is we use the to refer to something that has already been mentioned. Remember the story of a thirsty crow? What were the first 2 sentences? The first 2 sentences were, once upon a time there was a crow. A crow. Just notice the article. Once upon a time there was a crow. The crow was very thirsty. So in the first sentence we say a crow, in the second the crow, because when you say the, you're referring to a crow which has already been mentioned. Similarly, when you say the newly carved berg, you notice it is actually mentioned in sentence 2. So a giant slab of ice, that is basically what an iceberg is. So a giant slab of ice bigger than the Spanish island of Majorca has sheared off from the frozen edge of Antarctica into the Weddell Sea, the European Space Agency said on Wednesday. The newly carved berg. So this the refers to the iceberg created in 2. That is why you need to have 2 before 3. Fair enough? Okay. Now let's move further. Look at this. By comparison, which sentence should we put in before? By comparison, there are some sizes, and then first once again gives you sizes. So first gives you the size of the iceberg. By comparison, these are the sizes of the other places. So can I say that we need to have 4 plus 1? And in 3, we are talking about enormous oblong ice sheet, and 4 gives you the dimensions of that ice sheet. It goes on to make it more specific. It tells you exactly how big that ice sheet is. So 3 needs to come before 4. You combine this and you get 2, 3, 4, 1. So if this is the answer that you arrived at, fantastic. In case you missed out on some clue, then that could have led you astray. कोई क्लू नहीं दिखा तो गलती हो सकती है, क्लूज दिख जाएंगे तो उसके बाद गलती नहीं होती है. तो यार अपने को क्या करना है, अगर क्लूज नहीं दिखते तो अभी वो क्लूज देखना शुरू करो, है ना. ये नाउन, प्रोनाउन, आर्टिकल वगैरह, ट्रांजिशनल एक्सप्रेशंस, दोज आर द काइंड ऑफ थिंग्स दैट वी आर सपोज्ड टू बी फोकसिंग ऑन. ओके, सो हियर इज द नेक्स्ट वन. The question, and your time starts now. It is a smaller question. Chances are that you should be able to do it faster. The time is almost over. Okay, so the answers are rolling in. That's nothing pleases me more than the answers that I see. Right, so let us dive in. What should we do? I deliberately laid a trap, and a lot of you have fallen into that trap. I'll talk about it. So it is turning off the tap. This it refers to what? It is referring to the government.
Why? The government is doing the unthinkable. It is turning off the tap. So a government, even when the companies are making losses, a government generally does not close the company. It generally keeps on supporting. So turning off the tap in this context would mean no more money being given to that company, and that is the unthinkable. So you need to have 2-1. Then the private sector did the same in the past because securing legal sanctions for closure was virtually impossible. So did the same what? So you legally cannot close. So what do? You stop providing money and it eventually automatically withers away, dies away. So you need to have 3. So I think we should definitely have arrived at 2-1-3. See, the same has to come after turning off the tap. Right? Now disinvestment, Ranbir, is different. That's selling it. Now the question is, where do we put 4? So 3, sorry, 2-1-3, my bad, 3-1-2. Yes. Some of you have corrected me in the messages. 3-1-2. So 3-1-2. That has to be, I think this is something that I expect from everybody. Where does 4 go? Before or after, and why? So before I answer that, let me ask you a question. I'm giving you 2 sentences. Can you tell me the difference between the 2? Music can be relaxing. Music can indeed be relaxing. What does the introduction of the word indeed do? Think. So imagine some friend of yours tells you about a person in this other section of your college and says, oh, that person is very attractive. Then you go to see that person. And once you see that person, you share that opinion. So what do you say? Oh, this person is indeed attractive. So words like indeed are used to reiterate. They are used to state an idea again. No, they are used to state an idea again, an idea that has already been mentioned. So look at 4th. It has indeed, which means that it is a reiteration. So reiterations are given after stating something. So when you look at 3-1-2, you get this idea that both of them tend to do similar things, right? So this indeed, because it is a reiteration, it should come after and not before. You remove this indeed and then you'd actually put 4 at the beginning. Then it can act as a topic sentence. So if you have some sentences that convey an idea in a specific way, they give you details, and then there is a sentence that conveys that same idea in a generic manner, then the generic sentence should come before the specific sentences, except when it is a conclusion or a reiteration. So that is why it should be 3-1-2 4. अरे why are you not being very generous with likes today? इतनी देर से चल रहा है भाई, क्या हो गया यार? तुम्हें पता नहीं है ऑनलाइन उसके बिना मजा नहीं आता है अपने को यार, ऐसा मत करो. तो वो यार ऐसा कैसे हो सकता है that you're able to solve the questions here but not in the mocks? I think you'd actually need to work with the person you've been working with so far to see. Okay, stuck video. Okay, somebody from the tech team, if you're hearing me, I think I may require some assistance. Buffering. Okay, I'll just seek help from somebody in the team. Until then, if you have any question, if you are able to hear me, you can actually ask your questions.
Okay, all okay. Video is back. Fantastic, fantastic. It is back on YouTube, but apparently it is still seems to be stuck on our app. Huh? So the video seems to be stuck on the app. I'll just get in touch with the tech team and they'd sort it out. But if it's running fine, fantastic. Okay, so I hope that gives you a bit of an idea of parajumbles. Now, to take a break, to act as a relief, let us go ahead and solve a passage. Okay, so we'd cover, Kaushik, we'd also cover odd one outs. After this passage, that is what we have. Okay, so here you go. So, first paragraph of the passage. Yash, unfortunately, I have not been able to share that PDF. So, you'd have to make do with this. Okay, so just get the gist of every paragraph. I was running a little late today. I could not really prepare a file to send it over. But then, let's just tax your brain. Let's just bother your brain today. Oh yes, side. True. I forgot. Okay, the next. Devanshi, don't assume. Just work on building a sounder logic. Okay, develop a sounder reason behind choosing every option. Next, that's your third paragraph. Fourth paragraph. Fifth paragraph. Second last paragraph. And here comes the last paragraph.
Let me know once you are done so that I can take you over to the questions. Fantastic. So 5, 6 have already told it to me. So here is your summary of the passage. So remember we did that yesterday. So I thought that I'll just use it as a quick reminder. When you read a passage, you're not supposed to really pick up the details, get the approximate idea behind every paragraph, and you're generally good to go. So first talked about mangrove forest on Union Island, very useful. Then corporate profit led to that problem. Then such things have happened world over, where the profits are privatized and costs socialized. Fourth was merely an extension of the third paragraph. Then fifth, sixth, and seventh. So this is the kind of overview that I want you to have. That's the kind of ability that we aim towards building. Okay, so here is the question. And your time starts now. Okay, so the correct answer choice, let's see. So a tax imposed on building the resort. So maybe there was a tax imposed already, but it did not work. No, the damage still occurred. So this is unlikely to have prevented the disaster. Okay, B, the resort owners promising jobs at the resort for the local people. Okay, that will lead to upliftment of the local population economically, but what about the ecological issues? That's the core, right? So you cannot prevent that ecological disaster through B. Moreover, what if you provide jobs, but then your business shuts down, so you're left with an ecological disaster plus no jobs once again. C, protests against building the resort by the local community. Well, protests already happened, yet the resort was being built. D, a law that prevents the clearing or cutting of trees. The moment you make that a law, obviously, whatever happened there in that mangrove forest could not have happened, and that is why option D. So majority of you have actually got this right. Here is the next question. And your time starts now. Ranbir, the moment it comes to an indirect question, you should always prefer elimination over selection. Once you attempt this question, once this question gets over, I'll tell you why. So yes, it's an inference question. Can you try and eliminate? See, you remember what we talked about yesterday, right? Okay. So, first up, why should we use elimination? Why not selection? So we are usually more confident about an answer choice that is wrong as compared to an answer choice that is right. So when an option is right, you can still have that hesitation in English, okay? I'm not talking about maths. Moreover, the absolute best answer choice for that question may not even be there in the options. You're supposed to pick up the best of the given lot, right? Here is an example. So tell me something. चोरी करना अच्छी बात है या बुरी बात है? Stealing is good or bad?
So you notice stealing, a negative thing. So majority of us think कि चोरी करना बुरी बात है. Right? It's very easy. Bad. Okay. Now let me ask you another question. सच बोलना अच्छी बात है, right? तो हमें हमेशा सच बोलना चाहिए. We should always be truthful. सच बोलना तो अच्छी बात है ना, तो हमें हमेशा सच बोलना चाहिए, है ना? हाँ, so you notice when it came to stealing, we were absolutely sure that is bad, we should not do it. But when it comes to something right, जैसे सच बोलना, we start thinking of all those situations. यार depends, यार not always, यार white lies तो चलते हैं ना यार. अब किसी ने डिनर पे बुलाया, खाना अच्छा तो नहीं था, पर उसने पूछा खाना कैसा बना है, तो अपन क्या बोलते हैं? अरे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. हाँ हाँ, या रात को 2 बजे घर लौटे और घर वालों ने पूछा कहाँ से आ रहा है, अब सच बताएंगे तो बुरा लगेगा ना. तो दैट्स हाउ, राइट. सो जो सही होता है उसको लेकर के हम ना 100% सर्टेन नहीं होते. जो गलत होता है उसको लेके वी आर रिलेटिवली सर्टेन. The level of certainty is higher. Okay, so that is why when you look at an option, it is easier for you to feel confident about the fact that this option is wrong. You'd not feel as confident about an answer choice and say this is right. So, here, now coming to inference question, we know that we apply these labels, true, false, can't say. So option A, the ecological destruction in Union Island is not a unique incident. True. Such things have happened the world over according to the passage. B, corporations destroy the environment and ordinary people face the consequences. According to this passage, true. C, the world has to be rebuilt under a different form of capitalism. The passage said that we need to move away from, we need to come up with a new form other than capitalism. Right? So it is not a different form of capitalism, it is a move away from capitalism. So if I look at C, that is false. You can refer to paragraph 5 if you want to, you'd find it there. Okay, D, banks and investors who have poured money into environmentally destructive projects should be directly confronted. True. This is once again written in passage 5. It can be inferred from there. So the question was, all of the following can be inferred except, which means 3 of the answer choices are true, 1 is not true, and the one that is not true will be your answer. So C it is. Right? Okay, here is the next one. Question number 8. Of the following sets of concepts, identify the set that is conceptually closest to the concerns of the passage and mentions them in the sequence in which they have appeared in the passage. So these questions can actually be tricky. But use elimination and then see. Your time starts now. Okay, lot of answers, that's great. यार ऐप वाले लोग, साक्षी बस एक साक्षी आंसर दे रही है यार ऐप पे, बाकी लोग कहाँ हैं यार? रंजनी, चिन्मयी, come on. Okay, so when I look at it, you realize companies causing ecological damage was before capitalism. Moreover, it does not even talk about the mangroves. B, mangrove forest in Union Island, terrific. New system, okay. Water war, okay. But
you have to have companies causing ecological damage placed before new system. Companies causing ecological damage, then mangrove forest. Come on, we've introduced the mangrove forest in the first paragraph, right? So you can eliminate it and automatically you'd be left with D. Moreover, if you have that overview, think of it. Mangrove forests, companies earning profits, happened world over. We need to move away from capitalism as it has led to a sorry state. Others are not learning lessons from Union Island. There are these other institutions that are still doing it. Then Bolivia water wars. And then that political self-determination thing. And once you have this picture clear in your mind, just go back, you would realize that it is very, very easy to answer such questions. Okay, so your question number 9, the last question based on this passage, here it is. Ranbir, it can, depending upon the other two are also fine. You can't be 100% certain though. The time is almost over. Okay, so if I look at this particular question, what is the author most likely to endorse? Well, it's another way of saying which of the following the author is most likely to agree with. So high taxes should be imposed on every project that causes major ecological damage. So are we saying that the author will be okay with ecological damage provided the taxes are high and the tax money to be distributed to local? So we are saying that, okay, you can damage the ecology as long as you are willing to pay for it. That is not something that the author is likely to agree with, right? So I am going to be pretty suspicious. B, a new economic system that focuses on people rather than money making by a few is to be conceived. Okay, makes sense in the context of the paragraph passage. See, people should participate more in elections and vote for green politicians. This is out of scope. See, the author has advocated political self-determination and not merely participation. And self-determination can mean that people take the decisions pertaining to their areas by themselves. They do not necessarily delegate it to some other authority. So that is where C should fall out of favor. D, capitalism is to be abolished in favor of socialism. So move away from capitalism, yes, but in favor of socialism, well, that is not mentioned anywhere in the passage. He has used a similar expression once. The costs were socialized. That's not socialism. Socialism is an entirely different form. So that's out of scope, and that is why the best answer for us is option B. And with that, let me take you over to your next question. Or next question set. So this time around, all of these questions are going to be odd one out questions, right? So shall we? So 5 odd one out. So how do we approach them? So yesterday I told you that why we talked about why a longish article is divided into different paragraphs, right? So topic confined to an aspect. So that is one thought process, one approach that can help you zero in on the right answer. And you can also choose to combine it with your understanding of parajumbles, where the moment you see those connections between or among some of those sentences, that can also enable you to pick up the right answer choice. Okay.
So, oh, people asking, are these CAT difficulty level questions? Yeah, I've been writing the CAT for donkey's years. There have been years when CAT has been easy. There have been years when CAT is difficult. So, as long as you, and that actually does not even matter, frankly. I'll tell you why. At the end of the day, you are aiming for a certain rank. If it is easy, it is easy for everyone. If it is difficult, it is difficult for everyone. So if you're better than the others, you'll always score more. So just focus on the process. Okay. Vasundhara, we'd have to go back to the previous passage all the way. So slightly difficult to do that today, maybe sometime later. Okay, so here is your question number 10 on the screen. 5 sentences. Please identify the odd one out. And your time starts now. Odd one out, Anita. 4 of them belong to the same paragraph, 1 does not. Vasundhara, nobody knows. Expect the unexpected. Be prepared for that. Okay, let us see. Okay, so if I go by the topic, aspect, angle, sentence 1, 2, 4 and 5 are all talking about aggressive warfare. Whereas 3 talks about genocide replacing aggressive warfare. That's one way out. The other way out is you can start arranging it, right? Look at one. It says the article drew a further terrible conclusion. Which article? It's mentioned in sentence 2, right? So you need to put 2 before 1. Then 1 says the article drew a further terrible conclusion. So where is a further terrible conclusion? That conclusion is given to you in sentence 4. And in elaborating this argument, you are basically referring to the argument present in 4. So if you were to treat it as a parajumble, you'd notice that 2, 1, 4, 5 definitely go in together. 3 because it does not have any connection with the rest of the sentences. And that is why our answer here should be option 3. Okay. Here comes the next question. Move on. Sanskriti, there are 2 ways here, whichever way works. So for example, you know, when you solve a percentage based question in quant, what can you do? You can take the value to, you can take the base to be 100. You can take the base to be something other than 100, some other number that makes it easier to calculate given that question. Or you can start writing it as 1.1x, 1.2x. Right? So when you say 20% increase, I can take it as पहले 100 था अब 120 हो गया, पहले x था अभी 1.2x हो गया, या पहले 100 था अब 120 की जगह मैं भी बोल सकता हूँ पहले 700 था अभी 840 हो गया. So depending on the question, one of these is going to be better, right? Similarly, when it comes to odd one outs, the idea of a paragraph talking about a topic confined to a particular aspect and one sentence that does not belong to that aspect, that can help. Or finding out these connections can help. So in some paragraphs, the first approach is likely to be faster, in some the second. तो देख लो दोनों में से कुछ तो काम करेगा ही करेगा यार. Right? Here is the next question for you. Question number 11 on your screen. The time starts now.
Sanskriti, you're right. So that is why it depends. See, since we are so close to the exam, I'd say that stick to what has been working for you so far, an approach that you're comfortable with, then we can see. So I think when it comes to this particular paragraph, 1, 2 and 5, I think the connection among these three sentences should be obvious to us, right? So 2 talks about a term. First says the term. Fifth says the term derived from some place, right? So you need to have 215, 251. These three will definitely go together. Right? The term was paralyzing, killed any sense of self-confidence and ambition. So we'll refer to this. So that leaves us with 3 or 4. So which one of these two is a better fit for this paragraph? Look at 4. Many dyslexic and overtly shy students manage to overcome their learning barriers in ESN schools. You notice that in sentence 4, the tone towards ESN schools is positive. But if you look at the tone in the rest of the sentences, if you look at the tone in 215, it's not positive towards ESN schools. It's evident that the author is not very positive towards them. So when I look at sentence 3, it has that negative tone, whereas 4th has a positive tone. So in terms of tone, 3 fits in better with the other 3 sentences. Otherwise, you suddenly put in something that is positive. And that is why we should pick 4th as our answer to this particular question. Okay, so here comes your next question. And your time starts now. So, what's your answer? So I think 4, 5 and 2. I think 4, 5, 2 is easy to spot, right? Young women have generally suffered more from the economic consequences of COVID than young men. And see this, that is partly because women are more likely than men to work in some of the hardest hit industries such as hospitality. And 2 talks about some numbers, certain statistics that support 5th. So that essentially leaves you with 1 and 3. So if 4, 5, 2 are together, now you know that the theme that is emerging is women, young women in particular, have suffered more from COVID, suffered more economically in terms of job loss, etc. than men. So between 1 and 3, you notice 1 is not talking about COVID specific data. It is talking about a fact in general, whereas 3 says women were also more likely to, see this,
have to stay at home and look after children when schools closed. Now tell me, when did schools close? During the COVID? So schools were closed, kids were at home, mothers had to be there for them, and if they had to be there, they could not work. Another COVID related factor, and that is why 1 becomes our odd one out. You see that? Not 3. So 3 still talks about effect of economic consequences of COVID on women. 1 does not. Next. Okay, your time starts now. Okay, good to see more people contributing on the app as well. In sentence 3, third says women have to stay at home to take care of the kids when schools closed. They did not want to. Have to says that they did not have a choice. अबे मैंने कौन सा जोक मिस कर दिया कमेंट्स में? मेरा आज क्वेश्चंस पे फोकस ज्यादा चल रहा है. Okay, so let us see. I think this should be easy for most of us. The answer should be 2. Why 2? Let us see. If I were to arrange, I can see 5, 1, 3, 4. I can actually create 5, 1, 3, 4. So source of our food is coming into the spotlight. Why? There is good reason for that. For what? Source of our food coming into spotlight. Agriculture accounts for 16 to 20% of human caused climate warming emissions. But much of these emissions are not from carbon dioxide, that familiar climate change villain. In fact, only 4% of climate changing emissions in agriculture are from carbon dioxide, whereas suddenly sentence 2 is talking about nitrogen cycle. Where is that coming from? So it had to be 2, right? This I felt was a relatively easy question. How about the next one? I think this was the one that I struggled to fit, but here it is. And your time starts now. Okay. So let us see. Since some of us have picked up 3, that was manifested in the paralysis of sympathy to the violence faced by the common public of, should have been Republic. What happened? Republic of Myanmar since the beginning of this year. So what was manifested? SARC remaining incapable of responding to the unabated rise of identity-based aggression and violence. That was manifested here. Then look at 5th. Along with this, along with shows continuation.
So fifth, a remarkable degree of indifference to others' views has grown. So fifth, if you want to justify along with, you definitely need to put in 3 before that. So you can certainly link 2, 3, 5, and the dream is still relevant. Which dream? This one. So if I were to treat it as a parajumble, I'll say it is 4, 2, 3, 5. First is talking about the founders being disappointed, and where there is no other sentence which actually talks about neighboring countries and plight of people. They're basically talking about identity-based aggression and violence. Okay, but plight of people can still work. So there are times when the questions are created by picking up different sentences from the same paragraph too. You still need to leave one of them out. And by the way, non-aligned movement, and then, okay, there's this very obvious thing here. The other 4 sentences are talking about SARC. First is suddenly talking about non-aligned movement. And you see these capital letters. You know that you're talking about a proper noun. It's an organization. It was started in what, I think 1961 under the leadership of 5 people. One of them was Jawaharlal Nehru. So that is about our odd sentence outs, and let's dive into another passage. Please explain 2, 3. 2, 3, 2. Okay, when it comes to odd one out, in this question, frankly, I just looked at it as a parajumble right now when I was explaining it. I noticed that the other 4 are talking about SARC. One is talking about non-aligned movement, and that essentially took care of it. Right? But 2, 3, that what was manifested? This incapability of responding. So that is why there is no sympathy for the issue in Myanmar. Shall we? Okay. So here is the first paragraph for you. Just let me know once you're done reading it. Ranveer, we are basically using RCs as a relief in this particular session today. Okay, next. Next. So suffrage, you know, there's this word called suffrage. Suffrage basically means right to vote. So if a person is a suffragist, it means that it's a person advocating the right to vote should be extended to more people, especially to women. So when you say universal suffrage, you're talking about everybody has the right to vote. And here is the next one.
Okay, last paragraph. Okay, so if we are done, here is your first question. Main idea. Time starts now. I forgot the timer there. What's happening to me? Okay, so D, C, D. Okay, so let us start. Okay, oh, we still have some time left, sorry. But a lot of you have actually are solving it so fast. So actually when I read the 4 sentences, none of them really appealed to me as a main idea. So I resorted to what? Elimination. So A said, Carrie Bertha Shelton was a senator. Well, she was never a senator. So A is definitely out of question. D says to establish that Carrie Bertha Shelton played a pivotal role. A pivotal role. A pivotal role is a critical role. Without that, nothing can happen. There is absolutely nothing in the passage that tells you that her role was pivotal. That had she not been there, the entire movement must have fallen apart. She played a role, she participated, but we definitely cannot figure out that her role was pivotal. All it says is she participated in a march. They say later on her role was acknowledged. Pivotal is like of critical importance, right? So that basically leaves you with B and C. B says to establish that Carrie Bertha Shelton was the first woman to be a private secretary. And C says first woman to be the governor. So as I say, they're not exactly the main idea, but if I have to choose one, I'd prefer C because the importance of her becoming that first woman governor has been given greater importance in the passage. She's been referred to as a governor multiple times, whereas this was present only in the first paragraph. And that is why C over B, but frankly, if you and I were to sit down and write a main idea, chances are that we are going to do a better job. Okay, here is the next one. Which of the following cannot be inferred from the passage? Jin, I told you, at the end of the day, difficulty level does not matter. Our level vis-a-vis our competition matters. Besides, we've been practicing a lot of RC passages together at BYJU'S platform over the last year. A lot of effort. Okay, so B. C. Rin. What is the answer? What's your answer? Wait, app wale people. मैसेजेस ही नहीं आ रहे यार. तुम्हारे ए को भी गोद ले लिया गया है. कोई डी को भी गोद लेना चाहेगा क्या? Okay. Okay. So let's start with A. Carrie Bertha Shelton remained the governor for a stint of 48 hours. C. Carrie Bertha's boss left
on 27th February. The boss's replacement came on 1st of March. In between, Carrie Bertha remained a governor. So, it is possible that the boss left at 11 p.m. I'm looking at the smallest window possible. And his replacement decided that, okay, I will be sworn in at 12 midnight. Right? In that case, Carrie Bertha must have been a governor for what, 25 hours. Maybe this guy left at 11:59 p.m. In that case, she remained a governor for 24 hours and 1 minute. So, she was a governor for at least 24 hours and 1 minute. Can we be sure that she was a governor for 48 hours? Nope. So, A is can't say. B, Carrie Bertha Shelton was a widow before she married Chamberlain or on July 12, 1926. True. Remember, there is a sentence there is a paragraph that tells us she married Chamberlain. Unfortunately, a couple of years later, she became a widow again. So true. C, Shelton became a governor when she could not legally cast a ballot. True. Women could legally cast a ballot in Oregon in 1909, and in general they could cast a ballot in 1920. She became a governor before, 1912, 1920. So she became a governor prior to that. Shelton was succeeded by Benson on March 1, 1909. True. So she was a governor for a brief while and then Benson came over, so he was a successor. So B, C and D are true. A is can't say. That is why A should be our answer. 17. So this is kind of a pure comprehension based question and your time for it starts now. Piyush, inference questions are reasoning questions, yaar. Ranbir, we are counting on that. You should ideally refer to the passage. That is why when we read it for the first time, we do not read it for detail. Right. So, A can be ruled out because this is not even mentioned in the passage. And if you look at D, it says it was a significant transition. Yaar, see, she accidentally became a governor for a day or two, right? And then she moved back to being a private secretary. So which transition really, not mentioned in the passage. So we can eliminate it. Now between B and C, you notice C has got nothing to do with the idea of this sentence. Says Shelton could take decisions on behalf of Chamberlain. What has that got to do with this? It says it was not the office that had broadened so much, it was its legal significance. So there are times when the task that you perform, the task does not change, it is just that the significance changes. For example, if I draw a straight line, let's say a 4-inch broad line on the floor and I ask you to walk on that line, chances are that you can. But if I erect a 4-inch wall and then I ask you to stand on top of that wall and then walk, the task has not changed, but you notice? So that's what we are really
talking about? अनूप, करेक्ट इनकरेक्ट कौन से वाले भाई थोड़ा बता दे. So that is why B is a better answer choice for us here. Here is your question number 18 on the screen and your time starts now. And we are halfway through. Okay, so Shelton demitted, so Chamberlain demitted his office on 27th February. The new governor Benson joined on 1st of March. We are saying which of the following could not be a probable reason for Shelton's short-term appointment as governor. In between, Shelton became the governor. So let's look at A. Benson was on a sabbatical. Sabbatical is a leave. Chamberlain had to leave urgently. So because he was on a sabbatical, it's possible that he came in later and that is why Shelton became a governor. So this can be a reason. B. Benson was medically unfit to pitch in for Chamberlain. So if he was not well, he obviously could not come over and take that post, take the charge. So this can also be a reason why there was a delay and thus Shelton had to fill in. C. Benson managed a higher number of electoral votes in comparison to Shelton. Okay, what has that got to do with Benson's joining a couple of days later? So this has got nothing to do with that gap of a couple of days. D. Benson had a family obligation because of which he could not assume office after Chamberlain left. So that can once again explain that gap. So A, B and D provide you the reasons. C does not, and that is why C should be your answer. Right? That could not have been a reason behind that gap of 2 days leading to Shelton's short-term appointment as governor. Okay, and with that, now let us move over to a few summary questions. So how do you go on to attempt summary questions? करो करो यार, मेंटेन द फोकस. फोकस बना के रखो, मुझे अच्छा लगेगा और अगर मुझे अच्छा लगेगा तो बहुत फायदा होगा. तुम्हें पता है क्यों भाई? तुम्हें क्या लगता है ऊपर वाला किसकी दुआएं सबसे ज्यादा सुनता है? ऊपर वाला किसकी दुआएं सबसे ज्यादा सुनता है? आई नो कुछ लोग बोलते हैं यार ना, घर वालों की, मम्मी पापा की, पेरेंट्स की दुआएं ऊपर वाला सबसे ज्यादा सुनता है. यार देखो, in order to believe in God, you need to be somebody who has a lot of faith, the ability to trust in something that you don't see, something that is not very obvious. और घर वाले बिल्कुल भरोसा नहीं करते भाई. कभी तुम्हारे साथ हुआ है घर वालों ने तुम्हें मार्केट में सामान लेने भेजा, वापस घर आते ही सबसे पहले क्या पूछते हैं? बाकी के पैसे किधर हैं? कोई भरोसा नहीं है भाई. 100 रुपए किलो प्याज के जमाने में 50 रुपए देके सामान लेने भेजेंगे, फिर भी वापस आने में पूछेंगे बाकी के पैसे किधर हैं. Then some people are saying गुरुजी. तो गुरुजी वो बाबा लोग भी तो हो सकते हैं. तो हाँ, कुछ बाबा लोग बड़े पहुंचे हुए होते हैं, उनकी दुआएं तो बड़ी सुनी जाती हैं. पर आजकल ना पता नहीं चलता यार, सारे बाबा अच्छे नहीं होते. पता नहीं चलता कौन असली बाबा है और कौन ओल्ड मंक वाले बाबा जी हैं, पता नहीं चल पाता है कई बार. तो उधर थोड़ा ना वो डाउट हो जाता है, कभी कभी डाइसी हो जाता है. पर
पता है ऊपर वाला यार ऑनलाइन टीचर्स की दुआएं जरूर सुनता है। पता है क्यों यार? मैं ना अभी इस कमरे में खड़ा हूं, अकेला, कोई नहीं है मेरे सामने, पर मैं ना इमेजिन कर रहा हूं कि मेरे सामने बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं पढ़ा रहा हूं, है ना। इमेजिनेशन ऐसी है कि मैं भाई ताल कटोरा स्टेडियम, वानखेड़े स्टेडियम, वेम्बली में खड़ा हूं और मान के चल रहा हूं इतने सारे लोग हैं, उन सबको ये सेशन पहुंचाया जा रहा है। सोच रहे हो इमेजिनेशन कितनी स्ट्रांग है। हाँ, ऐसे ही लोगों की फेथ स्ट्रांग होती है भाई। मतलब कुछ रोज पहले तो ऊपर वाले का एक मैसेंजर सपने में आगे बता के गया ऑनलाइन टीचर्स के लिए अलग व्यवस्था की गई है ऊपर, क्योंकि उनकी फेथ, उनका बिलीव इन इमेजिनरी थिंग्स इज एब्सोल्युटली साउंड। तो अपनी बात चलती है उधर। तो दुआएं लो, और दुआएं कैसे लोगे? लाइक करो, शेयर करो, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है यार जो बोल रहे हैं वो करो। हाँ, बहुत फायदा होता है। मैंने सुना 2-4 लोगों ने तो फोटो रखनी शुरू कर दी है जेब में उसकी, दिन में 2-3 बार धूप बत्ती करते हैं, पता है मार्क्स बढ़ रहे हैं उससे। तो थोड़ी देर और यार राजा, दिस इज वर्क अ लिटिल मोर विद मी। दुआएं। So, summary questions, and you are absolutely right, yaar. First up, you read the passage, but don't spend a lot of time. Then go to the option, start eliminating. Okay, does it state something which is not there in the paragraph? Does it distort something that is stated in the paragraph? Does it capture everything or not? Oh, Gyaneshwari has sent a fairly longish answer. Understanding the meaning, eliminating, selecting an option. Absolutely, 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 yes. So, let us work on some of these questions together. Here is a paragraph. Why don't you read it first? Okay, so assuming that you've read it, here you go. What's your take? What's your answer? And your time is a slightly longer option, so I'm giving you a 30-second head start. Starting the timer now. And Ravi Gatte, it actually depends on the difficulty level of the exam, and don't worry, the day CAT is over. At 11:30, we'll start giving you वो होता है ना शुरुआती रुझान, the initial impressions. And then for people who are in slot 1, they can join in from 12:30. Then we have slot 2 session at 4:30, slot 3 session at 8:30. Log in for that so that you can know how much is needed for what percentile in the exam that you've written. So 26 को कैट देके YouTube इधर आओ, अपन सब एग्जैक्ट बताएंगे. Okay, so let's dive into these questions now. See, if I look at A,
The inspirational Gay Lomvet was involved with modern social movements and displayed a fine understanding of liberalization of economy with its impact on agriculture. She brought a new viewpoint to post-reforms India, especially through the exploration of the interworking of class and gender. Maybe. Let us look at B. Ooh, this can be eliminated. She was not involved in reforms of India. The paragraph does not mention reforms of India. It mentions post-reform India. So this is definitely an addition, a thought which is not even there. So we can eliminate it. How about C? Her work was inspired by the Bhakti movement. It was an aspect of the ideological system that she aimed to unveil. It was not inspired. So another addition, we can rule it out. D. D, you notice D is not complete. It captures the idea presented only in the last sentence, but not the other sentences. That also leads to a distortion of the main idea, and therefore even this can be eliminated, and that leads to 1 as our answer. Okay, here is the next question for you. Those of you who've joined in now, it is a best summary question that we are talking about. Here are the options. Which one of these is the best summary of the paragraph that you've just read? And your time starts now. Oh, Ritika, that was quick. Really quick. Fabulous, fabulous. Keep the answers coming. Yes. Okay, so the correct answer here is indeed option 1. If you look at 2 and 3, both of them are incomplete. 2 does not have this idea. Various things men worship, but they lead to fights amongst them. And 3 does not capture this. So you need to combine 2 and 3 to make it complete. And if you look at 4th, it is incomplete plus it has this addition to precautious wisdom. That's negative. The passage does not carry that tone. So even this can be ruled out. So that is why first is our best answer. I think most of us have actually managed to get this right. Here is the paragraph for the next question. Not really, Kshitij. There was a discord. People fight over various things that they worship.
except for money. Everybody worships money and there is no fight. They say, okay, this is something that should be worshipped. Devendra, it is not exactly a grammar question, so you can perhaps ignore those things. As long as the ideas are right, it should be fine. Okay, so here are the answer choices. Okay, so I have some answers coming in. Okay, fantastic, fantastic. I think a lot of you have actually managed to get it right. The correct answer choice is indeed option 4. Let us see what is wrong with others. First, driven by the need to find meanings as opposed to the need to find happiness. Not stated anywhere. The human actions can be driven by both or either one of them. The paragraph does not tell you that meaning is the driving factor. 2, not mentioned in the passage. Humanitarianism involves addressing the needs of people who are affected by some adversity. Okay, war, violence, floods, famine, whatever. That's called humanitarianism, not mentioned anywhere. Third, embracing altruism, selflessness, meanings, coming up with meanings is more about self-expression. It's about expressing yourself authentically. The paragraph did not even say authentically, so let's just scratch that. But it nowhere says that you need to help others or prioritize others. So this is addition. 2 and 3 should be easy to rule out, right? And that is why our answer here is option 4. Here comes the next question. Let's have a look. Read the paragraph, then we see. Vasundhara, detrimental means harmful. Okay, I think, hang on, let me at least address this one for Vasundhara. See, let me tell you where it is coming from. Even just caring about issues of personal identity, though it was irrelevant, if not outright detrimental. So, it can be detrimental to happiness, right? That's why option 4 was correct. It can be detrimental, could even be detrimental to happiness. Possibility exists. Okay, so taking you back to the paragraph. Not really, Ritika, not necessary. Let's not generalize and think of it as a formula. Sure, Pragya, I'll try. We are on a tight timeline today, no? So I just want to ensure that we go through as many questions as we possibly can. So all of us have been allotted a certain amount of time, kind of. So what is dualism? The belief that there are two supreme opposite powers or gods.
or that you have a set of divine beings and a set of demonic beings that cause the world to exist. That's dualism. Monotheism is one God. Here are the answers. And because they're long, I'll give you a 30-second head start and I'll move away completely. So I've started the timer now. So let us have a look. First, says dualism in comparison with monotheism is a better philosophy. The author has not taken any such stance. He's used the word attractive. He does not say that it is a better philosophy. Okay? And that is why we'll say that A definitely is, or option 1 is distorted. How about second? Second does not even mention dualism, which is a critical bit. So if you've picked up second, do you see dualism mentioned anywhere? It was basically, the paragraph is comparing dualism with monotheism, and if you skip dualism, that changes the main idea of the paragraph entirely. So whether you read the paragraph or the main idea should not change. Whether you read the paragraph or the summary, the main idea should not change. So this has a distortion of that main idea. How about third versus fourth? So fourth once again has a distortion. Why? Fourth says practice of free will by the God. Paragraph says free will is practiced by humans, not God. Free will is practiced by humans, and that leads to evil in the world. Right? It's not God who's practicing free will, and therefore you can eliminate fourth. So dualism is a direct answer to the problem of evil. Given monotheists may puzzle people with their skills, intellectual gymnastics, they put forward the accepted answer of permission of free will by God as an explanation to the presence of evil, basically. So you have it there. So no distortion here at least. Whereas in the rest of the sentences, not there, dualism missing, distortion easy to rule out. Okay, so with that, now let us dive into our passage. So after every VA set, we're basically diving into puzzle. That intellectual gymnastics comes from there. That can be summarized as puzzle. Okay, so read the passage given and answer the questions that follow. Please make sure that you keep making that overview, right? So not a very long passage. Let's see. Smriti refer to the intellectual gymnastics. They engage in intellectual gymnastics that can be summarized as something which is confusing, something which is puzzling.
Read this much? Okay, here is the second paragraph. The id is that part of the mind in which are situated the instinctual sexual drives, etc., whatever. Just read it. If I start reading, it will actually be slower. Anita, not later than 3:45. That's the target that I'm keeping. Maybe I can free you sooner. Let's see. Okay, here is the third paragraph. Okay, taking you over to the fourth paragraph. This is the second last paragraph. And here comes the last paragraph. Ready? July. Yeah, elimination depends on the question type. If you can tell me the question type that you struggle in, I can probably be more precise. The technique, the approach varies. Ready for the questions? So here is your question number 23 on your screen, and the time starts now. Id and ego, what all is true? Jin, neurosis is a type of mental illness. Okay, so which of the following is or are true? So id and ego are purely symbolic concepts. Remember that line where said Freud took it literally, but in reality we are not really talking about any observable reality through these things. They're just concepts. For example, when we are confused, हम कभी-कभी बोलते हैं ना यार मेरे दिल और दिमाग में बहस जंग चल रही है. वो ऐसे दो अलग-अलग चीजें नहीं है. It's just a conceptual way, a metaphor to look at it.
Okay, so first is true. They're purely symbolic concepts. How about second? The unconscious mind resides in the ego. Nope. According to the passage, the id resides in the unconscious mind. It is not the other way around. It is not the mind which is residing in one of these three stages. These stages exist in mind. Moreover, it is not even talking about id, it is talking about ego, which can be ruled out. It's flipped as well. So second is not true. Third, the id is a set of those desires that need to be fulfilled or will create friction with the ego. No, it creates a friction with the superego. So even third is not true, and that is why our answer should be option A, only first. मंथन, that's actually an oversimplification. मेरा background है यार, ये psychology आगे पढ़ा है मैंने, तो मैं जानबूझ के avoid कर रहा हूँ, नहीं तो ज़्यादा बताने को हो जाएगा मेरे पास. Okay, the next question. So there were two places where comparison was mentioned. Let us see. All right, so the passage does not even provide us the definition of the conscious mind, and something that has not even been given. How can we say that two people were similar on that? In their account of the human mind, yes, both of them thought of it as tripartite. Both of them talked about the psychological impact in the second last paragraph. Yeah, Amol, why not? See, so maybe B. C, in their literal belief of the tripartite model. See, Freud treated tripartite model as literal, as in your brain or your mind actually has three compartments in reality. You know, you open the skull, you see them. But that is not, but whether Plato believed in it literally or not has not been stated, and therefore C can also be eliminated. D, in their understanding of adult psychology has not even been mentioned in the passage. So even that is ruled out. That leaves us with option B. That takes us to the last question based on this passage. Here it is on your screen. अबे क्या वायलेंस हो रही है भाई मनीष, मार डालो उसको, क्या कर रहे हो, ये क्या प्लानिंग चल रही है ये? आंसर्स. Okay, Gourav has set the ball rolling. All right, so inferred. Can we say that Freud gave maximum emphasis to the ego? Nothing in the passage to support it. So not true. B, the mind tries its best to prevent internal conflicts from becoming too severe by initiating various processes unconsciously. True. This is in fact supported by
the information that was supplied to us in the last paragraph that talked about all those defense mechanisms. Okay, C, the three structural elements of the mind work independently of each other. False. Dude, they are interconnected. Id, instinct, superego keeps a check on that. Ego tries to establish a balance between the two. So are they independent? No, they are interacting with each other and they try to kind of control. So C is false. So you can definitely rule it out. How about D? Freud's structuring of the mind was somewhat influenced by the works of the psychoanalysts of old. His theory was similar to Plato's theory, but nowhere does the passage say that it was influenced by the psychoanalysts that came before him. So option D is can't say. For that matter, even A was can't say. So inferred, the one which is true should be marked as our answer. If there is no option which is true, then we start comparing among or between the ones which are can't say. But before that, we don't even need to do it. Okay, and now I'll give you 3 mini RCs. Small paragraphs, small passages with an RC kind of question afterwards. हाँ, वो था ना खाना खाने जाते हैं तो एंड में सौंफ मिलते हैं ना, है तो खाने की चीज पर मुंह में थोड़ा थोड़ा टेस्ट डिफरेंट हो जाए. हाँ, so let us see. Dinky, will they affect accuracy? I mean, technically yes, but considering that there are no negative marks, those are questions that you should attempt, right? Since there is no penalty except for some time that you spend, the ones that where you are confident, you should go and attempt it. So, okay, so why don't you read this passage? Here is the question that I'm going to ask on the next slide, and you'd have options along with the question stem. Okay, so I hope you've read it, and here are the options. Which of the following is the most crucial and logical inference of question number 26? The time is almost over. Okay, so the earth can meet only the basic needs of humans for food, clothing and shelter. Now, you notice what the paragraph says. The paragraph said that if we have a frugal mindset, the earth can be sufficient. So, can I say that frugal lifestyle is equal to satisfying only the basic needs of food, shelter, whatever, no? Food, clothing and shelter? Not necessary, right? And in fact, I told you yesterday that the moment I see words like only, always, never, I become very suspicious because they usually can't say. So even a frugal lifestyle can go a little beyond the basic needs. You can't be extravagant, but you can definitely go a little beyond frugal, is likely. Okay, B, the only way to meet environmental challenge is to limit human population. Well, this will definitely
help, but is it the only way? Is it the only way? That's something that we cannot be sure of. I mean, if we switch over to frugal lifestyle, even that is going to help. So, this is definitely false since we know another method. See, reducing our consumerism is very much in our own interest. Yes, because if we do that, we are able to avoid the environmental damage. We are able to save the planet on which we live. So that's true. D, knowledge of biological systems can only help us save this planet. So this is a distortion. It is not about the knowledge of biological systems. We already have that knowledge. The challenge is that we need to start treating the earth as a biological system. That's the shift that is suggested, and not this, and therefore even D gets ruled out. So the best answer choice for us will be option C. Lija, actually this is something that I wanted you to focus on. Okay, here comes the next question. The question stem is down below. Read it and then I'll take you to the options. Okay, so here are the answer choices. So it's sort of a main idea question for you. Terrific, terrific. Okay, so Elena and Pragya have set the ball rolling. Lijo is also pitching in. A lot of you are actually pitching in with this, yeah. And surprisingly, barring one answer, everybody has actually managed to get it right. So it is indeed B. Okay, the results of training show that more people acquire leadership than are expected. Nowhere given in the paragraph. Despite rigorous instruction, very few leaders are produced. Nowhere given. You can rule out A because of this only. War does produce leaders, but is that the only way? No, it was given as an illustrative example that helps us prove that a person can go on and become a leader. It's not necessary for you to be born with those qualities. And here comes the paragraph, the mini RC passage for the last one. And here are your options. And you already know that implication is another way of asking you for inference. Joydeep, yes. Right. Okay.
So a lot of B's, a lot of C's. Let's check. So it's basically B versus C, huh? A2. Okay, so let's start with A. India can have territorial claims in the Arctic territory and free access to its resources. Well, if you assume that India has an Arctic coastline, then yes, otherwise no. So you can't be sure of it. And if you use a bit of GK, you know that that's not the case. B, melting of summer ice in the Arctic leads to changes in the geopolitics. Yes, there are these countries that are fighting over the resources. C, the Arctic region will solve the resource crunch. We don't know. So we know that it is rich in those resources, but is it so rich that the crunch will be entirely eliminated? You cannot be 100% certain of it, and therefore can't say. D, the Arctic region has more resources than Antarctica. There was no such information provided in the paragraph, so we'd say this cannot be determined. So the correct answer here should be option B. And with that, I have taken you through my set, and here is a thought that I wanted to leave you with. So don't forget that when it comes to your exam, no matter how it seems, it is possible. So a lot of wishes for you. I hope that you do amazingly well on the day of the CAT, and the moment you step out, we will start off with our initial impressions at 11:30 in the morning. We'll have the slot 1 analysis at 12:30, slot 2 analysis at 4:30, and slot 3 analysis at 8:30. So make sure that the moment you're done with the CAT, come here and you'd get to know about a good score, a healthy number of attempts, the kind of percentiles that you can attempt, and subsequently thereafter maybe the kind of colleges that you can apply to, that the ones whose forms are still left. So that's it from me. You have a mini break now, right? So you can go grab your coffee, your shakes, just a packet of chips, whatever, sandwich, and we will meet you at 4, and at that point we will start with our DILR segment of the marathon. So that's it from me today. Hope you have a great day ahead. Take care. Hi guys, all of you all have CAT is just around the corner, and we at BYJU'S Exam Prep know how important this is for you. And we are with you at every step of the way, even on the D-Day. Catch us live on 27th of November. CAT is just around the corner, and we at BYJU'S Exam Prep know how important this is for you. And we are with you at every step of the way, even on the D-Day. Catch us live on 27th of November, where we will provide you with detailed CAT analysis, expected cutoffs, paper pattern, and much more. Not only this, BYJU'S Exam Prep presents the CAT 2022 Score Calculator as well, a tool designed to gauge your CAT performance and estimate your score. So what are you waiting for? Join us on November 27, 2022 for all the CAT Day activities, and do not forget to subscribe to BYJU'S Exam Prep YouTube channel and press the bell icon to get notifications. We wish you all the best from entire BYJU'S Exam Prep team. CAT is just around the corner, and we at BYJU'S Exam Prep know how important this is for you. And we are with you at every step of the way, even on the D-Day. Catch us live on 27th of November, where we will provide you with detailed CAT analysis, expected cutoffs, paper pattern, and much more. Not only this, BYJU'S Exam Prep presents the CAT 2022 Score Calculator as well, a tool designed to gauge your CAT performance and estimate your score. So what are you waiting for? Join us on November 27, 2022 for all the CAT Day activities, and do not forget to subscribe to BYJU'S Exam Prep YouTube channel and press the bell icon to get notifications. We wish you all the best from entire BYJU'S Exam Prep team. CAT is just around the corner, and we at BYJU'S Exam Prep know how important this is for you. And we are with you at every step of the way, even on the D-Day. Catch us live on 27th of November, where we will provide you with detailed CAT analysis, expected cutoffs, paper pattern, and much more. Not only this, BYJU'S Exam Prep presents the CAT 2022 Score Calculator as well, a tool designed to gauge your CAT performance and estimate your score. So what are you waiting for?
Join us on November 27, 2022 for all the CAT Day activities, and do not forget to subscribe to BYJU'S Exam Prep YouTube channel and press the bell icon to get notifications. We wish you all the best from entire BYJU'S Exam Prep team. CAT is just around the corner, and we at BYJU'S
ICAT is just around the corner, and we at BYJU'S Exam Prep know how important this is for you. And we are with you at every step of the way, even on the D-Day. Catch us live on 27th of November, where we will provide you with detailed CAT analysis, expected cutoffs, paper pattern, and much more. Not only this, BYJU'S Exam Prep presents the CAT 2022 Score Calculator as well, a tool designed to gauge your CAT performance and estimate your score. So what are you waiting for? Join us on November 27, 2022 for all the CAT Day activities, and do not forget to subscribe to BYJU'S Exam Prep YouTube channel and press the bell icon to get notifications. We wish you all the best from entire BYJU'S Exam Prep team. ICAT is just around the corner, and we at BYJU'S Exam Prep know how important this is for you. And we are with you at every step of the way, even on the D-Day. Catch us live on 27th of November, where we will provide you with detailed CAT analysis, expected cutoffs, paper pattern, and much more. Not only this, BYJU'S Exam Prep presents the CAT 2022 Score Calculator as well, a tool designed to gauge your CAT performance and estimate your score. So what are you waiting for? Join us on November 27, 2022 for all the CAT Day activities, and do not forget to subscribe to BYJU'S Exam Prep YouTube channel and press the bell icon to get notifications. We wish you all the best from entire BYJU'S Exam Prep team. ICAT is just around the corner, and we at BYJU'S Exam Prep know how important this is for you. And we are with you at every step of the way, even on the D-Day. Catch us live on 27th of November, where we will provide you with detailed CAT analysis, expected cutoffs, paper pattern, and much more. Not only this, BYJU'S Exam Prep presents the CAT 2022 Score Calculator as well, a tool designed to gauge your CAT performance and estimate your score. So what are you waiting for? Join us on November 27, 2022 for all the CAT Day activities, and do not forget to subscribe to BYJU'S Exam Prep YouTube channel and press the bell icon to get notifications. We wish you all the best from entire BYJU'S Exam Prep team. ICAT is just around the corner, and we at BYJU'S Exam Prep know how important this is for you. And we are with you at every step of the way, even on the D-Day. Catch us live on 27th of November, where we will provide you with detailed CAT analysis, expected cutoffs, paper pattern, and much more. Not only this, BYJU'S Exam Prep presents the CAT 2022 Score Calculator as well, a tool designed to gauge your CAT performance and estimate your score. So what are you waiting for? Join us on November 27, 2022 for all the CAT Day activities, and do not forget to subscribe to BYJU'S Exam Prep YouTube channel and press the bell icon to get notifications. We wish you all the best from entire BYJU'S Exam Prep team. ICAT is just around the corner, and we at BYJU'S Exam Prep know how important this is for you. And we are with you at every step of the way, even on the D-Day. Catch us live on 27th of November, where we will provide you with detailed CAT analysis, expected cutoffs, paper pattern, and much more. Not only this, BYJU'S Exam Prep presents the CAT 2022 Score Calculator as well, a tool designed to gauge your CAT performance and estimate your score. So what are you waiting for? Join us on November 27, 2022 for all the CAT Day activities, and do not forget to subscribe to BYJU'S Exam Prep YouTube channel and press the bell icon to get notifications. We wish you all the best from entire BYJU'S Exam Prep.
नीचे भी देख के कर सकते हो, ऊपर देख के कर रहे हो। सामने हाँ नहीं तो कर दिया ना, बड़ा दिख रहा था। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। एक बार उस पे जाओ यूट्यूब पे। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक। आई एम श्योर ऑल ऑफ यू हैव हैड योर लंच और वॉट एवर यू वांटेड बेसिकली। कुछ लोग लंच लेते हैं, कुछ लोग ब्रंच लेते हैं, कुछ लोग कुछ और भी लेते हैं। आ गए लग रहा है सब आ गए ना। यश इज देयर, आदित्य इज देयर, आ गए हैं ना, आदित्य सिंह आ गए। वेलकम बैक गाइस। सो वी शैल स्टार्ट वेरी सून। फटाफट आ जाइए एक बार, ठीक है। सो आई एम हियर, गौरव सर इज हियर, ठीक है। दोबारा चुप रहे देखो। Hello. और कटप्पा इज ऑल्सो हियर। So again, all of us are here for all of you. We are back after a wonderful session by Vikrant sir, right? So किसी ने लिखा भी था कि विक्रांत सर अकेले कंपटीशन दे रहे हैं हम तीनों को। सही बात है, एटलीस्ट वी आर डूइंग इट टुगेदर। कम से कम वो अकेले कर रहे हैं, इतना लंबा सेशन लेना, इट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज। सर आपने क्या खाया? बता दें? नहीं बिल्कुल नहीं। फिश। They have eaten my fishes. 30 ml लेते हैं। 30 ml का भी टाइम नहीं हुआ आज। तो मतलब जब सेकंड डे खत्म हो जाएगा मैराथन का तो बिल्कुल 30 might become 300 as well. yes. Good evening. So last 3 hours of marathon, all of you ready? Just Yes, show we some should be. energy now in Come the chat box. I mean, at least your energy should match our energy. हाँ, लाइक्स लग जल्दी लाइक्स लग जाने चाहिए सारे। So we have 400 plus likes, and now we are going to have our LRDI session. We are discussing some good sets from LRDI, but before that, we want to see that energy from you too, in terms of likes, in terms of messages in the chat box, because this is the last, session of this 2-day marathon. इसके बाद तो खत्म होने वाला है, तो थोड़ी देर के लिए और साथ है, तो मजा करते हैं इसमें बढ़िया से। चलिए सर, We have the team ready with us. करते हैं। Okay. Yes, everyone says yes. Great. 177 That's viewers, very good. 180, so number of viewers are increasing. It must go, much higher, at least डबल होना to that limit which with which we started yesterday. है ना? Yes. तो मुझे लग रहा है लोग भी थक गए धीरे धीरे करके, बहुत ज़्यादा लंबा हो जा रहा है, शायद ऐसा है। बट आई एम श्योर, मतलब you remember those trainings that we used to have in these, actually we all have gone through trainings in our life where we used to study 17 to 18 hours in a day, and after that we went back home or to our room in the hotel with a homework, right? You remember that? इतनी लंबी लंबी ट्रेनिंग हमने की और वो 5-5, 6-6 दिन लगातार चलती थी। And we hardly get to sleep in these मिलता ही 5-6 था days. but we never complained about it. But the reason was that we learned so much that probably our career is dependent upon that now, and that's exactly the same that is going to happen with you too in these 2 days. Whatever you are going to learn, आपका तो बहुत ऐसा schedule भी नहीं है। 8 hours का schedule है, 8 hours कल हुआ, 8 hours आज हुआ, लेकिन I'm sure ये दोनों मिलकर आपको इतना फायदा करने वाले हैं that at least you will be your career might shift. जैसे हम बोलते हैं ना फ्रॉम क्या बोलते हैं, कहाँ से, सिंगापुर कुछ बोलते हैं ना, ऐसा एक वर्ड है, आई एम फॉरगेटिंग देम नेम ना, झुमरी तलैया से, और मतलब स्विट्जरलैंड जा सकता है करियर। जस्ट डिपेंड्स अपॉन योर परसेंटाइल। इट माइट गो फ्रॉम 80 परसेंटाइल टू 97%। 80 परसेंटाइल पे आप ऐसे कॉलेज में जा रहे हैं जहां से आपको प्लेसमेंट के लिए भी टेंशन हो रही है ना, और 97 98 यू माइट लैंड इनटू एन IIM। पूरी जिंदगी IIM के बन के रहोगे, एक टैग साथ रहेगा, मतलब ऑफ कोर्स द लाइफ इज गोइंग टू बी मच मच बेटर देन दैट, राइट? बहुत सारी फिशेस खाओगे फिर उसके बाद। So a person has written, अभी थकेंगे तो जिंदगी में थक जाएंगे। Absolutely, Very good, absolutely. very good. बिल्कुल, ये 2 दिन की बस मेहनत है, उसके बाद पूरी लाइफ ऐसी करनी है आप लोगों को। चलिए जी, so without any further delay we'll start now. We are starting with our LRDI session. I'll be starting with the set here. I'll of course first of all show you the set. आप लोग पढ़ेंगे, आप लोग ट्राई करेंगे। आफ्टर, हाँ, चांदनी चौक टू चाइना, मैं भूल गया, किसी ने और कहा है सिंगापुर टू सिंगापुर, ये भी सही बात है। शनि सिंगापुर है ना एक जगह, शनि सिंगापुर टू सिंगापुर। हाँ, दैट्स गुड, आगे याद रखेंगे, काम आएगा आगे। ओके जी, चलिए स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट सेट इज हियर इन फ्रंट ऑफ यू ऑल। तो पढ़ना शुरू कीजिए, ट्राई कीजिए। आफ्टर दैट वी विल डू इट टुगेदर। समहाउ आई फॉरगॉट दैट ये पोर्शन मुझे नहीं डालना था। अरे इधर बोला हो गया ना, मैं खड़ा नहीं हो सकता सामने, वो दिखेगा नहीं बच्चों को। क्लियर दिख रहा दिख तो क्लियर रहा होगा, है? कोई बात नहीं, हम साइड में हो जाते हैं थोड़ा सा, चेक करता हूँ। दिख तो जाएगा ही। नहीं, वो इशू हुआ कि जब मैं सामने खड़ा होता हूँ तो फिर पीछे का नहीं दिखता ना, तो मुझे बिल्कुल ही बाहर खड़ा होना पड़ेगा। क्लैरिटी है, दिख तो रहा है ना।
इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड मैच टाई हो गया, ये देखा मैच? अरे टाई क्या हो गया, बीच में बारिश आ गई और डकवर्थ लुईस से टाई हो गया। टाई तो सुपर ओवर नहीं हुआ? नहीं हुआ, नहीं उसमें नहीं होता। वरुण क्या कह रहे हैं सर, इन नेक्स्ट 4 days गिविंग मॉक्स एंड प्रीवियस ईयर सेट्स विल इट बी सफिशिएंट? आई थिंक वरुण इन दीज 4 days you can revise the concepts a bit. For LRDI of course you can go through some previous year papers as well, that is definitely going to help you in my opinion. So once you are done just let me know guys, जैसे ही आपका हो जाता है question, we'll move on to the questions. I'll show you the questions, we'll see how many of you are able to answer that correctly. I want some answers from the app as well. Nikita, Anuja, Sanidhya, Sakshi or whoever is there. मोदी जी ने अमित शाह को भेज दिया। अमित शाह आपको लगता है मोदी जी के कहने से जाते हैं? ओके, वीडियो पॉज नहीं हुआ है वरुण, एक्चुअली देयर इज नो स्पेस फॉर मी टू स्टैंड अप, otherwise I would be in front of the data, therefore I am just starting besides it. सर आप हैंडसम बहुत ज़्यादा लग रहे हो। हाँ, जब मैं नहीं दिखता हूँ मैं तभी हैंडसम लगता हूँ, क्योंकि द मोमेंट आई वुड बी इन फ्रंट ऑफ द कैमरा आई वुड नॉट बी हैंडसम। DLS का फॉर्मूला भी बताइएगा सर। DLS इज डकवर्थ लुईस सिस्टम. So Duckworth-Lewis system is basically when the match is not able to be completed because of some reasons, then they try to normalize their scores and try to find out that who had a better condition. तो गौरव सर कह रहे हैं please focus on the set, so pay attention to the set, try to do it. So yesterday also we did some sets, but somehow we did not do any set on circular arrangements. So I found this new set, a very I mean different kind of set. जैसे इस तरह का डेटा भी शायद आपने कम ही देखा होगा मेरे ख्याल से, isn't it? मतलब नॉर्मली ऐसा होता है दिस पर्सन इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ दिस पर्सन इज सिटिंग टू द राइट ऑफ दिस पर्सन, ऐसा कम होता है कि ये क्लॉकवाइज चलेंगे तो ये आएगा, एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो ये आएंगे, एंड समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. So Ankit Lalwani has already done it. That's great. I would like to see some more people saying that done. Then we'll move on to the questions. I'll show you the questions and then we'll be discussing them together. Anuja says yes. Varun Ranganathan says yes. Mohit Sharma says yes. Okay. KS says done, Pragya says done, Ankit Chaudhary, Varun Ranganathan says done, Sakshi says done, Joydeep says done, Priyanshi, Siddhant, Gibson, Anuja, Education World, Dipankar, All Star Tournaments, Ritika, Anmol Malik, all are saying done. That's great guys. It's a very good speed at which you are doing it, honestly. And this is perfectly a cat standard set, I would say. मतलब बिल्कुल वैसा सेट है जैसा कैट में आ सकता है, absolutely of that type. Okay, so many people are saying done. I'm sure that all of you have done it now. So Akhil says can't do, which is little surprising. He's an intelligent kid. Subhendu is also looking for one more minute. Not a problem, Subhendu. 1 minute और दे देते हैं. Try your best. Akhil, try again. I'm sure you can do it within a minute. Yash has done. Ritika, Vishal, काफी लोगों ने कर डाला है. बहुत बढ़िया. Very, very good. Chirayu Sharma, the Uniques. जयदेव से C7 और C9A. चलिए देखते हैं क्या बनेगी कहानी उसकी. जयदेव
Can you do some questions related to arithmetic and algebra? Oh, Ankit, we have done that. I mean, probably you are a little late in joining us, but कल के session में और आज के session में we've done a lot of questions from arithmetic and algebra actually. I'm confused with J. Okay. Pooja says done. Kaushal, Chirag, Rishabh, Nancy, Jadev also has not done it. I think we can start doing it now. I'll come back to the screen and we'll start doing it now. I'm sure जितने लोगों ने आप लोगों ने ट्राई किया है मतलब definitely must have got some idea about it. पढ़ लिया होगा आप लोगों ने for sure. Now I'll be talking about कि बनाना कैसे है. How will we be doing it? That's what we are going to discuss now. But before that, जिन लोगों का हो गया है just एक बार check करो what are your answers. After that you can check it कि आपके answers ठीक मिले कि नहीं मिले. Nikita, you too now. Nikita has also done it. So who is sitting opposite to D? What is your answer to this question? Yes. So give me an answer to the first question. Who is sitting opposite to D? What exactly is the answer to this question according to you? Who is sitting opposite to D? I would like to see some answers. Then I'll move on to question number 2. Who is sitting opposite to D? So Siddhant Jain is saying C. Okay. And then Siddhi Bajaj is saying K. Yash Taylor says A. The Unique says J. Ankit says K. So please write the option if you can. Ankit says K. Anuja says K. Srishti Rao says K. Pooja says A. Then A, C, C, K, A. Then C, A. So we have got answers as A as well as J as well as K. तीनों तरह के answers अभी तक हमारे सामने आ रहे हैं. We will see that which one of them is correct. Okay. Similarly, look at the answer for the second question as well. Who is sitting on C5? Who is sitting on C5? So C5 is where? Here we have C5. Who is sitting on this chair? So that is the second question to be answered. Who is sitting on C5? And for how many students can their chair numbers definitely be determined? वो भी जरा एक बार यहाँ से आंसर निकाल के देख लीजिए. Keep your answers with you. Of course, you only can determine by yourself कि वो सही है, गलत है, आपके कितने आंसर्स मैच हुए, कितने नहीं मैच हुए. Right? Just check those answers with you. Right? Probably I would not be able to check it from the screen. लेकिन आप जरा एक बार ये देख लीजिए कि ये तीनों आंसर्स में से कौन से आपके क्या आंसर्स हैं. लेटर ऑन विल सी उनमें से कितने मैच करते हैं आंसर्स और कितने नहीं मैच करते हैं. सो दीज आर द 3 क्वेश्चंस. आई एम श्योर ऑल ऑफ यू हैव रिटन द आंसर्स विद यू. नाउ वी विल स्टार्ट डूइंग इट. ओके. सो 2 मैंने सेट्स बना लिए. एक्चुअली व्हेन आई ट्राइड डूइंग इट तो मुझे पता लगा कि यार ये तो एक्चुअली जो है ना थोड़ा सा मेहनत ज्यादा मतलब उसमें 2 सेट बन रहे थे. इसलिए मैंने पहले से दोनों के दोनों सर्कल्स बना के रख लिए हैं. ठीक है. ऑफ कोर्स इफ आई एम डूइंग इट इन द एग्जाम टाइम आई विल गेट टू नो अबाउट दैट आफ्टर सम टाइम. तब मैं 2 सेट बना रहा होता. यहाँ पे आई डोंट हैव एन ऑप्शन ऑफ डूइंग दैट लेटर ऑन. सो इसलिए मैंने पहले ही बना के रख लिए. दीज आर द 2 थिंग्स. So initially I just read the statements and that's exactly what you also should be doing. पहले पढ़िए statements किस form में given है and then decide कि उसको मुझे कैसे put करना है. Let's have a look at the statements first. We have these 10 people. If a teacher moves in the if a teacher moves in the anti-clockwise direction starting from C, he will pass E, G, J and A in that order. D is sitting adjacent to E and F, and the teacher moves in clockwise direction starting from C again. He will pass through these people and then there is some more information. So basically he has told us कि अगर टीचर C से एंटी क्लॉकवाइज चलता है तो कौन कौन मिलता है और C से क्लॉकवाइज चलता है तो कौन कौन मिलता है. राइट. लेट्स स्टार्ट राइटिंग इट समवेयर. मैं यहां लिखना शुरू कर देता हूं. पहले क्या बोला उसने? द टीचर मूव्स इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्रॉम C. सो लेट्स से C इज हियर. यू स्टार्ट मूविंग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. He will pass E, G, J and A in that order. So C के बाद you will have E, then G, then J and then A. But keep one thing in mind, it does not mean the next person after C is E and the next person after E is G. He is just saying that if you start moving anti-clockwise from C, right, when you are moving anti-clockwise from C, actually the teacher is meeting some people there and those people are EGJ. He might have met some other people as well, but that's not mentioned in the set. He has just told us कि he met these people in this order. That means अगर मैं C से anti-clockwise चलता हूं, if I start moving anti-clockwise from C, so I will have E somewhere. E के बाद there would be G. After E there would be G. G के बाद there would be J
and after J there would be A, right? There might be some people in between them as well, but that's not my point of concern. मुझे इसके बारे में नहीं जानना है, ठीक है, उसको भूल जाता हूं मैं. आगे चलते हैं. D is sitting adjacent to both E and F. E is here. D is sitting adjacent to both E and F. If a person is sitting adjacent to two people, can I say he's sitting between those two people? Isn't it? D is sitting adjacent to E and F. एक आदमी दो लोगों के adjacent है, एक ही तो तरीका है, एक आदमी इस तरफ, एक आदमी इस तरफ. So either D is here and F is here. So either this is the order, or D is here and F is here, this is the order. तो या तो EDF उधर की तरफ चलेगा या EDF इधर की तरफ चलेगा. I do not know what is going to happen out of these two cases, but any one of them can happen. E के उधर F हुआ तो उस तरफ D आएगा, और E के इधर F हुआ तो इस तरफ D आएगा. So two possibilities are still there. I'll move ahead from that. थोड़ा और आगे चलते हैं. Next. If the teacher moves in the clockwise direction starting from C, वो कह रहा अगर C से टीचर clockwise चले, he will pass J, B, D and H in that order. So C से आप clockwise चलो तो पहले J आता है, J के बाद कभी B आएगा, और B के बाद कहीं D आएगा. अब D तो EDF के साथ ही है, और उसके बाद H आएगा. So कहने से H is definitely going to be after that. I mean now I can surely say it would be like C. C से पहले आएगा H, उसके पहले आएगा E, D and F. I have already told you ये order उल्टा भी हो सकता है. It can be F, D, E. That's also possible. It can be E, D, F. That also is possible. लेकिन H इधर नहीं आ सकता because H comes after D when you move clockwise. Clockwise चल रहे हैं तो D के बाद H आ रहा है. इसका मतलब D तो इस एक जो हमारा पास पेयर बना हुआ उसमें D है. After that H is going to be there. So EDF आएगा. और B जो था वो J के तो बाद आया और D से पहले. So that means after this person I will have G and then J. So B would lie either here or here. यहां कहीं दोनों जगह में से लाई करेगा. And after that I have K over there. उसके बाद वहां K बन गया. ठीक है. I'm sure this is understood to all. B should come after J according to this and before D. So therefore it might come between G and J. It might come between G and this pair. इनके बीच में भी आ सकता है, इनके बीच में भी आ सकता है. But one thing is for sure that H is going to be there after EDF. That's perfectly suitable. Next. A is sitting adjacent to both J and K. A is sitting adjacent to both J and K. That again means if a person is sitting adjacent to J and K, that means he's sitting between J and K. And we already know J is towards this side. So K must be towards that side. I see how many people are there. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So the arrangement of all 10 people is there with us. Only we have to know about EDF or B. That is not known to us. Let's see. K is sitting on chair C3 and then information is over. Right? K is sitting at C3 and the information is over. So the moment I start putting K, I will have everything now. So let's start putting it from here. So I'm sure this color is visible. If it is not visible, let me take some other color. शायद जो आपको यहां से ज्यादा दिखाई दे सके. So this is K. Yes, I think it is more visible. So from that arrangement now I can say कि K कहां पर है, ये रहा. K के बाद clockwise there is A. A के बाद clockwise there is G, J. J के बाद either B and then G would be there. Or first G and then B would be there. So can I say one of B and G would be here and one of B and G would be here? Right, everyone? I'm sure all of you getting it. Just keep saying yes so that I also know that you are able to understand. So K के बाद A is there, A के बाद J is there, J के बाद B might come before G or B might come after G. So therefore I'm saying either it is B and then G or it is G and then B. So both the possibilities are there. Okay. Next, I have EDF. Now, EDF, whatever order is there, can I say D is definitely between them? E would be here, F would be there, or F would be here and E would be there. That's once again a possibility. H has to be here and C has to be here. This is the final combination that we are having. Right? I actually made these two cases ताकि मैं B और G के दो केस बना के लिख सकूं या E और F के दो केस बना के लिख दूं. But now it is possible to show in one single case which you can see here. I'm sure this is understood to all now.
किसी ने लिखा है कि कैट में ज्यादा सर्कुलर रेसेस पे सर्कुलर पे क्वेश्चंस नहीं आते हैं. लेट मी टेल यू, कैट ऐसा कुछ भी नहीं कहता कि इस टॉपिक पे क्वेश्चंस वो नहीं पूछेंगे. यस, दे हैव नॉट आस्क्ड क्वेश्चंस ऑन सर्कुलर अरेंजमेंट्स फॉर द लास्ट 4-5 years, बट यू नेवर नो व्हाट्स गोइंग टू हैपन. सडनली दे माइट आस्क 2 sets ऑन दैट. मतलब ये आप मना नहीं कर सकते. कुछ एरियाज ऐसे जिन पे पक्का पता है कैट अभी नहीं पूछेगा, जैसे सिलोजिज्म है, डायरेक्शंस, ब्लड रिलेशंस वगैरह, इन पे नहीं पूछते, लेकिन यहां तो पूछ सकते हैं. देयर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी फॉर इट. आई एम श्योर ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड दिस अरेंजमेंट. देयर इज नो डाउट टू एनीवन. सबको समझ आ गया है. इट वाज अ न्यू काइंड ऑफ सेट. इंफॉर्मेशन वॉज गिवन इन अ न्यू वे. देयरफॉर आई वांटेड टू डिस्कस विद ऑल ऑफ यू. मुझे लग रहा है कि आप लोगों को शायद ये देख के अच्छा लगा होगा कि चलो ठीक है, नई चीज कर रहे हैं, समझ भी आ रही है. सो इट्स लुकिंग गुड नाउ, राइट? कि अगर क्लॉकवाइज चल रहा है, एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, हाउ डू वी डील विद दोस क्वेश्चंस? देयर मस्ट बी सम आइडिया. मैंने स्टार्ट यहां से नहीं किया, मैंने पहले रैंडम अरेंजमेंट बना, उसको इसमें फिट किया, राइट? सो इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन ऑल टुगेदर, एंड देयर इज नो स्टैंडर्ड रूल फॉर दीज. बस इतना होता है, जिस तरह का सेट होता है उसके हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि शायद इस तरीके से डेटा लिखना ज्यादा आसान होगा, राइट? सो वंस वी हैव दीज 2 डेटा सेट्स, तो मैंने ये क्या लिखा है, बीजी के तो 2 केस बना लिए हैं, बट एक में ई यहां, एफ यहां लिख दिया, और एक में एफ यहां और ई यहां लिख दिया. सो व्हाट आर द आंसर्स टू द क्वेश्चंस? लेट्स हैव अ लुक एट ऑल ऑफ देम. हु इज सिटिंग ऑपोजिट टू डी? डी के ऑपोजिट कौन है? यहां है डी के ऑपोजिट ए, यहां है डी के ऑपोजिट ए. सो आवर आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन ए, दैट इज इक्वल टू ए, राइट? Answer is option A according to the first question. Second, who is sitting on C5? C5 कहां पर है? ये रहा. C5 पे कौन है? Either B or G. So my answer is option D. Either B or G is at C5. Okay. And last, for how many students can their chair number definitely be determined? So I can definitely determine it for what all people? I can determine it for D, H, C, K, A, J, and that's all. 1, 2, 3, 4, 5, 6. For 6 people, it can definitely be determined. The answer is option C, that is equal to 6. Got it, guys? समझ आया सबको? अच्छा लगा सेट? जरूर बताइए मुझे, ठीक है? These are absolutely new sets. I am pretty sure आपने शायद इस तरह का सेट पहले नहीं देखा होगा. I'm sure you would love these kind of sets, ठीक है? मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है जब भी कोई नया सेट आता है ना, जिसमें आप लोग थोड़ा बहुत रीजनिंग यूज करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है. काफी मतलब मजा भी आता है उसको करने में, और फाइनली सॉल्व हो जाए तो फिर बात ही अलग है. फिर तो वी हैव अ डिफरेंट काइंड ऑफ फीलिंग ऑल टुगेदर. Right, everyone, that was the first set. I'm sure understood to all of you. Please explain the third question, Devanshi. For how many people we can definitely determine their chair number? The point is, for E and F we cannot determine because they can interchange their positions. For B and G we cannot determine, they can interchange their positions. So out of 10 people, 4 का नहीं पता लग रहा है. So my answer is 6. That's it. Okay. Pooja is saying 2 questions right. That's very good. Very good. It should have been 4. No, Joydeep, you will see कि 6 people हैं. एक बार अगर आप ध्यान से देखोगे, you will get an idea. D is fixed, Joydeep. E और F इधर उधर आ सकते हैं, but D is definitely fixed. अपनी जगह पे fixed है बिल्कुल. Thank you, Nikita. That's great. चलिए जी. So that was the first set that we had. Okay. No, it's not banking type set. किसी ने लिखा, नंदन ने लिखा है. Actually, banking type जो sets होते हैं ना, they are generally on the lengthier side. बहुत कंफ्यूजिंग, बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती हैं, तो बैंकिंग में सेट्स उसी तरह के आते हैं जो थोड़ा लेंदी साइड पे होते हैं. कैट में जनरली लॉजिकल साइड पे होते हैं. अगर आप ध्यान से देखो, दिस वाज नॉट अ डिफिकल्ट सेट, दिस वाज मोर ऑफ अ लॉजिकल सेट. तो इसीलिए इसको आप शायद कैट की कैटेगरी में रखोगे, बैंकिंग के में नहीं. ओके जी, सो लेट्स मूव ऑन, आगे बढ़ते हैं इससे. सो नेक्स्ट सेट, वंस अगेन अ ब्रिलियंट सेट व्हिच आई हैव ट्राइड टू क्रिएट फॉर ऑल ऑफ यू. लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू आर एबल टू डू दिस सेट नाउ. So once again, somehow I forgot to put that information on that side only, but I'm sure you guys can do it. तो मैं कोशिश कर रहा था शायद इसका फॉन्ट कम कर पाऊं. It's a nice set in my opinion. लास्ट फ्यू डेज में मॉक देना हेल्पफुल होगा क्या? देना चाहिए नहीं वरुण, वैसे जितने दिन बचे हुए हैं आफ्टर दिस, तो नाउ यू हैव ओनली 4 मोर डेज. 4 दिन में यार हो सके तो 1 से ज्यादा मॉक मत देना. येस्टरडे सेट थ्योरी, अच्छा वो जो नवीन सर कर रहे थे उनको मैं अभी आएंगे थोड़ी देर में, सो उनको बोलता हूँ, he'll tell you what is to be done there.
So if this statement is not clear, let me just clarify that one of them will answer 4 questions first, and then the second person would come, he would answer 4 questions, then the third person would come, he would answer 4 questions, and then once again the first person would come, he would again answer 4 questions, second person would answer 4, third person would answer 4. This is how they are answering questions. I hope it is clear now. Okay, first person will answer 4 questions, second person will answer 4 questions, third person will answer 4 questions, and then first will come again to answer 4, and that ways in the same order they will keep answering 4 questions every time. And there is more information which is missing. Somehow I missed that information. There is more information on this. Actually, their scores are not mentioned here. Wait a minute, guys. इसमें कुछ तो change है. So I'll tell you that. तब तक आप पढ़ते रहिए, इसको पढ़ते रहिए. You take your time to read it. I'll give you some extra information about it. Their scores are also given at the end, which I'll tell you now. Read the information. I'll also give you their scores. That's important for us. Okay, wait a minute. हाँ जी, यहाँ लिख दे रहा हूँ. हेलो सर. आइए. अरे यार, मेरी एक वो थी, मैं इसमें स्कोर्स लिखने भूल गया. वो नीचे ही रह गई कॉपी जो थी, या फिर वो पीपीटी खोल लीजिए एक बार, शायद उसमें मिल जाएगा. These are the scores of these 3 people. देखना एक बार, यही है ना स्कोर्स? हैं? पक्का? कैसे पता? अच्छा, वो तो ठीक है, लेकिन मैच भी करने चाहिए मेरे से. कहाँ पे देखूँ अभी? अरे वो पीपीटी जो मैंने आपको भेजी थी वो खोल लो, उसमें होंगे ना. हाँ, लो. मेरे ख्याल से तो यही थे वैसे. ना, पीछे वाला जो पीपीटी भेजी हुई है. 40 है ना? 40 करेक्ट थे तो 120 में. सेकंड सेट. नहीं, एक सेकंड. हाँ, सेकंड सेट है. नीचे जाओ और नीचे जाओ और नीचे जाओ. ये रह गया बस. तो सरल का स्कोर हुआ 50 ना, और सर मेरा तो ऐसे होएगा ना 40, और अच्छा स्कोर. ठीक है, ठीक है. हाँ जी, ठीक है. अभी इट्स ऑल ओके. No, Rishabh, for wrong answers, there is no deduction. It is given that for wrong answers, other 2 people will get 1 mark each, 1 point each. इसमें मेरे नाम की स्पेलिंग नहीं, वो ओ है, वो मैं कर्सिव में लिखता हूँ. NAWWEN. नहीं, वो कर्सिव है, वो वी है, वो ए का डंडा है हुआ है. IN. अच्छा, अब उसका तो उसको आई तो नहीं बोल सकता. अगर इसमें भी आपके ज्यादा मार्क्स आए. भैया, कल इन्होंने पीटा है मुझे क्रॉस 0 में.
तो आज मैंने इनको हराया, बदला लिया है। में से 26 गलत है। ये अच्छा, ये भी गड़बड़ है, दिखाना एक बार, दोबारा दिखाना। टोटल पॉइंट कितना? प्लस कितना है? +3। दिखाओ दिखाओ, ये भी 24 है, सॉरी मैंने ठीक करके भेजा था यार, ये तो मैंने, दिस इज 24 गाइस, नॉट 26। चेंज करके भेजा था 26 कैसे आ गया? People, please note down, there is some correction in the data. Okay. Out of 66 questions, 24 were answered wrong, not 26. Okay, Danish is saying, asking this question, if 4 questions are asked by each and every round, why total questions, not multiple of 4? Danish, it was written that when anyone scores 50, the game gets over at that point. So that means someone got a score of 50 in the middle of those 4 questions. So possibly one question had been asked and suddenly someone got 50, or 2 questions were asked, or 3 questions, something like that would have happened. Okay, Gyaneshwari has done it. Whenever you are done, just write done. वो सर्कल में लोग बैठे थे। तीसरा भी डाल दिया ना, जो भेजा था PQRS वाला, जो लिख के भेजा था। अरे इसी के नीचे मेल पे तो है। ये वाला ठीक है? कौन सा? मेरा आ जाएगा। हाँ ये वाला? हाँ हाँ, ये ठीक। एक पहले मेरा आएगा, फिर आपका। ठीक, देखते डन। टोटल 6 सेट्स हैं। 6 में मेरा तो तुरंत हो जाएगा, आधा घंटा 40 मिनट, सिंपल है। तुरंत हो जाएगा, आधा घंटा 40 मिनट में। 2 सेट आधा घंटा, अच्छा मेरा तो तुरंत हो जाएगा, आधा घंटा 40 मिनट। Chirayu Sharma says done, Varun says done, Janvi has done it now. Very good guys, Nihar has done it. Anita Tiwari has done it. If you guys have done this set, that's pretty good. It's a very good set. कर लिया आप लोगों ने तो बहुत ही बढ़िया है। Okay, Prakriti says done. Dipankar has done it. Is the order of answering S and G? No, Akhil, it is not mentioned anywhere. You have to find out the order as well. In the questions, actually, we'll be asking you this. That who answered first, who answered second, who answered third. We'll be asking you that. Yes, Sanskriti, you will have to find out. Just this is just mentioned by sir. That order is not same. S and G, it is not given anywhere. ठीक है। और 132 को 3 पार्ट्स में ब्रेक कर देंगे, जिसमें 3 पे 3 पे 3 पे 2, तो हमेशा ही आंसर होगा इसका, नहीं होगा? 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो 3 के 3 के प्लस 3 के प्लस 2 को 132 को तीनों 3 के नहीं हो सकते। हमेशा ही आंसर देगा ही कुछ ना कुछ। हाँ हाँ हाँ, सही कह रहे हो। So Ritika has done it, Vasundhara says done, Kaushal says done. We'll start doing it within a minute now. I'm giving you 1 more minute. After that I'll show you the questions. आप लोग questions try करेंगे एक बार, उसके बाद हम लोग मिलके इस set को try करेंगे. But once again, a pretty logical set.
सुबह वाला ही ना, है ना? Akhil also has done it. Gautam has done it. That's great. Saral is the middle one. Okay. Krishna has done it. ये क्या लिख दिया? Done. अच्छा डन. ये अच्छा पहले नाम था इतना लंबा. Crockett Mehta 125. Crockett Mehta 125. अच्छा. Ankit is saying I'm not getting. Not a problem, Ankit. We'll do it. Yoga says done. Anita is happy. Chali, I'll show you the questions now. So first of all, you just write all the answers in one single line. After that, we'll see that who answered the questions correctly. So here are the three questions. Who was the first person to answer the questions? How many right answers were given by Gourav and how many wrong answers were given by Saral? You have to write all three answers in one single message. Write all three answers in one single message. After that, we'll be doing it together. I'll check later on कि किस किस के answers match किए तीनों. Question number 1, 2, 3, all three answers in the same message separated by commas. जिसका आंसर नहीं निकला उसके लिए डैश मार दीजिए, डैश छोड़ दीजिए. The first person to answer, how many right answers were given by Gourav and how many wrong answers were given by Saral. Can we have the answers? Okay, Joydeep is the first one to answer. He says B, A and C. Okay. So Gautam says Navin 11 and 9. That is B, C and D. Abhay says Sarla 11 and 9. अबे सरला तो नहीं है यहाँ पे कोई. Where is Sarla? ये ऑटो करेक्ट हुआ होगा, गर्लफ्रेंड होगी अभय की. पूजा गर्ग says D, C, A. Okay. Then A dash. Kunal got A, B, B. Kaushal got B, C, A. Sharma Chirayu got B, A, C. Megh Mehta has got A. Aditya Singh Thomas has dash, dash, dash. That's good. We have to tell that, okay, could not do it. Saral 11 and 9. And then A, B, B, C, B, 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 C, A, B, C, B, D, A, A. तो बहुत अलग लगा है, सब आ रही है. मैं देखा तकरीबन हर तरह के आंसर्स आ रहे हैं. Aryan has got D, B, A, okay. ADA, BAB, AA, something, D something, A, BCA, BCA. चलिए जी, let's start doing it now. करना शुरू करते हैं, ठीक है? Without any further delay, let us start. So अच्छा देखो, मैंने यहाँ चेंज कर दिया था ये और वहाँ भूल गया, तो ये वाला चेंज कर, मैं चेंज तो किया था. Okay, so Saral has a score of 50 and Naveen has a score of 40 and Gourav has a score of 42. अब देखो स्पेलिंग ठीक है ना सर? आप दोनों की 50, 40 and 42. चलिए. So he said that there are total of 66 questions out of which 24 were answered wrong. Now we'll start talking about this. सबसे पहली बात उसने ये बोला कि पहले 4 लोग, एक आदमी 4 क्वेश्चंस को आंसर करेगा. The second person will answer 4 questions. The third person will answer 4 questions. Once again, first will come back. वो फिर से 4 क्वेश्चन आंसर करेगा. Second, third, once again first will come back. तो ये ऐसे चलेगा ऑर्डर. So I don't know who is first, who is second, who is third, but I definitely know one thing, that if they answer like this, in one round there would be a total of 12 questions answered, right everyone? In one round there would be 12 questions answered. First person will answer 4, second person will answer 4, third person will answer 4, that is 12. Second round आएगा, फिर से 4, 4, 4, फिर से 12 questions answered. Third round, फिर से 12, fourth round, fifth round. So in first 5 rounds, we have a total of 60 questions answered. First 5 rounds, we have a total of 60 questions answered. Of course, the first guy would have answered out of them 20. Second guy would have answered 20 and third guy would have answered 20. है कौन वो first, second, third ये नहीं पता, but we can surely say that the first person, ठीक है, is going to answer 20 questions in these 5 rounds. Second person is going to answer 20, third person is going to answer 20. अब उसके बाद क्या होता है? वापस से it would be the turn of the first guy.
अब वो फिर से 4 क्वेश्चंस आंसर करेगा, टोटल बिकम्स 64. After that, it is the turn of the second guy. The moment he answered 2 questions, actually someone got a score of 50, and that person is Saral. Of course, only Saral can win. तो उसका स्कोर 50 आया. जैसे ही 50 हुआ, गेम ओवर. इसका मतलब ये है, the first guy actually answered 24 questions. Second guy answered 22 questions. And third person could answer only 20 questions. उसमें से सही कितने गलत कितने, that's a different story. Who answered first, who answered second, that is also a different story. But one thing is for sure, the first person answered 24 questions, second person answered 22 questions, or third person answered 20 questions. I hope till this point all is fine. ये सबको समझ में आ गया है. एक आदमी ने 24 आंसर करे हैं, एक ने 22 और एक ने 20. स्कोर्स उनके कितने हैं? 50, 40, 42. इन सारे क्वेश्चंस में से उसने बोला है 24 आंसर्स कितने हैं? रॉन्ग. सो सम पीपल वुड हैव आंसर्ड करेक्टली, सम पीपल वुड हैव आंसर्ड रॉन्ग. तो कुछ क्वेश्चंस का सही, कुछ का गलत ये रहा होगा. नाउ दैट विल फिगर आउट. वो पता लगाते हैं किसने कितने सही किए, कितने गलत. सो सरल इज देयर, नवीन इज देयर, गौरव इज देयर. हाउ मेनी आंसर्स दे गेव राइट, हाउ मेनी आंसर्स वर रॉन्ग. Their total scores we already know. It is 50, then it is 40, and it is 42. Moreover, we also know out of 66, 24 answers were wrong. So automatically 66 minus 24, 42 answers were correct. Got it, guys? यहां तक I'm sure there is no problem to anyone. ये सबको समझ आ गई ये बात. टोटल स्कोर्स मैंने यहां लिख दिए हैं. 66 में से 24 रॉन्ग थे, 24 यहां लिख दिए, 42 यहां लिख दिए. राइट प्लस रॉन्ग जो होगा दैट वुड बी ईदर 24 और 20 और 20, 22 और 20. दैट वुड डिपेंड अपॉन फर्स्ट कौन था, सेकंड कौन था, थर्ड कौन था. नाउ विल ट्राई टू फिगर दैट आउट. ओके, सरल तो फर्स्ट है. लेट्स टॉक अबाउट सरल फर्स्ट बिकॉज ही इज फर्स्ट. सो विल टॉक अबाउट हिम फर्स्ट. पहले उसी से शुरुआत करते हैं हम लोग. लेट्स स्टार्ट विद सरल. सरल हैज अ स्कोर ऑफ 50. Right? I'm giving you 2 solutions of this question. I mean, in 2 ways you can answer it. The first one, let us say he answered X correctly. अब सवाल ये है उसका स्कोर आया कहां से है? All the score of Saral or of any person, it came from, for every right answer they got double of it, and for others wrong answers they got 1 mark. So let's say he did X questions correct, and the other 2 guys, they did Y questions wrong. So can I say that 2x plus y is equal to 50? First of all of you tell me, is this understood? ये बात सबको समझ आई मेरी? जल्दी बताओ जरा एक बार. सही जो आंसर किए होंगे उसका 2x मिलेगा, जो बाकियों ने गलत किया होगा दैट्स y, लेट्स से उसको एक एक पॉइंट मिलेगा. जो इसने गलत किया उसका भी 1 पॉइंट, जो इसने गलत किया उसका भी 1 पॉइंट. सो अल्टीमेटली ही इज गोइंग टू गेट y पॉइंट्स. सो 2x पॉइंट्स फॉर हिज राइट आंसर्स, y पॉइंट्स फॉर अदर्स रॉन्ग आंसर्स, एंड हिज टोटल स्कोर इज इक्वल टू 50. सो देयरफॉर आई हैव रिटन 2x plus y is equal to 50. 2x plus y is equal to 50. Agreed guys? एक बार सब लोग फटाफट बता दो. ये सबको समझ आ गई मेरी बात? 2x plus y is equal to 50. Absolutely okay? Okay, then I'll move ahead. Now total number of wrong answers is 24, out of which y wrong answers are given by Navin and Gourav. So how many wrong answers are given by Saral? It is 24 minus y. ठीक है? So y wrong answers are given by these 2 guys. Total wrong answers are 24. So his wrong answers are 24 minus y. So total number of total number of answers given by Saral is x plus 24 minus y. सही बात है ये भी? X right? 24 minus y wrong. So his total number of answers is x plus 24 minus y, and I can say x plus 24 minus y is going to be either 24 और 22 और 20. भाई टोटल शॉट्स तो इन्हीं में से एक होंगे ना, हमें पता नहीं कितना बनने वाला है वो. इट माइट बी 24, इट माइट बी 22, इट माइट बी 20. कौन सा होने वाला है वी कांट से, बट इस टोटल नंबर ऑफ शॉट्स इज 24 और 22 और 20. 24, 22, 22 कंसीडर कर सकते हैं क्या 2x प्लस y में? अरे नहीं वरुण, 2x प्लस y इज हिज स्कोर, हिज पॉइंट्स. तो पॉइंट्स तो उसके 50 है ना, तो 2x प्लस y इज गोइंग टू बी 50.
Last step, can you explain it, sir? Yes, Ankit. His number of the points that he has scored, वो कहां से आए हैं? For every right answers he got 2, so that is 2x. Others wrong answers he got 1, so that is y. So 2x plus y is 50. ये उसके पॉइंट्स बने. इन्होंने y गलत किए तो उन्होंने 24 माइनस y रॉन्ग किए, और 24 माइनस y अगर रॉन्ग किए होंगे तो टोटल नंबर ऑफ शॉट्स आर गोइंग टू बी x plus 24 minus y, which is one of these three, because we don't know he's the first person to answer or second or third person to answer. वो कौन है? 24 को मैं उधर ले जाता हूं. I will have x minus y as 0 or -2 or -4. x minus y as 0 or -2 or -4. 24 माइनस होगा, 24 में से तो 0, यहां से -2, यहां से 20. अभी आपको लग रहा होगा ये बहुत डिफिकल्ट है, ये क्या आ गए, तो इतने सारे केस बन गए, बट एक्चुअली नाउ द क्वेश्चन इज सॉल्व्ड 95%. जस्ट एड दीज टू इक्वेशंस, यू गेट द आंसर. एडिंग दीज टू इक्वेशंस वी गेट द आंसर. एक बार देखो जरा, एक बार यहां पे क्या हो रहा है. इफ आई एड देम, y एंड y कैंसल आउट, 2x प्लस x इज 3x. अब जरा ऐड करो 50 में. 50 में 0 ऐड करूंगा, वो तो 3 का मल्टीपल नहीं है. 50 में -2 ऐड करूंगा, 48, वो 3 का मल्टीपल है. और 50 में -4 ऐड करूंगा, 46, that also is not a multiple of 3. That means the only possibility with this 50 is -2 here, such that it becomes 48. So I can say x is equal to 16, and the moment you put x as 16 over here, 16 2 जा 32, y is equal to 18. इन दोनों लोगों ने 18 रॉन्ग किए, तो इसका मतलब सरल हैज डन हाउ मेनी क्वेश्चंस रॉन्ग? ये आ गया 16 आपके पास, तो यहां पे दिस नंबर इज गोइंग टू बी 6. बिकॉज y 18 आया ना, तो अदर्स के 18 रॉन्ग हो गए, सो सरल के 6 रॉन्ग हो गए. मोर ओवर 16 प्लस 6 इज 22. वी कैन से सरल इज द सेकेंड पर्सन टू आंसर. He is the second person to answer, and he has answered 16 correct, and he has answered 6 wrong. By that logic, we get the answer. For the other people now, actually, once again, you have done 90% of the job, because everything is going to be the same except this. दूसरे आदमी के लिए 50 ना हो के 40 हो जाएगा, बाकी तो सब कुछ सेम है, isn't it? दूसरे के लिए अगर मैं x इसके वो मान लू राइट आंसर्स, दूसरों के y राइट आंसर्स, उसके राइट वो जो टोटल नंबर ऑफ आंसर्स हो जाएंगे रॉन्ग, 24 माइनस y. वंस अगेन एन इक्वेशन लाइक दिस वुड बी फॉर्म्ड. सो देन यू हैव अ 40 हियर, देन यू हैव दीस 0 -2 और -4 हियर, देन यू ऐड देम, y एंड y कैंसल आउट, यू हैव 3x एज दिस टाइम. 40 के साथ 0 लू या -4, कब 3 का मल्टीपल बनता है? इट बिकम्स एट -4, एंड 40 - 4 इज 36, विच गिव्स मी x एज 12 दिस टाइम. x को 12 पुट करोगे 24, तो y कितना बनेगा 16. इन दोनों के 16 रॉन्ग, तो इसके कितने रॉन्ग हुए वो और देख लेते हैं फिर एक बार. 16 को 24 में से माइनस कर दो, दैट इज 8. 42 में से 16 प्लस 12, 28 माइनस करो, इट इज 14. 24 में से 8 प्लस 6, 14 माइनस करो, इट इज 10. दिस इज द पर्सन हु आंसर्ड 24. This person answered 20, and these are the number of answers that they have given right or wrong. These are the number of answers that they have given right or wrong. अब जरा एक बार सब लोग बता दो, is it understood? After that I'll talk about another solution for this question, which is very fast. ठीक है, उसके बाद आपके पास गौरव सर आएंगे, आपके प्यारे. शिवम has got 8. जल्दी बताइए, अंडरस्टूड टू ऑल, समझ आ गई ये बात? एक और बढ़िया सा सॉल्यूशन फिर डिस्कस करेंगे एक बार इसके बाद, अगर ये समझ आ जाता है तो. किसका डाउट है? मेग का. Can't we say that the person who scored 50 attempted the last question? Oh no, Meg, actually that's a common mistake that you can make in this question, because अगर लास्ट आदमी जो आंसर कर रहा है, हो सकता है उसने गलत आंसर दिया हो, जिसकी वजह से किसी और को 1 पॉइंट मिला, जिसका ऑलरेडी स्कोर 49 था, एंड ही सडनली गॉट 50. तो जरूरी नहीं जो लास्ट आंसर कर रहा है उसी का 50 हुआ है, बिकॉज यू माइट गिव अ स्कोर टू अदर गाइज एज वेल. ओके मेग, आई एम श्योर दैट यू अंडरस्टूड इट. नवीन सर भी आएंगे, गौरव सर के बाद नवीन सर आएंगे. ठीक है जी, आई एम श्योर दिस इज अंडरस्टूड. तो एक बार मैं दूसरा सॉल्यूशन और डिस्कस कर लूं इसका, फिर आप लोगों से विदाई ले लेंगे.
हाँ जी, let's start talking about the other method now. The other method is, see, किसी ने 24 आंसर्स किए हैं, किसी ने 22 आंसर्स किए हैं, किसी ने 20 आंसर्स किए हैं. शिवम कर सकते हैं हिट एंड ट्रायल भी, क्योंकि बहुत बड़े नंबर्स नहीं है. इवन हिट एंड ट्रायल कैन बी डन, बट देयर इज अनदर मेथड विच इज वेरी क्लोज टू हिट एंड ट्रायल एंड फास्ट इनफ, बट वेरी लॉजिकल. तो वो मेरे ख्याल से ज्यादा बेहतर होगा. टॉक अबाउट एनी ऑफ दीज थ्री गाइज. किसी के बारे में भी बात करता हूं. लेट्स से आई टॉक अबाउट दिस गाय हु हैज डन 24 क्विज. अब ध्यान से सुनना. If a person gives 24 answers correct, the person who has given 24 answers, अब उसके या तो पूरे 24 करेक्ट होंगे, या 23, या 22, या 21, या 20, कुछ भी हो सकता है. We don't know that how many of them are correct. If a person has done all 24 answers correct, what is his score? For every right answer, he will get 24 into 2, 48 plus. उसने कुछ भी गलत आंसर नहीं दिया. सो ऑल 24 रॉन्ग आंसर्स आर गिवन बाय अदर पीपल, जिससे 24 पॉइंट्स और मिले उसको. हिज टोटल स्कोर वुड बिकम 72. गॉट इट गाइस? ये बात समझ आती है मेरी? इफ द पर्सन हु हैज शॉट 24, मैं किसी एक के बारे में बात कर रहा हूं. यू कैन टॉक अबाउट 22 वाला गाइस और 20 वाला भी. मैं किसी भी एक के बारे में बात कर रहा हूं. लेट्स स्टार्ट टॉकिंग अबाउट 24. रैंडमली ले लिया. किसी ने अगर 24 के 24 सही कर दिए तो उसका स्कोर आएगा 24 इंटू 2, 48. लेकिन उसने पूरे 24 ठीक किए, दैट मींस अदर्स हैव डन ऑल 24 रॉन्ग आंसर्स. वो सब दूसरों ने किए, उसके 24 पॉइंट्स और मिले होंगे. हिज स्कोर वुड बिकम 72. दूसरी बात, लेट्स से ही डिड 23 करेक्ट. 23 करेक्ट करेगा तो उसका स्कोर बनेगा 23 इंटू 2 प्लस 46. तो यहां से मिल गया. अब अगर किसी ने 23 करेक्ट किए हैं 24 में से, तो एक रॉन्ग किया होगा. ही डिड 1 रॉन्ग, दैट मींस द अदर्स गाइज दे डिड 23 रॉन्ग. तो उसका स्कोर हो जाएगा 23 इंटू 2 प्लस 23, दैट इज 69. हिज स्कोर विल डिक्रीज बाय 3. एक गलत राइट आंसर आपका स्कोर 72 से 69 पे ले जा रहा है, दैट इज डिक्रीजिंग बाय 3. एक और गलत अगर कर दोगे तो 22 इंटू 2, यहां पे 22 आ जाएगा. हिज स्कोर वुड बिकम 66. सो एवरी टाइम योर स्कोर वुड कीप डिक्रीजिंग बाय 3. सवाल ये है 72 में से 3 3 3 3 डिक्रीज कर रहे हो, तो कौन सा स्कोर इनमें से बन सकता है? सोचो जरा एक बार. क्या 72 में से 3 3 डिक्रीज करके 50 बन सकता है? 72 में से 22 डिक्रीज करते हैं तो 50 आता है. 22 इज नॉट ए मल्टीपल ऑफ 3, नॉट पॉसिबल. 72 में से क्या माइनस करोगी? 40 आए? नॉट पॉसिबल. 32 माइनस करने पे, विच इज नॉट ए मल्टीपल ऑफ 3. 42 इज द ओनली नंबर विच कैन गिव इट टू यू. समझ रहे बात? 72 से 30 माइनस करता हूं तो 42 आता है. दैट मीन्स ही इज द गाय हु हैड गिवन 24 आंसर्स. और कितने बार माइनस किया मैंने? 3 3 इसमें से 10 टाइम्स. मतलब उनके राइट आंसर्स में से 10 कम करने पड़ेंगे. सो ही गेव 14 राइट आंसर्स एंड 24 माइनस 10, 14, 10 रॉन्ग आंसर्स. एकदम से मिल गया ये हम लोगों को, राइट? सिमिलरली अब मैं यही चीज 22 के साथ भी कर सकता हूं कि 22 वाले का मैक्सिमम स्कोर कितना आएगा? 22 इंटू 2, और दूसरे आदमी ने सारे 24 गलत कर दिए, तो 44 प्लस 24 इज 68. 68 में से भी 3 3 कम करके देखो क्या बन सकता है? 50 बन सकता है क्या? 68 माइनस 18 इज 50. यस. क्या 68 से 40 बन सकता है? नहीं. 28 माइनस हो रहा है, वो तो 3 का मल्टीपल ही नहीं है. सो 68 से 50 इज 18 लेस, जो कि 6 कम करने से आया. 6 कम करने का मतलब 22 माइनस 6. इस आदमी ने 16 सही किए हैं और टोटल 22 का मतलब 6 रॉन्ग किए हैं. एंड नाउ 42 में से दोनों माइनस कर दो, यू विल गेट दीज एज वेल. ये आ जाता है आपके पास 12 और ये आ जाता है 8. सो दिस इज 20. So this is another way of answering this question. You can say it is more or less like hit and trial, but more of logical. Hit and trial में तो क्या हम randomly values put कर रहे हैं, या हम सोच समझ के पुट कर रहे हैं. अच्छा, ये 3 का मल्टीपल आना चाहिए, माइनस करेंगे तो कितना स्कोर बनेगा, कितने से डिक्रीज हो रहा है, सो वेयर वुड इट गो? दैट वेज वी गेट द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ठीक है. सो लेट्स हैव अ लुक एट द आंसर्स नाउ. एक बार चेक कर लेते हैं क्या आंसर्स थे, आपको पता लग जाएगा कौन कौन से सही है. हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू आंसर द क्वेश्चन? द फर्स्ट पर्सन इज गौरव. So therefore the answer for the first question was C. How many right answers were given by Gaurav? Gaurav has given 14 correct answers. So the answer was 14. How many wrong answers were given by Saral? So wrong answers Saral के कितने हैं? That is equal to 6. So therefore the answer is A. Our answers are C, B and A. CBA is the right answer. I am sure many of you would have got it correct. ठीक है.
इक्वेशन के अलावा ये ठीक है, मेरे जो जिसको सूट करता है सुजीत, हालांकि कर तो हम ऐसा भी सकते हैं कि हम लोग 6 वेरिएबल ले लें, राइट? मतलब A1 इज द नंबर ऑफ राइट आंसर्स बाय सरल, A2 इज द नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर्स बाय सरल, B1 बाय नवीन, B2 बाय रॉन्ग आंसर्स बाय नवीन, ऐसा करके C1 C2 6 इक्वेशंस बना के उसको भी स्लो सॉल्व कर सकते हैं। पर आई थिंक दैट्स अ गुड अप्रोच थ्रू विच वी कुड हैव सॉल्व्ड इट। हाँ, पर बहुत लंबी इक्वेशंस बनेंगे और कंफ्यूजिंग हो जाता है वेरिएबल्स। You do not have enough equations. And वैसे भी सरल सर don't like variables. I anyways do not like variables. I like constants in my life. ठीक है जी। So that was the set now. So now Gaurav sir will come in front of you और वो उनका जलवा देखिए। चल आओ सर, जलवा दिखाओ। जलवा दिखाओ। Okay. So for us the next set is pure DI based set. फटाफट से इस सेट को स्टार्ट करते हैं। So the entire data is given in front of you. Okay, so you can see two pie charts. The first pie chart is the sales for the year 2010. Total is given as 185 million divided in 5 parts, as you can see. Second pie chart is for the sales for the year 2020 and the total is 222 millions. Below these pie charts, it says the above pie charts shows the sales of 5 companies A, B, C, D, E in the year 2010 and 2020. It is given that these are the only 5 companies in the mentioned years. So I'll leave you with this data for 2 minutes, not more than that. You don't have to probably do any kind of calculations until and unless you have the questions in front of you. So will not give you much time to analyze this data because there is nothing to analyze in this data. Okay, so just be familiar with the numbers. No need to copy all these values because the pie charts will be given with the questions. Okay, so not more than 2 minutes to understand the data. Don't start with the calculations as of now. You'll be wasting your time. अभी कम हुआ था, 217 तक गया था, फिर 240 I believe the data is readable. नवीन सर डेटा रीडेबल है वहाँ पे स्क्रीन पे? डी वाला जो है थोड़ा शेड ब्लू पे वो थोड़ा कम लग रहा है, पर इधर तो ओके, हाँ क्लियर है वैसे। ये सिलेंडर का 1/3 वॉल्यूम को कौन बोलता है? सिलेंडर गेम 1/3 वॉल्यूम को कौन बोलता है? कौन कौन क्वेश्चन नहीं था। कौन बोलता है? Okay, so let's jump on to the questions. Question number 1 on your screen now. अब क्वेश्चन पे जंप कैसे करें? स्क्रीन के अंदर घुसना पड़ेगा। Okay, so question number 1 is what is the percentage change in the sales of company C from 2010 to 2020? Percentage change in the sales of company C. So we are talking about company C, so you can analyze the data for company C and tell me what is the percentage, what is the net percentage change from 2010 to 2020. You all can post your answers. Theta question है तो साइड हो जाना चाहिए। जंप करो, क्वेश्चन क्या जंप करें, नीचे से अपीयर होता हूं मैं। Okay, waiting for your answers. You must mention the nature of the change as well. Is it an increase or a decrease? All right, so answers hai on the application. Nikita says 4, 4.16, 20%, 4. Please write your answers once again. I am looking for the nature of the change as well. In the question, change is mentioned. Okay, so please mention the nature of the change as well. Just write plus or minus. मतलब अगर माइनस लिखता हूँ क्योंकि 4 का मतलब तो प्लस होता ही है। नहीं, मेरे को 4 से समझ में नहीं आ रहा, so cannot be determined. 4 तो प्लस 4 ही है, माइनस कह रहे हैं, माइनस लिखो। All right. Around 4%, Ankit says.
4% decrease, majority. 20% decrease, some of you, 4.5. 20% decrease, minus 4.05 percentage. All right. Nikita says 4% decrease. Nikita has mentioned the nature as well. On the application, please, those students are there on the application, respond, all of you. Anuja says -4. चलिए फटाफट फिनिश करते हैं. ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं है ये, बट छोटी सी एक चीज है जो समझ में आनी चाहिए. राइट, द इंपॉर्टेंट नंबर्स, फर्स्ट ऑफ ऑल, this number and this number. Okay, now one very basic way of doing this question, if we don't have a knowledge of some concepts of percentages, so simply log kya karenge, they will calculate 20% of this value. All right, they'll calculate 16% of this value. So basically we'll calculate the sales of company C in 2010, sales of company C in 2020. All right, and then we'll find the percentage change. So जिसका भी आंसर आ रहा है 4.05, 3.7, whatever, so they would have used this particular technique. All right, a conventional way. But obviously we are not sitting here to look for the conventional way. Time save करना है बहुत ज़्यादा. Okay, so let us understand what these numbers are, or what is the relation between these numbers. Can anyone tell me what is the relation between 185 and 222? Anyone? What is the relation between these two numbers? So 185, this number is 37 into 5, and this number is 37 into 6. So if I take the ratio of the bases of these two pie charts, इन दोनों pie charts के bases का अगर ratio consider करते हैं, so ratio will come out to be 5:6. All right. The ratio will come out to be 5:6. Multiple of 37, absolutely correct, good. So music core, Rakhal Paul, they have given, Shresht has mentioned 37, good. So 37 is a common multiple, okay, common factor of these two numbers. So I'll take 37 common and can say that the bases of these two pie charts are in the ratio 5:6, okay. So I can say that the increase in the base from 2010 to 2020, the increase in the base is equal to 1/5 into 100, that is 20%. So base जो है वो 20% से increase हो गया है, right? So base has increased by 20%. Okay. Now, after we got to know this thing, let's say if I want to find out the percentage change in A. So A is 10% and 13%. So the market share of A has increased by what percentage? Like ये जो percentage value है, इसके अंदर change कितने का आया है? So value 10 से कितनी हो गई है? पहले 10 था value, now it has become 13. So for A it has increased by 30%. मैं सिर्फ ये percentage value को consider कर रहा हूँ. So 10 से 13 हो गई है. What is the change? 30%, right? Now if you want to find out the net change in terms of percentages for A, I'm talking about A, not C right now. Question is for C. Okay, so A के लिए अगर net change find out करना है from the year 2010 to 2020, we can just use a very simple way, successive percentage change. I believe सबने successive percentage किया होगा अपनी classes में. So successive percentage change का formula लिख रहा हूं मैं यहाँ पे. It is simply A plus B plus AB upon 100. All right, this is the net percentage change, where A is the first change, B is the second change, or in this case I can say that A is the change or a percentage change in base, and B is the percentage change in the percentage value of any companies from one year to another. ठीक है? So A का net percentage change calculate करना है. Base में change है 20% increase, and here it is 30% increase, so I can apply 20 plus 30 plus 20 multiply 30 divided by 100 is 6. So for A, this value will come out to be 56% increase. Okay. So similarly, I can find it for company C. Company C के लिए find out करते हैं. Apply the same formula. So first of all, tell me, all of you, is this understood? Come on, give me a yes if you have understood the method that I have told you.
So if you can identify this particular thing, then you can get the answer for this question in less than 30 seconds. मुद्दा यही है, एम यही है कि टाइम कम से कम लेना है एंड आंसर जल्दी से जल्दी देना है. Subhasini says 20 how? Subhasini, 37 multiply by 5 if it is the initial value, 37 multiply 6 if it is the final value. From this value to this value, what is the percentage change? Okay, so to calculate the net percentage change here in this, from this value to this value, you can take out the common factors because common factors ultimately बाद में भी cancel हो जाने हैं. So just look at how much percentage change is there from 5 to 6, the uncommon factor. So 5 से 6 में percentage change कितने होगा? Changes of 1 over the initial value of 5 multiply by 100. Solve this and you will get 20. Okay? Okay. So Jodeep, you're asking what did you do in bases? So bases में से मैंने 37. So Joydeep, 37 was the common factor in the bases. I have taken it out. I have cancelled that common factor. If you will operate on these values, again you will get the same answer. But मैंने क्या किया? What I have done is I have made the calculation easy by taking out 37, the common factor among these numbers. Okay? All right. So let's look at for C. What will happen for C? Now for C, the percentage distribution here is 20 and here it is 16. So 20, final value is 16. This is for C. So what is the percentage change here? From 20, the value has become 16. Okay. So the percentage change is, anyone? 20%? 20% decrease. Okay. So net percentage change for C will be, this is A plus B, which is minus 20, plus A into B. 20 into minus 20 is minus 400 divided by 100. It will be minus 4. All right. 20 minus 20 cancel ho jayega. So the net percentage change will be minus 4%, or you can say that 4% decrease. So that should be the answer for question number 1. Okay. 20 into 5 100 कर दो, 16 into 6 96 कर दो, 4 दोबारा बोलिए. 20 into 5 कर दो, 16 into 6 कर दो, 4 का इस क्वेश्चन. हाँ हाँ सही है. चलिए, सो सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट, जल्दी से सेट फिनिश करते हैं. नाउ व्हाटएवर आई हैव टोल्ड यू जस्ट नाउ, you can apply the same logic in most of these questions. Okay, so question number 2, for how many companies mentioned? So there were 5 companies mentioned in total. The percentage change in sales from 2010 to 2020 is at least 40%. For how many of the companies? For how many of the companies the percentage change is at least 40%? 40% increase कर दीजिए इसको. So the percentage change is at least 40% increase. देखते हैं कौन जल्दी आंसर देता है. नवीन सर जल्दी आंसर देते हैं या आप लोग जल्दी आंसर देते हैं? So those who have given the answer also mention the companies A, B, C, D, E. Which companies? So I'm getting I can see 3 as the answer. So please mention the companies. Please also mention the companies. Okay, so Naveen sir also says 3, but मेरे को companies चाहिए. So answer is A, C, D, A, B, D. So A, C, D or A, B, D. A, B, D, A, C, D, C, D and E. ये भी आ रहा है आंसर. Okay. A के लिए तो मैंने कैलकुलेट कर ही लिया था, राइट? सो इन द बेस द नेट परसेंटेज चेंज इज 20%. Alright. Now for A, we have already calculated the change was 56% increase. So A will definitely be the answer. Okay, A will definitely be one of the companies for which this has happened. Now
We have calculated for C as well in the previous, -4%. So C will not be the one. So C cancel kar dete hain. Okay. So those who have given C as the answer, why you have taken C as the answer? -4% tha. I want minimum 40% increase. So C cannot be the answer. It was already done. Now if I look at B, now B 15 से 18 हुआ है value. Okay, 15 से 18. So from 15 to 18, there is a change of 20% increase, right? From the value of 15, 18, 3 का increase हुआ है over the base of 15. Okay, so 3 upon 15 is 1 upon 5. Orally करनी है ये calculations, ये बहुत basic calculations हैं. So 3 upon 15 is 1 upon 5, which is 20%. Okay, so base में 20% का change है, value में 20% का change है. So net percentage change will be 20 plus 20 plus 20 into 20 upon 100. So this will come out to be 44%. So B will definitely be the answer. So दो companies तो आ गई हैं. Okay. Now let's talk about D and E. Now first of all, I'll go for E. The percentage breakup for E in the first year कितना था? 31%. And it has dropped in the next year or in the next case. So 31% say 25%. No need to do the calculation. The change in base was 20% increase and here it is a decrease. So any kind of decrease will take the value further below 20%. Okay. So जो भी इसका net percentage change होगा, that will be below 20%. So E cannot be among the answers. Now the finally thing is left for D. Okay. Now for D, I'll tell you one another method. Okay, so एक तो method समझ में आ गया, A plus B plus AB upon 100 successive percentage change, direct formula apply कर दिया. Now for D, if you look at 24 से 28, there is a change of 4 over 24. That means 1 upon 6. And if I'll convert it in percentages, this will be 16.66%. Now, my belief is, if I'm using these decimal values, first of all, in the formula A plus B plus AB upon 100, then the calculation are gonna be a little complex, Those who are good in calculations, they can go ahead and find the answer. Also, second reason why I'm not using A plus B plus AB upon 100, because 16.66 is the approximate value. 16.66 is the approximate value of 1 by 6, not the exact value. Okay, so the net percentage change will be an approximate value. Problem हो जाएगी if the net percentage change is somewhere near 40. Somewhere near 40. हमारा threshold value क्या है? 40. अगर value 40 के आसपास होगी तो problem आ जाएगी determine करने में should I consider this number or not. So मैं क्या use करूंगा? Fractional method. Simple. So यहाँ पे 20% there is an increase by 1 by 5. Whenever there is an increase by 1 by 5, the final value becomes 6 upon 5 of the initial value. Okay. 1 plus 1 upon 5 कितना होता है? 6 upon 5. I'll repeat it. If there is an increase of 20%, which is equivalent to a fraction of 1 by 5. So increasing any value by 1 by 5 of its original value, the final value is 1 plus 1 upon 5 times the original value. So that means 6 upon 5 times the original value. Okay. So because of this change, the value will become 6 upon 5 times the original value. Okay. Next, because of an increase of 1 by 6, the final value will become 1 plus 1 by 6. That is 7 upon 6 times the original value. So multiplied by 7 upon 6 times the original value. All right. 6 and 6 will get cancelled. So यहाँ पे exactly कितना आ जाएगा? 7 upon 5. So the final value is 7 by 5 times the original value. So fractionally कितना increase होगा? Fractionally there will be an increase of 2 by 5. 2 by 5 को percentage में convert करेंगे, it will be exactly 40%. Okay, exactly 40% आ जाएगा. Question was at least 40% चाहिए था. Yes, 40% का increase हो रहा है. So what we can say is D will also be the company in which this change is happening. All right. So A, B and D
These are the three companies. So most of you have given the correct answer. Yes, these are the three companies in which the change is at least 40% increase. All right. So that was question number 2. Question number 3 की तरफ चलते हैं. Before that, just give me a yes if you have understood this one. टांग खींचना शुरू कर देते हैं. बेचारा कोई अमित शाह नाम का आया है. अमित शाह, प्लीज मेक जय शाह द प्रेसिडेंट ऑफ BCCI. जय शाह मेक द प्रेसिडेंट ऑफ BCCI. एजुकेशन वर्ड नाम से. Yes, चिराग, 50/3 यूज करके आप कंसिडर कर सकते थे. A + B + AB/100 डेफिनेटली कर सकते थे. ऑल राइट, चलिए थर्ड क्वेश्चन. A quick answer for this one. Yes, Rishabh, but I have mentioned specifically for that question, I have mentioned increase. बाद में मैंने बता दिया था 40% increase. So if you have a change which is less than -40, so that will be considered if they will ask you just change, not increase. Gibson is asking how I did 4/24. So Gibson, here change is of 4, 24 से 28, increase is 4 over the initial value of 24. This is how I got 4/24, which was 1/6. The idea of telling you the fractional approach was to give you one more way of solving these questions. Okay, another alternate. Joydeep, how to remember so many techniques? Just by practice, nothing else, just by practice. And the concept that I've taught you was basic. Okay, that was basic for basic thing that we have learned in percentages. कैट में नेगेटिव मार्किंग हटवा दो. Okay, so question is from 2010 to 2015, नया ईयर आ गया यहाँ पे. The sales of A, B and C increased by 10%, 20% and 30% respectively. Sales of D decreases by 50% and there is no change in the sales of E. Then what will be the approximate value of the central angle? Approximate or exact value, it's totally up to you. You can give any answer up to the nearest integer. Then what will be the approximate value of the central angle formed by B in the pie chart drawn for the year 2015? अरे नवीन सर सॉल्व कीजिए, पढ़ाई कीजिए. कैट है आपका 27th को. नवीन सर बैठे हैं आराम से. 10-20-30 है क्या? हाँ 10-20-30. हिंट मत दो ऐसे करने दो. हाँ क्वेश्चन पढ़िए अपने आप. अरे इन्विजिलेटर से थोड़ी पूछोगे. खड़े हो, ये क्वेश्चन पढ़िए ठीक से. पेन उठाओ, करो अंदर क्या. Yes, any answer? Approx 118.8. Okay. अब है nearest integral answer. So I believe 119 होना चाहिए आपके हिसाब से. 66, 49, 65, 66, 120. So 66 is the most common answer. Okay, चलिए सॉल्व करते हैं. So pie chart of 2020, no need to see. Pie chart of 2010 is what we have to look at. Now for 2010, the percentage breakup for A, B, C, D, E, I'm writing the values. 10%, 15%, 20%, 24% and 31%. Okay, these are the values. So instead of assuming 185 million as the total, I can assume, let's say, any variable or even any constant, any other constant, because no relation with these two totals. So you can start by assuming or changing this number 185 to even 100. Okay, you can change it to 360 degrees as well.
All right, you can change it to, you can consider it as 100x if you are not sure if you need to consider, if you can consider a constant or not. ठीक है, so कुछ भी consider कर लो. Total obviously इतना पता है कि 100 है, तो मैं 100x assume कर लेता हूं. ठीक है, so all these values will be 10x, 15x, 20x, 24x and 31x. जरूरी नहीं है x assume करना, ये मैं पहले बोल चुका हूं. Now these are all the values for year 2010. Now let's see what happened in 2015. Okay, A increases by 10%. So A का जो भी value था 10x is now the value. Okay, it increased by 10%. So this value increased by x. Wait, I'll just write the increase. Okay, so this value increased by x. Final value, it's totally your wish. लिखना है लिखो, नहीं लिखना जरूरत नहीं है. For B, it increased by 20%. 15x. What will be 20% of this value? 20% will be 3x. So 3x. Then for C, it increased by 30%. That means 6x. For D, the sales decreases by 50%. Careful, don't increase it. Decrease by 50%. So decrease by 12x. And for E, there is no change. So minus nothing. Let's see what will be the change in total value. So earlier it was 100x. The net change here is x, 3x and 6x. That is plus 10x minus 12x. So minus 2x. So the total has now become 98x. All right, the total has now become 98x. Now you can find out the central angle for any of these values. Central angle किसके लिए पूछा हुआ है? Central angle formed by B. Now the share of B is 15x plus 3x, that is 18x. 18x is the share out of a total of 98. Fine. Now you can calculate the angle. Fine. बहुत easy है. So angle find out करना है. Simple calculation. B का शेयर कितना है? 18x out of a total of 98x multiplied by 100 करेंगे तो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा. मल्टीप्लाई बाय 360 करोगे तो एंगल में कन्वर्ट हो जाएगा. ओके, सो व्हाट इज दिस वैल्यू कमिंग आउट? कितनी आ रही है ये वैल्यू? सर कितनी आ रही है वैल्यू? कैलकुलेटर से कर सकते हैं इसे या फिर ओरली भी आ जाना चाहिए? आ ही जाएगा. करीब आ रही होगी. बच्चे कह अगर रहे यहाँ से अप्रोक्सीमेट करते 90 होता तो 72 आती. 90 से बड़ा है तो अगर यहाँ नीचे 92 होता तो 72 आती. 90 होता तो अगर मैं उल्टा कर 90 होता तो नहीं, हम इसको 99 ले लेते हैं. 99 तो 9 कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना, तो 2/11 आ जाएगा. इतना भी अप्रोक्सीमेशन नहीं सर, वैसी क्वेश्चन में लिखो है अप्रोक्सीमेट एंगल और थीटा क्वेश्चन है. तो शुभेंदु से 66.12. ठीक है, आगे तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो वट एवर इज द आंसर. 66.12. अमित शाह ने बोल दिया आप 66.12. सो मिस्टर अमित शाह, तो 66.12 तो लिखना पड़ेगा आपको. ठीक है, सो वट एवर द वैल्यू इज, this is not important. Calculation right now is not important. Important is to understand the idea behind this. ठीक है, so approximate answer will be 66. Most of you have given the answer. Let's move on to our next question. Question number 4 related to this. अब next two questions बहुत मजेदार होने वाले हैं. Now the sales of company C in 2012 is 53.28 million. Then what is the CAGR, compounded annual growth rate, of the sales of company C from 2010 to 2012? You are given options in this case. $54. बेस जो है मेरा 2% से कम हो रहा है.
नहीं, हाँ, अगर ऑप्शंस दिए होते तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन 2% से बढ़ा दो, हाँ तो 1 बढ़ जाएगा तो 66 के आसपास है। बट ऑप्शंस अगर दिए होते तो ज्यादा मतलब इजीली हम अप्रोक्सीमेशंस कर पाते। सिंपल का मतलब है कि वो लास्ट स्टेप बचता, वो तो करना ही पड़ता कि वो तो हाँ इतना तो करना ही पड़ता। लास्ट स्टेप जो कैलकुलेशन आप बोल रहे हैं उसमें टाइम सेव हो सकता है। सब सेम आंसर दे रहे हैं इसका। ओके, ऑप्शन ए 44%, वंडरफुल, लवली, गुड। सबने ये दिया, नहीं, एक ने डी अब दिया, दो दिया ने, है। कुणाल ने डी दिया है आंसर, और के कुणाल ने भी डी दिया है। अंकित चौधरी सेज डी। ओके, गौरव सर, आपका एमबीए कॉलेज कौन सा था? मेरा कोई एमबीए कॉलेज नहीं है, मतलब तो झूठ बोल रहे हो। आई एम दिल्ली से पढ़े हैं, आई एम दिल्ली से। Explain it, sir. Yes, Ankit, we'll explain it. If the sales of company C in 2012, fine. अब CAGR find out करना है from 2010 to 2012. So for company C, 20% of this value, बहुत easy number है, 20% of क्या हुआ सर? ओके, तो बदला ले रहे हो मेरे से। चलिए, 20% ऑफ 185 कितना होगा? इट विल बी 37। दिस वैल्यू इज इन 2010 एंड नाउ दिस वैल्यू हैज बिकम 53.28 इन द ईयर 2012। ओके, नाउ एक टर्म आया यहां पे, डेफिनेटली सबको पता होगा, CAGR, कैट 4 दिन बाद है। सो CAGR कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। सो कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट कैन बी, क्या हुआ, कौन दिल्ली में कौन सा स्पेशलाइजेशन किया है? आई एम दिल्ली, बता दो क्या पढ़ा है। ओके सर, फिशरीज, कैट है सर बच्चों का। तो 2010 में 37 वैल्यू, 2012 में 53.28। विल हैव टू फाइंड आउट द कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट इन दीज 2 years। ओके, सो प्रज्ञा हैज रिटन द फॉर्मूला 144 upon 100 स्क्वेयर रूट ऑफ दैट -1। सो प्रज्ञा 144 कहां से आया, ये सबसे पहले बताना पड़ेगा तुम्हें। हाउ डिड यू गेट 144? तो ऑप्शंस, अगर आप ऑप्शंस देखेंगे, सर आपका भी कॉलेज पूछा जा रहा है। मैं आपके बगल में ही तो था। एक ही तो दीवार थी हमारी। I'm gonna get 95%, ठीक है। कृष्णा सेज HR, नहीं यार, HR, आई एम दिल्ली से, HR से किया आपने। ओके, चलिए यहां पे आते हैं वापस। नाउ ऑप्शंस गिवन है, ठीक है। हाउ कैन वी यूज ऑप्शन? अंडरस्टैंड CAGR क्या होता है, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। इट कैन बी कंपेयर्ड विद कंपाउंड इंटरेस्ट वाला जो फॉर्मूला होता है उससे। सो ईयर ऑन ईयर देयर विल बी अ परसेंटेज चेंज ऑफ 44%, राइट, और 15%, 6.63% और 20%। दीज आर द 4 ऑप्शंस। सो शुड वी बी यूजिंग ऑप्शंस हेयर? प्रज्ञा ने बोल दिया 53.28 डिवाइडेड बाय 37। प्रज्ञा, इट विल बी 1.44, 144 नहीं होगा, इट विल बी 1.44 आई बिलीव, राइट। ओके, चलिए, सो अगर ऑप्शन से देखना है, ऑप्शंस अगर मैं देखता हूं तो ऑप्शन ए 44% है ना। 44% अगर सक्सेसिवली 2 years के लिए इंक्रीज होगा, इफ आई इंक्रीज एनी वैल्यू बाय 44% सक्सेसिवली फॉर 2 years, then the change will be more than 100%. 44 plus 44 plus 44 into 44 upon 100. Change will be more than 100%. Right? A plus B plus AB upon 100. अभी फॉर्मूला देखा था हमने. Is the change more than 100%? No, the change is not more than 100%. Right? Change 100% से ज्यादा नहीं है. So answer cannot be option A. Right? This is one way you can treat this. Or you can calculate the approximate percentage change here. Approximately percentage change, अगर calculator नहीं है, वैसे तो calculator है तो उससे exact percentage change भी calculate कर सकते हो. Right? So यहाँ पे I would recommend in CAT to use the calculator. बहुत easily आ जाएगा. ठीक है? So 53.28 divided by 37. Pragya has given the answer. Sir, कितना आएगा ये? 1.44. 1.44. Naveen sir is calculator. So 1.44 आ गया, right? So this
final value upon initial value has come out to be 1.44. Okay, so we can say that net in 2 years there is an increase of 44%, but this will not be the answer. Okay, this is not an increase in 1 year, but this is an increase in 2 years. So you will have to find out out of the 4 options, if I'll take annual percentage increase of any one of these values, which value will give me a net percentage change of 44% after 2 years. ठीक है, 44 ऑलरेडी एलिमिनेट कर दिया, 15% से अप्रोक्सीमेटली भी कैलकुलेट करोगे, 15 प्लस 15 into 15 is 2.25, 225 divided by 100, 2.25. So this value is not equal to 44. Okay, 6.63 बहुत कम आएगा value. Obviously 15 has reached up till 32 point something. So अगर उससे नीचे वाला आंसर ले लेंगे तो it can never reach 44%. 20 सबको पता है, 20 plus 20 plus 4 is 44. So the correct answer should be option D, that is 20%. Okay, fine. CAGR, compounded annual growth rate. Okay, another type of annual growth rate is simple annual growth rate. Okay, SAGR बोलते हैं जैसे हम, ठीक है ना? Okay, so let's move on to the last question of this set. A quick answer is what I want for this one. For which of the following, for which of the given companies, the annual growth rate AGR is the highest? सरल सर आंसर देंगे इसका. For given period? हाँ, for the given period, yes. From 2020 till 2020, sorry, 2010 till 2020. Cool Life is asking, sir, +4 क्यों? Simple Cool Life, successive percentage change apply किया था first 2 questions में जो explain किया. अब नवीन सर पे आ गए हैं अंकित. सर नवीन सर, आपने कौन से कॉलेज से किया है? Sir, you wrote any competitive, आपने कोई competitive exam लिखा भी था? My inspiration you sir. Sir, you are Ankit's inspiration. नवीन सर नहीं है inspiration? नहीं है, इंस्पिरेशन है आप. ओके, ऐसी पोज के. फाइन. ऑप्शन ए सर, नवीन सर. टीचर्स ना फेलियर होते हैं. अच्छा गाइस, गिव मी ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 और 4. गिव मी ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 और 4. गिव मी ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 और 4. कृष्णा कह रहा है ए से हुआ. आई एम आगरा. गिव मी ऑप्शन 1, 2, 3 और 4. वो फिर पूछ रहा है, बता दो एक बार. अब इंस्पिरेशन है. ओके, सो ऑप्शन 2, ऑप्शन 4, ऑप्शन 1. फाइन, गुड. ओके, नाउ ऑप्शन 1 एक बार स्टडी करते हैं. कुछ अलग ही ऑप्शन बनाए, नवीन सर ने ऑप्शन बनवाया है मेरे से. ओके, कैन नॉट बी डिटरमिन्ड as the type of annual growth rate is not given. Right? Do we need annual growth rate? Yes. We need annual growth rate. Sarat sir बोल रहे हैं. Naveen sir, do we need annual growth rate actually? Like type of annual growth rate. Is it compounded? Is it simple annual growth rate? Do we need that? Let's check it out. Now we can say that for any of these values, if I'm calculating for CAGR or SAGR, राइट, CAGR और SAGR कुछ भी कैलकुलेट कर रहे हैं, और नेट भी लिख देता हूं मैं, नेट परसेंटेज चेंज. नाउ द कंपनी फॉर विच नेट परसेंटेज चेंज विल बी द हाईएस्ट, फॉर द सेम कंपनी CAGR will be the highest, and for the same company SAGR will be the highest. Okay, this is a simple rule. So out of these 5 companies which are mentioned, इनमें से जिसका भी net percentage change higher है, you don't have to calculate this thing. ठीक है, हम already calculate कर चुके हैं net percentage change, so don't have to calculate CAGR, you don't have to calculate SAGR. कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है. जिसका नेट परसेंटेज चेंज हायर होगा उसी का ही CAGR एंड SAGR भी हायर होगा. ओके, सो फर्स्ट ऑप्शन will not be the answer. We can determine this thing even in absence of the type of annual growth rate. Fine.
बीट सेमी एनुअली, बीट क्वार्टरली ग्रोथ रेट, कुछ भी फाइंड आउट करना है, everything will be higher for the company for which net percentage change will be the higher. By yearly करना है, after 3 years करना है, it's totally up to you. Okay? सबके लिए net percentage change higher देखेंगे. Now net percentage change higher किसका था? A. For A it was 56% we have seen in the first second questions. So A was the highest. So answer for this question will also be option 2, that is A. Okay? Simple, और कुछ calculation करनी नहीं है यहाँ पे. CAGR for, okay, गौरव ने CAGR for A, B, D भी कैलकुलेट कर दिया. जो भी होगा आंसर तो एक नहीं, बट क्या पता आप एक का CAGR दूसरे के SAGR से कंपेयर कर रहे हो, ये कहाँ लिखा दोनों का एक ही टाइप का AGR लेना है. सरल सर ने कुछ अलग ही आंसर दे दिया है, लेकिन ऑब्वियसली क्वेश्चन में लिखा है तो हर टाइप एक ही लेना पड़ेगा. नहीं, वो क्यों जरूरी है? अंडरस्टूड है ये He तो. did not say that the same type of AGR is highest for which of the companies. So CAGR of A might be lower than the SAGR of सर B. अगर यहाँ पे कोई भी चीज होती, लेट्स से S होता तो सबका S ही लेते. एग्जैक्टली, तो ऐसे ही लेते. हाँ. C होता तो C ही लेते. हाँ. कुछ नहीं लिखा तो फिर कैसे कोई भी लेंगे? सेम कुछ भी ले सकते हैं. कांस्टेंट सेम चीज लेनी नहीं, we can take any of the two. How can you say that? सर आपको भी पता है कि सेम ही लेंगे. ओके, चलिए. सो दैट्स इट. अब किसका नंबर है? नवीन सर का नंबर है, सरल सर का नंबर है. चेक करते हैं. सरल सर आप ये आएंगे. बात जगीरा वापस. ओके, आइए नेक्स्ट सेट. बहुत सारा डेटा है इसमें. हाँ जी. सो आई एम बैक. सो रीड इट एक बार, सारा पढ़िए एक बार. क्या करे दानिश? Do you use VARC section in CAT by switching section to solve question and then come back to LRDI Q and mark the answer to take advantage of time? सर दोबारा पढ़ो. पता ना क्या कहना चाह रहे. VARC section in CAT by switching section to solve questions and then come back to the LRDI and mark. You actually cannot go back to any other section, Danish. I mean, at one point you can just write one section. Okay, so Danish, at any read it time out. you cannot submit your section as well. So 40 minutes बाद अपने आप ही section submit होगा. Okay, so you cannot even submit the section before 40 minutes. हाँ जी. So now it's a question about 4 gamblers. Gambler back. I'm not a gambler, आती सर. I'm not a gambler. Katappa is. हर साल गोवा क्या करने जाते हो फिर आप? घूमने बीचेस पे. हर साल हर साल फिश खाने. फिश खाने. सर गैम्बलर नहीं सर, गमला. चलो जी एक बार पढ़ो सब लोग मिलके एक बार. IFT का लग रहा है क्वेश्चन. नहीं, क्वांट का होता तो बोल देते IFT का है, बट LRDI तो सबका ऐसा ही होता है. LRDI is generally this lengthy. This lengthy in CAT as well. In CAT as well. CAT, Z हर जगह. हाँ जी. ट्राई दिस सेट ऑल ऑफ यू. जोकी हैं सर, खिलाते हैं सबको. गैम्बलर जोकी होता है वो. डीलर. वाली मच्छी. कुछ गड़बड़ हो गई है सेकंड हाफ के बाद. क्या गड़बड़ हो गई है शिवराज? है उनको की बात करो. सेकंड हाफ के बाद क्या दिक्कत होगी? This question doesn't give the vibe that I should do it. Okay, vibe नहीं आ रही प्रज्ञा को. क्योंकि आरसी की वाइब दे रहा है दरअसल. This question सर is IFT actually में given. इंटरनेशनल बिजनेस के कॉलेजेस हैं ना. IFT में इंटरनेशनल बिजनेस के कॉलेजेस हैं ना. Varun, IFT is the college itself. And IFT has international business as its specialization. It's a nice set, Pragya. Try it. You are a studious kid. I know that you can do it.
Don't know where to start. Don't say that, अकेल खेलने वाले क्रैक कर लेंगे इस सेट को. ना ये ऐसा गेम कोई नहीं खेलता दीपांकर जिसमें आप ऐसे डबल हो रहे आदमी को स्नैक्स भी खिला रहा उनको. नॉट अंडरस्टैंड हाउ कैन आई स्टार्ट हियर. शुभेंदु भी ऐसा कह रहे हैं. पीने से सबका पैसा भी ले लिया ना. पैसा भी लूट ला सारा. आप ही हो गए. आई एम नॉट ए गैम्बलर. MBA. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेडिंग. आई थिंक ट्रेडिंग नहीं हो, ट्रेड है बस, इतना फर्क है. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड. Yes, is anyone able to do it? I mean, are you trying it or should we start doing it? करना शुरू करें. After that, Navin sir will be there with you. इस सेट के बाद. Where to start from? Not able to know. Okay. Answer digit में आएगा क्या? हाँ digit में आएगा. IIT और IMM में बेस्ट. अच्छा वो शायद IIM है, आपने IMM लिख दिया हरीश. मैं तो सोचता रहा कि कॉलेज कौन सा IMM. स्टार्ट ही नहीं हो पा रहा है सर. कहाँ से स्टार्ट करें? प्लीज डू इट. क्वेश्चन स्टार्ट सर. कर दो स्टार्ट कर दो. ये सर स्टार्ट करिए. सब लोग यही कह रहे हैं. नवीन सर माई मोटिवेशनल यू. सर मिल लेना एक बार लड़के से. 3-4 बार बोल चुका है. अंकित चौधरी से. एक तो कॉलेज बता देना, एक कौन से पेपर आपने दिए वो बता देना. प्लीज स्टार्ट. क्वेश्चन दिखाओ. एक्सप्लेन. मेरा 30 ml ग्लूकोज का मन कर रहा है इसको देखने के बाद. ओके, नाइस निकनेम ग्लूकोज. क्या नाम दिया तुमने उसे? चलो जी. What is the cost of one round of snacks? What was the money that P had with him at the beginning? What was the money that R had with him at the beginning? And what was the total amount spent on snacks during the evening? हाँ, आप ही कर दो. मेरे ख्याल से अब मुझे लग रहा है थक गए हैं सब लोग ना. अब इनको लग रहा है एंड आ रहा है, तो अब कुछ मत करो. Guys, you are not allowed to get tired. 5 दिन बाद क्या है ये सोचो सब लोग. Gautam, this is the only information that we have. Amit Shah is also a big fan of it. वो भी लिख रहा है. सर थोड़ी देर बाद नरेंद्र मोदी भी फैन बन जाएगा आपका. ये कितना टाइम लगेगा? 5 जा रहे हैं. सिमरन कह रही है थर्ड का आंसर तो सी है. ओके, वरुण ने तीनों आंसर दे दिए. DAC. ओके, 40, 25 P और 98. सिमरन कह रही है नन ऑफ दीज. CBD नन ऑफ दीज. अच्छा, 3 का ही आंसर आया. समझ नहीं आया क्वेश्चन. बोथ हैव सेम हेयर स्टाइल. कौन बोथ हैव सेम हेयर स्टाइल? अमित शाह और आपके बारे में बात हो रही है. तुक्का मारे सेट में सर. नहीं सर, नॉट टायर्ड बट नॉट दिस क्वेश्चन. चलो जी, लेट्स स्टार्ट डूइंग इट. करना शुरू कर देना. तो इसको करें कहाँ पे? जगह नहीं छोड़ी आपने. यहाँ कर दूं है ना. सो PQSNR ऐसे लिख देता हूँ. उसका रीजन है बेसिकली, वो मैं बता दूंगा उसके बारे में ऐसा क्यों कर रहे हैं. ठीक है, let's do this. When the 4 gamblers PQRS sat down for their usual game of poker, each of them placed their stake money. After a number of hands, P found that he had exactly double the money with him, with which he had started. So initially whatever money was there with PQRS, थोड़े टाइम के बाद P का पैसा डबल हो गया. This is what he's saying, that P's money got doubled. It was his turn to provide the evening refreshments and he bought the first round of snacks. So जैसे ही वो जीत गया, he got doubled his money. तो ऐसे में उसका काम था that refreshments आप लेके आएंगे, तो वो चखना लेके आ गया. ठीक है, ऐसे कह लीजिए आप. Okay. After a few more hands, P exactly doubled the money he had left after buying the first round and he then bought the second round of snacks. तो सारे पैसे चखने में उड़ा दिए. ग्लूकोज कहाँ से आएगा? तो उसका थोड़ी देर बाद पैसा दोबारा डबल हुआ and he again bought the refreshments for the second time.
Thereafter he repeated the process, he exactly doubled and bought the third round of snacks. तीसरी बार फिर से ऐसा हुआ. In the fourth session, P again took every rupee his three opponents still had on the table and found that he had exactly doubled the money he had left after buying the third round of snacks. So अब उसका सारा पैसा P has taken from Q, R and S. Now all the money is with P and still his money got doubled. He then bought a fourth round of snacks which took the entire money he had. And now when his money got doubled, this went to completely for the fourth round of snacks. He is left with no money at the end. Now each of the 4 rounds of snacks costs precisely the same amount, and R begin the game with a sum which is between 50 and 100, which was exactly half the total which Q and S had between them at the start. Okay, so R के पास initially Q और S से आधा पैसा था. Okay, तो फटाफट इसको करते हैं. I'm sure you would be able to understand this set fast. शुरू करता हूं मैं. Let us say initially R had R rupees. Initially R had R rupees, which was half of Q and S. So Q and S had 2R rupees. And let's say P had P rupees initially. Okay, everyone? So P had P rupees. Q and S together had 2R. I don't want to know कि Q का कितना, R का कितना, S का कितना. लेकिन दोनों के पास मिला के 2R था और R के पास R था, because Q और S का पैसा जो था that was double that of R. तो उसको हम लोगों ने R ले लिया यहाँ पे. Now what? Now he got his money doubled. That means his money became 2P. And then he bought one round of refreshments. Let's say that round of refreshments is costing X K rupees. Or yeah, X मान लो. Refreshment is equal to X. So P had 2P rupees now because his money got doubled and he purchased a round of refreshments. So now the money left with him is 2P minus X, right? जल्दी से एक बार सब लोग बता दो, ये समझ आ गई मेरी बात? पैसा उसके पास P था. This got doubled. It became 2P. He purchased a round of refreshments. X rupees का refreshment था, वो जेब से निकल गया. So now he is left with 2P minus X. This is the money that he is having at the end of the first round. First round के end पे. Now he is saying after a few more games उसका पैसा फिर से double हुआ. And he again purchased the refreshments. So his money got doubled again. That means it became 4P minus 2X. And he again bought a refreshment. That means now the money with him is 4P minus 3X. First of all, 2P minus X का double हुआ, 4P minus 2X बना, और उसमें से X rupees फिर refreshment की तरफ चले गए. So now he is left with 4P minus 3X. Once again his money got doubled, so it became 8P minus 6X. He again bought a round of refreshment, so now he is having 8P minus 7X, and the fourth time, once again his money got doubled, so 16P minus 14X, again a round of refreshments, so finally he is having 16P minus 15X after fourth round of refreshments. लेकिन वो कह रहा है उसके बाद तो पैसा ही नहीं बचा. It took the entire money he had, so finally the money left with him is 0. This gives me 16P is equal to 15X. This is the first information that we are having. I hope ये सबको समझ आ गई होगी बात. फिर रिपीट कर देता हूं. Initially they had P rupees, 2R rupees and R rupees. Then his money got doubled. It became 2P. He purchased a round of refreshments of X rupees. Money left is 2P minus X. Once again the money got doubled. That is 4P minus 2X. He purchased a round of refreshments. So the money left is 4P minus 3X. Once again the money got doubled, 8P minus 6X. He again purchased a round of refreshments, so 8P minus 7X. फिर से double हुआ, फिर से एक round of refreshments लिया. The money left is this, but finally it should be 0, क्योंकि question कहता है ultimately कोई पैसा बचा ही नहीं उसके पास. So 16P is equal to 15X is the final thing that we are having. First thing. Second, the total money with all these people initially was P plus 3R. ये सबसे important step है. The moment you get it, you get the complete set. The total money with all of them initially was P plus 3R. And finally the total money with them is 0. Because QRS ने सारा पैसा P को दे दिया, उसने refreshment में उड़ा दिया. They have no money with them. So if no money is there with them, where did all that money go? That was spent in purchasing those refreshments
4 times. तो जो 4 बार रिफ्रेशमेंट्स आपने लिया है ना, दिस x रुपीज हियर, दिस x रुपीज हियर, दिस x हियर, दिस x हियर, ये चारों x मिलके p प्लस 3r के इक्वल है. ओके, ऑल दीज 4 x's आर इक्वल टू p प्लस 3r. सर 3x, 7x, 15x में थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है. वरुण, 2p माइनस x का डबल लोगे 4p माइनस 2x आएगा, उसमें से x रुपीज रिफ्रेशमेंट का माइनस कर दो, माइनस 2x माइनस x बिकम्स माइनस 3x. उसी तरीके से इसका डबल करोगे 8p माइनस 6x, उसमें से फिर रिफ्रेशमेंट माइनस कर दो तो माइनस 6x माइनस x माइनस 7x, और उसी तरीके से 15x भी आया इधर. ओके, सो फाइनली आई हैव p प्लस 3r इज इक्वल टू 4x. बट p कितना है यहां से? इट इज 15x बाय 16. आई कैन पुट इट हियर, जरा पुट करो. 15x बाय 16 प्लस 3r इज इक्वल टू 4x. इफ यू सॉल्व इट, इसको करके देखो, इट गिव्स यू r इज इक्वल टू 49 by 48x and your job is done. R is equal to 49 by 48x. कैसे काम हो गया? यहां से R began a sum with an amount between 50 and 100. अगर 49 by 48x है, it has to be a multiple of 49 and the only multiple of 49 in this range is 98. 50 से 100 के बीच में R की वैल्यू आनी है, और R की वैल्यू यहां के हिसाब से 49 का मल्टीपल आनी है, तो वो 98 ही आ सकती है. और वो 98 कैसे आएगी? इट विल बी 98 व्हेन यू टेक x एज 96. सो वन वैल्यू इज x इज इक्वल टू 96. जैसे अब x को 96 लोगे, 48 से 96 2 पे कैंसिल आउट होगा एंड r वुड बी इक्वल टू 98 देन. एंड इफ r इज 98, x इज 96, आई कैन पुट इट हियर एंड गेट द वैल्यू ऑफ p एज वेल. 96 से कैंसिल आउट होके माई p विल कम आउट टू बी 90. सो अब आपका हर क्वेश्चन आंसर हो जाएगा. p is 90, r is 98, x is 96 and the whole job is done. बताओ जरा एक बात, समझ आई कि नहीं? बच्चे ताली बजाओ. सब बच्चे ताली बजाओ, गौरव सर कह रहे हैं. Yes, is it clear to all of you? Not that difficult set. मेरे ख्याल से अब नहीं लग रहा होगा उतना मुश्किल था जितना शायद करने से पहले लग रहा था. Somehow ये वाला स्टेप एक तो स्ट्राइक नहीं करता कि जितना पैसा था सारा का सारा वो 4 रिफ्रेशमेंट्स के बराबर है, और ये प्रोसेस को इतनी मुश्किल भी नहीं थी. दिस कुड हैव बीन डन बाय ईच एंड एवरीवन. ये तो शुरुआत कर ही सकते थे. ये हम सिंपल इक्वेशंस के क्वेश्चंस में भी ऐसी चीजें हमें करते हैं. जनरली लगता था 4 वेरिएबल हो जाएंगे, p q s r, और उसके बाद इतनी सारी इक्वेशन. आई डोंट नो वेदर आई वुड बी एबल टू सॉल्व इट और नॉट. ना सिंपल सेट, आई मीन करने के बाद तो ऐसा ही लगता है कि बहुत आसान सा है, बहुत आराम से हो जाता है. अब इजीली आंसर हो जाएंगे. चलिए, लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चंस. सो p90, r98, x96, p90, r98 and x96, ये सब पता है तो वी कैन आंसर द क्वेश्चंस नाउ. ओके, घर वाले बावला समझेंगे सब सारे ताली बजा रहे. चलिए, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ वन राउंड ऑफ स्नैक्स? One round of snacks is 96 rupees. The answer for the first question is option A. What was the money that P had with him at the beginning? That is equal to 90. That is option E. What was the money that R had with him at the beginning, which is equal to 98? And what was the total amount spent on snacks? 4 बार snacks लिए हैं, 96 into 4. 384. That is 384. So these are the 4 questions of this particular set. Okay. एग्जाम में तो लगेगा कि खो ही जाएंगे क्वेश्चन में. पीयूष, कई बार जो है ना शक्ल से लगता है सेट की शायद इट इज डिफिकल्ट, जैसे आपको लग रहा होगा बहुत लेंदी है और इसके अंदर बहुत ज्यादा नंबर्स नहीं हम लोगों को दिख रहे. हाउ डू वी स्टार्ट विद इट, राइट? व्हाट डू वी डू? सो व्हेन यू स्टार्ट इट, धीरे धीरे करके चीजें को पता लगने लगता है. हर चीज में तो ऐसा ही होता है. सो इट टेक्स टाइम टू अंडरस्टैंड देम. इजी है, कोई डायरेक्ट पॉइंट नहीं था तो मन नहीं किया. आई एग्री. डायरेक्ट पॉइंट से मेरा मतलब है आपको नंबर्स नहीं दिख रहे. यू आर नॉट एबल टू सी कि अच्छा इसको ऐड कर दे, सब्ट्रैक्ट कर दे, कुछ दिखता है ना, उसमें सारे वर्ड्स दिख रहे हैं तो क्या लिखें, कैसे शुरू करें, दैट वाज द प्रॉब्लम. बट 50 to 100 वाज ए बिग हिंट, जो ये बता रहा है कि आपको जो भी नंबर्स मिलेंगे वो आर से मिलेंगे. रीच दैट आर. ठीक है, आर तक पहुंचो कि आर किसी ना किसी का कैसे मल्टीपल बनेगा, थ्रू दैट यू विल गेट द आंसर. ओके. QSR मनी गॉट 0. ऋषभ, इट वाज गिवन एट द एंड. ये उसमें लिखा हुआ था, अगर आप एंड में देखोगे ना, ये देखो, ड्यूरिंग द 4th सेशन P took every rupee his 3 opponents still had. उसने सारा पैसा उनसे ले लिया. इसका मतलब उनका पैसा जो था फाइनली वो 0 हो गया था QSR का. क्या करना है? अब इजी पीजी लग रहा है. अच्छा, ओके एवरीवन, सो दैट वाज द लास्ट सेट फ्रॉम माय साइड. अब आएंगे आपके प्यारे कटप्पा सर, नवीन सर और
अब ये बताएंगे आप। आओ सर। गुड इवनिंग एवरीवन। अब एक काम करो, सारे जाग जाओ, वरना अगर मैंने गा दिया ना तो ऐसे ही जागना पड़ जाएगा या लंबा सो जाओगे, फिर सुबह तक उठ ही ना रहे। कहीं कैट तक ना उठे। हाँ, इसलिए मेरे को गाने का मौका ना दो। आपकी आवाज में एक बार इंडिया की विन पर कमेंट्री हो जाए लोगों से, वो आपको बहुत बाद में लाइक्स और ये सेट है। स्टार्ट। सर लाइक्स 443 है, बोलो उनको 500 तक तो लेना। 500 कम से कम लाइक्स चाहिए। कम ऑन एवरीवन। मैं दिखा नहीं रहा सेट, पहले लाइक्स करो। वसुंधरा इज लाइक कि सर नहीं हो रहा, अब गा ही दो आप। लाइक्स लाइक्स लाइक्स। व्हाई डिड यू किल बाहुबली पूछ रहा है। चलो चलो लाइक्स, ये कम किए जा रहे हैं। 444 का 443 कर दिया। आप क्या आज भी शेव करके आए? हाँ, अनिमलिक आपको सुनना चाहता है। अंकित पूछ रहा है कि व्हेन विल नवीन सर कम, बता दो उसे। कौन? अच्छा अंकित। अंकित, आई एम ऑलरेडी हियर। अंकित, Were you नवीन expecting सर है somebody तुम्हारे else? सामने। किसी और को समझ रहे हैं मुझे लग रहा है नवीन सर। चलो, look at this set. It's a very easy one. So we're like at the end of the session, we will not trouble you a lot. So we have Geo Sudoku is a type of Sudoku game where instead of letters, some figures are provided. The only rule is that each figure should occur exactly once in each row and each column. The unfinished 6x6 Sudoku board is given below. Rows are numbered from A through F. And columns are numbered 1 through 6. Figures and their names are given. And this is incomplete Sudoku. So अभी मजा आने वाला है, तो जल्दी से इसको कॉपी करो। 6x6 का मैट्रिक्स। Start filling in the initials or the figures, whatever you feel like. और इस Sudoku को complete करो। Come on, quickly draw this figure. 3 quickly to draw 4 this minutes grid. I'll give. उससे ज़्यादा नहीं. In case you guys are not able to see the names, this circle is called goal. तो गोल को गोल बोल रहे हैं, चौकोर को चौकोर, त्रिकोण को त्रिकोण, सितारा को सितारा, दिल को दिल और क्रॉस को सूली। कृष्णा कर दो यार, मन नहीं कर रहा, क्या हो रहा है? Come on, Krishna, last few minutes. Anita, You can do it. This Go can't ahead. be the excuse, right, Anita? In the exam, if you get a question on Sudoku based, Minesweeper based, क्रिकेट का क्वेश्चन आज आप ये थोड़ी बोलोगे वहां लिख दोगे, लिख भी नहीं सकते क्वेश्चन पेपर और आंसर, मतलब वो रफ शीट तो वैसा नहीं है कि हम क्रिकेट नहीं देखते। Joydeep, don't use the figures, use some initials. A, B, C, D, E, F, you can write some initials, right? So obviously, when you're going to copy it from the screen onto your rough sheet, you shouldn't be drawing the figures. Square के लिए use some variable, some letter of your own. Circle के लिए अलग, heart, triangle, then you got a star and then a cross. Use different letters for those. And then fill it up. मन कर रहा है 1, 2, 3, 4, 5, 6 लिख लो, numbers लिख लो. Make sure that everywhere there is a square. If you have taken that as a 1, put that as a 1. Okay, thank you, Krishna. Whenever someone has completed, type in done in the chat. देख लो भाई, लास्ट का 1 आवर है, उसके बाद फिर ये समय आएगा नहीं, वो फन खत्म हो जाएगा ना फिर, जो 2 दिन से मजे कर रहे हैं। हाँ, right, Gaurav. See, Gaurav, such a studious and
स्मार्ट पर्सन, कितना सीरियस स्टूडेंट है ये. हाँ वरुण, you can take letters. Those are not alphabets. Those are letters. You can take. Okay, Vasundhara has completed. Very good, Vasundhara. Pragya has also completed. Education world has completed. 23rd से 26 तक का क्या प्लान है हमारा? हम सेशंस लेते रहेंगे. Okay, Priyanshi has completed. Akhil has completed. Okay, so if you guys have completed, here are the 4 questions. So in case you do not remember, the columns are numbered from 1 to 6 and the rows are numbered from A to F. ठीक है, इसको लिख लो. Square is चौकोर, circle is गोल, heart is दिल, triangle is त्रिकोण, star is सितारा and the cross is सूली. Okay, and these are the 4 questions. सबके answers. चलो good. Siddharth has completed. Lavina has done. Pratyaksh, Krishna, Ankit. नहीं. Don't give me answers one by one. यार कितने चेक करूंगा? एक साथ ABCD के answers एक साथ in one message send it. Write all 4 answers in a single message. Option in terms of option A, C, D, A, like this. आपको कैसे पता पहले वाले का आंसर है? मुझे पता सी. सॉल्व कर दिया सर. टू गो. B, B, C, D. Varun has answered. Tejas, good. If you have completed, please go ahead and answer the questions, as in type in the options, the correct options that you think they are. B, B, C, D. 3 people. Abhilasha has said B, B, C, D. Suvendu says B, B, C, D. Sati says BBCD. Krishna says BBCD. So far, everyone has got the same sequence. Yash says first is option C. Okay. BBCD. B, B, C, D, Lavina. C, B, A, D, B, B, C, D, C, B, C, D, A, B, C. आप तो टंग ट्विस्टर कर रहे हो तुम लोग. C, A, B, C, Akhil. C, C, B, D, C, A, B, C. अब्बा डब्बा चब्बा. चलो बढ़िया. Okay, so which figure shall we start with? Square, right? Because that's the figure that you see at maximum places. So if you look at this square, we already have covered this column, we have covered this column, we have covered the next one, we have covered the next one. These 2 columns are still left with. Right, we don't have a square here. Now, तो erase करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा ना? नहीं. बार-बार उतना करना पड़ेगा. So these are already covered. These are already covered.
लाइंस ड्रॉ कर रहा था. So these are the places जिधर को we will be putting. These are the three places where we have to put squares. Out of these three, two places the squares will go, such that every row and every column has one square, right? So if I happen to put this square here, तो ये वाला भाई आपका रो खत्म हो जाएगा. And if you can't put a square here because then you will have two squares, right? So उधर square नहीं जा सकता in that particular row. So the only place this square can go is here and here. किसी कोई problem? Basic Sudoku है. Instead of letters we have got symbols. ठीक है. तो अच्छा चुड़ैल वाला हाथ नहीं चलेगा इसमें. ठीक है. So let's start filling in these squares. तो मैं इधर square fill कर रहा हूँ. Next square इधर जाएगा. Okay, so we have 1, 2, 3, 4, 5, 6 squares हो चुके हैं cover, right? Okay. अब जाते हैं किसी दूसरे figure पे which we find more number of times. Which is the next figure that we find more number of times? Do we find circles more? Do we find hearts more? सूली दिख रहा है 3, right? So we'll start with that. So we cannot put in any more cross along the row C as well as row E as well as row column 6. तो ये सारे के सारे occupied है. Similarly, column 1 and column 3. So the places we can put suli is going to be either here or यहाँ इसके लिए. और fourth वाले के लिए we can have it over here or we can have it over here. Fifth में we are going to have it over here. That's it. And we can't have it over here. This is already taken by square. This is already content. So this gives us that out of these 5 places, if I look at the rows and the column, ये fifth वाले column and bth row में we are supposed to have these cross. नीचे square मिट के. Is it fine so far? Cross वाला place लेगा. If cross takes that place, that means in this particular column, this is the place where square cross will be put. If cross is put in F row, that means अब जो cross आएगा next, वो इस position पे जाएगा. Now, how many crosses do we have? 3 I have made and 3 were already present. 6 ये भी हो गए. Okay. अब फिर एक काम करते हैं. Do we have, okay, the other symbols are equal number of times, 2 to 2 times, right? So we will go after a row or a column which has got less number of empty cells, right? So if I look at this particular row, row D में, which are the 2 symbols that are missing? Row D में अगर आप compare करोगे all the symbols that we have, triangle is missing and a star is missing. एक triangle missing है इस row में और एक star missing है. Now, can we have a star as the last cell? यहाँ पे star रख सकते हैं? नहीं. Star is already there. So if star will not go, that means triangle will go. And if triangle goes there, that means star comes here. So we are done with dth row. Now, let's see if we have any other row with only 2 cells left. No. Do we have any column with only 2 cells left? Third column. Third column में which 2 symbols we are left with? We are left with a circle and we are left with a triangle. एक circle बचा है, एक triangle बचा है. Look at the last cell of third column. Can I put a triangle here? ये already triangle इधर को है. So I can't put a triangle here. So the circle will go here. That means the triangle will come here. Do we have any other column with more symbols? Fourth वाले में ही है. Which are the 2 symbols that we are left with? Triangle है, circle है, square है, cross है. So star and heart. These are the 2 symbols we are left with. Can I put a star here?
नो, स्टार इज ऑलरेडी देयर, सो इधर को आएगा हार्ट, इधर हार्ट आएगा तो वी विल हैव अ स्टार ओवर हियर. Let's move to the fifth column. In the fifth column, the two symbols that we are left with is, we don't have a circle and square, circle and heart. So we can't have a heart here. So you're going to have a circle here. So we are going to have a heart here. Sixth wale mein, the two symbols, two figures that we haven't done is circle and heart again, right? We can't have a heart here, so we will have a circle here, so we will have a heart here. अब ऐसे कवर कर लेते हैं, रो वाइज वापस आ जाते हैं. देयर इज ओनली वन सिंबल, एक जगह खाली है और एक ही सिंबल बचा हुआ है. कौन सा बचा हुआ है? सर्कल बचा हुआ है. इन दिस ऑल द सिंबल्स आर देयर एक्सेप्ट वन. विच सिंबल इज मिसिंग ओवर हियर? वी डोंट हैव अ ट्रायंगल. ओके, लेट्स लुक एट ई. The row E, what are the two symbols we are left with? We have a triangle and we have a star. Triangle already idhar hai. So we are going to only have a star over here. That means triangle will take this. अब आप ऐसे column में देख लो, there is only one symbol left. Which symbol we are left with? Star idhar missing hai. And look at the second column. Which particular symbol we haven't put here? Right? Simple. So people who have solved or who regularly, not very regularly, ऐसे नहीं कि डेली लेके बैठ रहे, पर अगर सॉल्व कर रहे होते हो तो उनको पता है कि कैसे जल्दी सॉल्व होता है. And that's a 9x9 matrix. This is a plain 6x6, right? Fine. So let's go to the questions. अच्छा, मुझे याद आ गया कि आप उधर से कर. Which cells are filled with sitara, as in heart? Heart में we have got, अच्छा sorry, हाँ, सितारा is star. So सितारा is A5, B4, C6, A5, B4, C6, A5, B4, अच्छा कलर चेंज करना पड़ जाएगा. So B4 इधर है नहीं, C6 इधर है नहीं, C6 इधर है नहीं, तो 4 लीजिए और आंसर. पूरा चेक करने का जरूरत नहीं है, राइट? वरुण, आइदर ऑफ दो, सुडोको भी और काकुरो भी पूछ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है. नाउ विच सेल सीक्वेंस रेस्पेक्टिवली डिनोट्स द पोजीशन ऑफ ए गोल? दैट इज अ सर्किल, अ चौकोर, अ स्क्वायर, अ त्रिकोण, अ ट्रायंगल, अ सितारा, अ स्टार, अ दिल एंड अ सुली. ओके, सो विल हैव टू चेक ऑप्शन बाय ऑप्शन, राइट? ये यहां पे टाइम कंज्यूमिंग है. ये ऐसे नहीं होगा ना, पीडीएफ है ना? हाँ, वापस जाना पड़ेगा. अच्छा, पहला वाला देख ले. पहला वाला, बैक टू क्वेश्चन. F3, F6, B3, B4. F3 सर्किल, F6 स्क्वायर, B3 ट्राइंगल, उसके बाद क्या था? B4, B6, F4. B4, B6 F4 and F4. सूली. ये तो चल रहा है, इसी में आ गया ना? गोल, चकोर, त्रिकोण. आई थिंक एक बच्चा कह रहा है कि सिर्फ एक गोल का ही चेक कर लो, उससे आइडिया मिल जाएगा. फर्स्ट ही गोल F3. हाँ, बाकी का चेक कर. एक B1 चेक कर लो. B1 इज गोल. E6 इज गोल. C5 एंड C5. क्या गोल से नहीं है, गोल मिलेगा. चकोर. हाँ, तो सितारा ने दिल था ना, मैंने उस सीक्वेंस के हिसाब से देखा. चेक कर एक बार, सितारा पहले है कि दिल पहले? इधर तो सितारा दिल है. व्हाट अबाउट दैट? B4 B सितारा दिल. हाँ, तो पहले में आ रहा है, फर्स्ट में आ रहा है. अनलेस एंड अनटिल कुछ स्क्रू अप कर दिया हो ऑप्शंस में, तब तक. ओके, विच पीसेस आर रेस्पेक्टिवली प्लेस्ड एज E1, C2, D6? ये चेक कर लेते हैं. C2, D6. So we have got E1 as triangle, C2 as triangle, and D6 as triangle. त्रिकोण. Sorry, त्रिकोण. Okay, while moving horizontal, left or right, vertical, above or below, or diagonally,
How many sequences of trikon sitara? Trikon sitara would mean a triangle and a star on consecutive cells exist on the board. So left to right, top to bottom या diagonal अगर जाना है, right? So triangle and star. So triangle and star हमारे पास एक कलर चेंज कर लेते हैं. ये एक हो गया, ये एक हो गया. 3, 4, 5, 6. ऊपर जाना नहीं, ऊपर नहीं जा सकते. अच्छा, टॉप टू बॉटम एंड लेफ्ट टू राइट एंड डायगोनल कंसेक्यूटिव. 6. अच्छा, लेफ्ट और राइट है. हाँ, और एंड नहीं है. ये भी हो जाएगा. 6 नहीं होगा, ये भी हो जाएगा. बट ये तो नीचे से ऊपर. हाँ, और लिखा हुआ है मैंने. above और below दोनों लिखो. above और below. So 7 हो जाएगा, राइट. So 7. चेक कर ले फाइनली. मैक्सिमम वाला ऑप्शन आ गया. 7 मैक्सिमम वाला ऑप्शन आ गया. So 7. Right? So I believe you guys will consider this as an easy set. It will hardly take you 5 minutes to actually fill up the table and a little over a minute to actually figure out the right options. होगा चिराग, कर दिया होगा. Okay, next. I believe last set for the day. Last LRDI set. We still have quant. Okay. So अभी तो ये last LRDI set है. ये देख के डर बैठ गया होगा, पर ये है बहुत easy. Go ahead, read it. Try to understand what these 3 tables they mean. There is an example given in the paragraph, the main part of the set, कि कैसे इसको interpret करना है. Okay? And trust me, after 8 hours, some of you are there since the morning 11 o'clock. In 8 hours, if you can still solve this set, तो यार आपके लिए 2 घंटे के लास्ट के 15-20 मिनट में आपको किस चीज का डर रहेगा? कभी रहेगा? आपको तो हमेशा रहेगा कि 10 मिनट बचे हैं, मेरा माइंड अभी भी एकदम परफेक्ट वर्क कर रहा है, आई विल बी एबल टू कोप अप विद इट. 15 मिनट में जहां लोग पैनिक कर रहे होंगे, 10 मिनट में पैनिक कर रहे होंगे, you'd be like 10 minutes, okay, fine. You'll have that much of stamina and attentiveness, right? तो ट्राई करो. Yep. हाँ अनीता, सब आ रहे, सब आते हैं. अब बस मनाना है कि उसमें से कौन सा आ जाए जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं. चलो. हाँ अनीता, हम उसी का कर रहे हैं. कल से हम वही कर रहे हैं. कैट का ही है वह. If you guys want to take a screenshot, please take a screenshot, because looking at the data, you will have no idea as to how to manipulate it, right? You will try to understand as to what the values are given and how they're represented. ये पता चलेगा आपको. आप डेटा का एनालिसिस कर चुके हो, पर अब इसको इंटरप्रेट करके हाउ डू यू हैव टू रिफाइन इट. फॉर दैट यू नीड क्वेश्चंस. सर जी, टेबल है सब. This is the first question. What is the number of managers of 9 years or less work experience and whose monthly salary doesn't exceed 2.35 lakh? बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस है. 3 टेबल है बस डराने के लिए, और कुछ नहीं है इसमें. देवांशी, अगर मुझे पता होता है कि इस टाइप का सेट आएगा कि नहीं, आपको नहीं लगता कि काफी मजे आ जाते? सबसे ज्यादा तो मुझे, फिर आप लोग को. नवीन सर ने इस बार का पेपर सेट किया है, कैट 2022 का. काश.
AP sum of common difference. हाँ ऋषभ, I remember that. By chance blood relation पूछते हैं क्या? Bunty on tour. No, they don't ask blood relations direct questions, but they may give you an LR based set where you know the people are not just like 5 friends, 8 friends. They may be a part of a family, and they will tell you the relationship as well as genders. तो वैसा वो मिक्स करके पूछते हैं, बट नॉट टिपिकली ब्लड रिलेशन बेस्ड सेट जो कि नॉर्मली आप लोगों ने दूसरे एग्जाम्स में देखे होंगे. कैट जैट में वैसा नहीं पूछते हैं डायरेक्ट. Okay, Shreya, yes, it is cumulative. 45 most common answer option 45 is the answer. cannot be उसमें तो determined. कुछ है नहीं ना. सी आ जाओ जरा सर. अरे आ जाओ ना, आ जाओ. अरे मेरे को आपको वो एज ए डमी यूज करना है. अच्छा, मैं आ जाऊं. Okay. हाँ जी. हाँ, आप उधर खड़े हो जाओ, उधर मुंह करके. नहीं, आप थोड़ा इधर ही रहो, लेकिन उधर मुंह करके खड़े हो जाओ. ये क्या हो रहा है? Suppose these are 100 people standing in a queue. He is the first guy. I am the 100th guy. Okay, फिर ऐसे खड़े होते हैं. हाँ, ये पहला बंदा है क्यू में, मैं 100th हूँ. Right. The person who is standing at the front has got lesser number of years of experience, and the person who is standing at the rear has got more number of years of experience. And if I forget about this, then the monthly salary of the person who is standing in the front has got lesser as compared to the person who's standing at the rear. Okay. And if I forget now about monthly salary, and if I talk about age, then the person who's standing in the front has got a lesser age as compared to the person who's standing at the rear. Which is true. Which is true. Not all of these are true, but कुछ चीजें सही है इसमें. सैलरी तो सही है. Experience भी सही है. ठीक है? Got it? How do I know this? It's given. The last statement, which is a very important statement, it starts from there, right? वो उधर से चालू होता है. ये last statement ध्यान से पढ़ो. Assuming that a manager with more years of experience always has a higher salary and more and age than a manager with lesser number of work experience. तो comparison करोगे कि ये these 9 people that we have and these last के suppose 9 people if I take, तो किनका ज़्यादा years of experience होगा? The last 9. And what about their salaries? I don't have to look into that table. वो starting वाले 9 का कम salary होगा, and these 9 people at the end will have more salary as compared to the first 9. And same goes with the age. Right? ठीक है, चलो अब क्वेश्चंस पे चलते हैं. So as per the question, it says what is the number of managers of 9 years or less work experience? So कितने लोग हैं 9 years and less work experience में? गलत हो गया. 10 कर दिया आपने. अच्छा, मेरे को इधर से $48, right? See, this is cumulative, right? 9 लोगों को 4 years and less है, and 12 लोगों को 5 years and less है. As mean there are 3 people who have more than 4 years of work experience. The kind of set or the language that we did yesterday. सरल सर ने कल एक ऐसा क्वेश्चन करवाया था ना, वो भी अरिथमेटिक में था. वो 60 - 2 and number of wrong होते n students पे. ठीक है, वैसा ही है. And whose monthly salary doesn't exceed 2.35 lakh. Doesn't exceed 2.35 lakh का मतलब हो गया कि ये वाले लोग हैं. So if I look at this is the larger one, right? There are 48 people over here. There are 48 people over here, and we have 45 people over here. So if I look at the queue from the beginning until 48th person, these are the people who have got less than 9 years, less than or equal to 9 years of work experience. इन्हीं में से अगर मैं स्टार्टिंग से पूछना करूं, how many of them they have a salary of less than 2.35 lakhs per month? तो इन्हीं 48 में से first 45 है ना? So can I say the initial 45 people वो तो already 9 years या less years of work experience है, and they also have a salary which is 2.35 lakh per month से कम. तो ये 45 will become the smaller. It's like intersection set, right? तो ये 45 हो जाएगा, which a lot of you have already answered. तो next पे चलते हैं.
No, Ayushi, we're supposed to have this marathon for 2 days, so we had it yesterday and today is the second day. How many managers of work experience more than 10 years have monthly salary more than 2.5 lakh and are not older than 48 years? Now you have to, look into all the 3 tables. It's also a very, very straightforward question. सतांशु ऐसा कुछ नहीं है कि सैलरी नहीं बताते. तो बच्चा पूछ रहा है, सत्यांशु पूछ रहा है ऐसा क्यों, सैलरी क्यों नहीं बताते? मैं बिल्कुल बताते. बता दो तुम 1 करोड़. 1 करोड़ का चीज है, तीनों का मिला के. सैलरी नहीं बताते, वो जगह होती है, लोग होते हैं, उसके हिसाब से होती है. अब हर एक को थोड़ी ना बता देंगे. हर एक को नहीं बता सकते. पूछ रहा था क्या सैलरी? ना सत्यांशु पूछ रहा था. नहीं, उसने पूछा कि सैलरी नहीं बताते, ऐसा क्यों? व्यूअर्स कम हो गए. कौशल बुलाओ यार, दोस्तों को बुलाओ, बोलो कि लास्ट के आधे घंटे हैं, कोई भी बैठ जाए देखने. सत्यांशु बोलते पापा बोलते हैं नहीं बताते. सत्यांशु पापा बोलते हैं नहीं बताते. चलिए. फर्स्ट वन इज 25, अनदर वन एज इज 40. क्या किसकी बात कर रहे हो? फर्स्ट वन एज इज 25. नहीं, नॉट नेसेसरली. नहीं 25 किधर है? नहीं है. 25 तो है ही नहीं. एंड अनदर वन एज इज 40. Where are you getting 25 from? 40 तो चलो एज इधर को यहाँ पर. Are you reading the column name? Okay, very good. Most of you have answered correctly. Most, not everyone. So is it 16? Is it 9? Is it cannot be determined? Siddhika cannot be determined. Or 131. That's where you guys are. अच्छा, गौरव सर की एज गेस कर रहा. मैं भी सोच रहा हूँ कि बच्चा पढ़ाई कर रहा होगा. क्या मतलब? कौन गेस कर? 25 or 40. Okay, let's solve. How many managers of work experience more than 10 years? More than 10 years. So can I say ये जो total लोग हैं, these 60 people have work experience of 10 or less than 10 years out of 100 years? 60 managers, they have work experience of 10 or less than 10 years out of 100 people. So can I say बाकी जो 40 लोग होंगे, don't look at these numbers. Total 100 में से 60 इधर हैं, तो बाकी 40 होंगे. So can I say out of these 40 people, these are those 40 people who will have more than 10 years of work experience. यहाँ तक ठीक है? ठीक है. So we are done with work experience more than 10 years. Next it says have monthly salary more than 2.5 lakh. Monthly salary more than 2.5 lakh मतलब कि ये. Now this 75 tells us the people who have monthly salary less than equal to 2.5 lakh. तो अपन इधर वाला ढूंढ लेते हैं. मेरे को ये नहीं करना चाहिए था ना. So these are the people who will have monthly salary of 2.5 lakh or less. तो can I say ये 25 लोग ऐसे होंगे who will have a monthly salary of more than 2.5 lakh. अभी यहीं पर रुकते हैं. Let's take a pause here. How many people, how many managers have more than 10 years of work experience and they have a monthly salary of more than 2.5 lakhs? दोनों को satisfy करने वाले, दोनों conditions को, how many people are there? Quick. How many people are there जो दोनों को satisfy करते हैं कि उनका 10 years they have work experience of more than a decade as well as their monthly salary is more than 2.5 lakhs per month. The smaller of these numbers, आप ही सोचो, लास्ट से पूछ रहे हो तो 25 people are raising their hand as in कि मेरी salary 2.5 lakh से ज्यादा है
And when you ask the same thing about their number of years of work experience, last से 40 लोग हाथ उठाते हैं, तो common तो 25 ही होंगे. Okay, good, 25. And are not older than 48 years. Not older than 48 years means 48 years or less. So 48 years or less में हमारे पास ये हो जाएंगे. 91 people have the age of less than or equal to 48 years. So कितने लोग होंगे at the end who will have an age of more than 48? 91 इधर है, 100 इधर है. So can I say there are 9 people? Same question. Starting से end से 40 people were raising their hand, as in they were saying they have more than 10 years of work experience. उसी में से 25 people from the end, एकदम specifically last से 25. हाँ, उन्होंने दोनों हाथ खड़े कर दिए कि मेरी मंथली सैलरी भी 2.5 lakhs per month से ज्यादा है. So I was like, I need the common, right? Because it says 10 years have monthly salary, मतलब इधर भी एंड है और इधर को भी एंड है, सारे ही चाहिए कंडीशंस ना. So I was like, okay fine, लास्ट के 25 वेट करो, बाकी यार जो एक्स्ट्रा जाओ इधर से. From लास्ट के 25 में से, now if I ask you, आप में से कितने लोग 48 years and above age के हो? So they will be saying 9 of them, no? From the end. So 25 में से I'll be like कि 9 लोग या तुम लोग बूढ़े हो ज्यादा, निकलो इधर से. So when they ask them to leave, what kind of people will I be left with? The people, the managers who will have an age less than or equal to 48 years, because more than 48 को तो भेज दिया. So how many people are we going to be left with? 25 minus 9, that is good. लास्ट का नहीं समझा. लास्ट का नहीं समझा. Mateen, what part did you not understand? Mateen, there are 40 people at the end who are like, they satisfy the condition number 1. They have more than 10 years of work experience. Out of these 40 people, this is the end of the queue. Out of these 40 people, last say 25 people are those people who will have monthly salary of more than 2.5 lakhs. Now, out of these 25 people, now we have 9 people whose age is more than 48 years. So can I say this is the component which talks about people having more than 10 years of work experience, a salary more than 2.5 lakhs, and age less than 48 years, less than equal to 48 years. तो ये वाला कितना होगा? If the entire value from here to here is 25 and the value from here to here is 9, from here to here you have 25 and from here to here you have 9. So how much is this leftover part? 16. Got it? Chalo. Next. Among the managers with more than 6 years of work experience but not exceeding 12 years of work experience, how many are older than 38 years? Yes, I believe I repeated, right? देवेश, it looks tricky, it's not. आप आराम से नहीं सेट को लेके फिर बैठना, आज ही बैठना, कल मत बैठना, कल सब निकल जाएगा दिमाग से. आज ही बैठना. Take a break of half an hour, 45 minutes, and then sit with the set again and think. There is no maximizing, minimizing happening. It's more about जो sequence है, उसी sequence में you have to, slice things. वो starting से आपको remove करने people, end से remove करने, you have to take people at the middle, at the end. बस यही है. And how will you decide which part of the queue you are going to consider? It's exactly given in the question and the table. Okay. So among the managers with more than 6 years of work experience, but not exceeding 12 years of work experience, how many are older than 38 years? Straightforward question. Eh? 3 people have answered so far. और कोई?
5, 6 people. Nancy, first option, right? 34, okay. 44, 44A. So people are struggling between first and third. ठीक है? So far, first and third. Okay. Most of you have answered third. Check करते हैं. Let's see. कौन सा? Among the managers with more than 6 years of work experience. देखो, up to 6 तो अपने पास 22 है. But not exceeding 12 years of work experience. Not exceeding 12 years मतलब मेरे को ये भी हटाना है. So can you guys tell me how many people, how many managers do we have here? कितने मैनेजर्स हैं इधर? ये बता दो. How many managers total we have? Total तो अपने पास 100 है. 100 में से इधर कितने हैं? We will remove them. Right? And how many are here? उसको भी हटा देंगे. When we remove these two, we will be left with this. Or there is another method. You know already the cumulative. इसके प्रीवियस वाले क्यूमुलेटिव तक हटा दोगे, आपको आ जाएगा. आपको जो करने का मैंने. Perfect 55. राइट? तो दोनों में से कुछ भी कर सकते हो. So this is 77, right? So this is 77. तो इधर में 23 होंगे लोग after 77. And this is 9 to 22. So this is 22. 23 plus 22, 45 people have been removed. So how many people you are going to be left with? 55. और ये 77 में से 22 माइनस कर दो ना. सेम चीज है भाई. आप एक तो 100 ले रहे हो यहां तक. एक्चुअली मैंने ही बताया कि शायद ये आपको स्ट्राइक किया होगा. सो व्हेन यू टेक 100 एंड इफ यू रिमूव 23, इट्स लाइक कि मत लो ना 100 तक, 77 तक लो. ओके. सो कैन आई से दिस ग्रुप ऑफ पीपल एट द सेंटर, 55 पीपल, दे विल फॉलो, दे विल सैटिस्फाई दिस पर्टिकुलर कंडीशन. ये करेगा? नहीं वरुण, एवरेज का क्वेश्चन है ही नहीं. एवरेज किधर जा रहे? ओके. नाउ वी नीड दोज पीपल हु आर ओल्डर देन 38 years. सो ओल्डर देन 38 years मींस अप टू 38 years तो भाई अपने पास ये लोग हैं. सो कैन आई से दीज आर द पीपल हु आर ओल्डर देन 38 years. अब ये जो 38 years ओल्डर वाले में है, हाउ मच ऑफ इंटरसेक्शन डू वी हैव? Say, it's not about the cells over here. It's not about the rows का intersection. It's about the values का intersection. First 22 तक तो उधर intersection नहीं है. So should I take the intersection of first 22? मतलब if I take the intersection of these two tables में तो 22 माइनस करूं या 33 माइनस करूं पहले? या फिर can I say कि अगर इधर में कहीं पे 22 होता होगा तो ये 22 तो ऐसे भी आपको नहीं लेना है, right? Can we say the extra 11 is something that exists in this particular range, right? It exists in this particular range, but it doesn't exist there. क्योंकि हमें क्या चाहिए? हमें more than 38 years चाहिए. So that 11 should be also removed, जहां तक भी ये remove हो सकता है. Because we need this portion. I don't need the entire thing. मतलब इसका कुछ इसके पहले तक. कुछ पहले तक, ताकि ये इसके साथ मैच कर सके. सो वी हैव 55 ओवर हियर. वो 11 आपको और हटाना पड़ेगा. सो विल बी लेफ्ट विद 55 माइनस 11. एक मेथड, अगर मैं इनको रैंक दे देता हूं इन सबको. हाँ, वो ज्यादा अच्छा हो जाएगा. सो अगर हम रैंक्स दे देते हैं इन सबको, सो सर ने बताया यहां पे यू हैव टू रिमूव फर्स्ट 22. So that means you will have to start from 23rd person up till 77. 23rd से 77 रैंक तक के स्टूडेंट्स को और मैनेजर्स को कंसिडर करना है, राइट? अकॉर्डिंग टू दिस. नाउ इसका चेक करते हैं. इन दिस यू विल हैव टू रिमूव फर्स्ट 33 persons. So starting from 34, I'll remove this. Starting from 34 up till 100 रैंक का चाहिए आपको नीचे तक.
So just find the common ranks. यहाँ से यहाँ तक common ranks कौन कौन सी हैं? So first region is 23 से लेके 77 rank, second is 34 से लेके 100. So common ranks कौन सी होंगी यहाँ पे? Starting from 34 up to 77. up till 77. So starting from 34 up till 77 we have to consider. 77 minus So 77 minus 33, 44 आंसर आ जाएगा. राइट तो रैंक भी आप दे सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस में. rank के basis पर. That's exactly what is happening when they are already sorted on the basis of their increasing in number of years of work experience as well as their age and their monthly salary, which is same as saying they're already ranked, right? ठीक है सर, एक और है क्या? हाँ एक और क्वेश्चन है. यस. Okay, last question. How many managers with work experience between 8 years and 13 years do not earn more than 29.4 lakh per annum? नहीं सीधा 78 नहीं होगा, 77 होगा. वो मिस्टेक से उसने लिख दिया होगा. So what is 29.4 lakh per annum equivalent to how many hundred thousands or what lakh per month? मंथली सैलरी हाँ मैंने एक कैलकुलेशन ऐड कर दिया कि डिवाइडेड बाय 12 मुश्किल हो जाएगा. ये कैसे पता अर्थ है 12 महीने ही होते हैं. सरल सर वाला प्लैनेट हो सकता है. सर और हो सकता है. आंसर कैन नॉट बी है ही नहीं. quick. Varun has answered. Jaydev says second option 45. इधर 45 है ही नहीं. Jaydev? Oh, sorry. You answered this is same as 2.45. Okay. Right. So 29.4 divided by 12 is going to be 2.45. तो मतलब कि ये वाला रीजन है. Okay, this is the last question of this set. One small request to all of you. You can do that. Right now, there are 200 plus students watching. If there is anyone who hasn't pressed the like button, please do that. There are 466 likes and we want 500. Okay, so let's target 500 in the last few minutes. Come on, those who haven't liked it yet, a request, please do like this session. इनको क्या धमकी दिया जाए? 500 लाइक्स कर दोगे तो हम पढ़ाना बंद कर देंगे या हम और पढ़ाएंगे? Okay, people are giving answer as second, fourth, मतलब as in second and fourth. Couple of you have mentioned first as in 11. Okay, so second and fourth. Let's see. So how many managers with work experience between 8 years and 13 years? Between 8 years and 13 years. So ये up to 8 years है, and this is up to 13 years. तो हमें ये लोग चाहिए. So can I say these people are going to be 86 minus 42, which is going to give us 44. There are 44 people who are here who will have the work experience between 8 years and 13 years, and it says between. Between का मतलब होता है 8 भी included नहीं होना चाहिए, 13 भी नहीं होना चाहिए. Right now this 13 is included, right? 13 included हो जाएगा, पर हमें उसका भी टेंशन नहीं लेना. 8 is definitely not included because we started from 9 and we took it from after 13, so that means up to 13 is included. तो उसको अभी हम नहीं सोचेंगे.
Then it says do not earn more than 2.45. Do not earn more का मतलब हो गया they have to earn up to 2.45. तो ये सारे आपको लेने. So like Gaurav sir का approach से अगर चला जाए, so we have rank number 42, we have got rank number 43, then we will have rank number 62, we will have rank number 63 और अपन इसको लास्ट तक लेके चलते हैं 86. ठीक है. I've written down these ranks. Among these ranks, ये monthly salary which is 2.45 lakh और below, वो आपका यहां तक जाता है. राइट? सही है. हाँ, वहां तक जाता है. And the number of people who have work experience between 8 and 13 years is going to start from 43rd and it will go on until 86th. मतलब इस गैप में है. Right? So how many people are there which satisfy both the conditions? जो ग्रीन वाले लाइन का पार्ट में भी है एंड पिंक वाले लाइन के पार्ट में भी है. So how many people do we have? So 62 minus 42, 20. Rank 43 से rank 62. Rank number from 43 to 62, you will get 40. अभी किसी ने बिरयानी कुछ लिखा. If I get into IMS, I'll order biryani for you. अरे Itachi only biryani, क्या कर रहे हो यार? मतलब. But Itachi for me biryani will do. Biryani will do. But ये तो सिर्फ नवीन सर के लिए है सर. मेरे लिए तो है ही नहीं. Sorry Itachi. नहीं, you don't have to send anything. Okay. All you have to do is what? एक thank you चलेगा, बहुत होगा. बिल्कुल. और Thank एक you will like be more चलेगा. than enough. And keep liking our sessions and keep liking us. 17 more likes. Come on. यार आजू बाजू कोई फोन करो यार, मतलब कोई फोन उठा लो. हाँ. भाई बहन पापा मम्मी किसी को उठाओ, वो 500 कर दो. Pick up the phone of your friends. Pick up the phone of your parents. Let's and end it. It's not going to end right now, ठीक है? But whenever we're going to end it, please let's end it on a good note. कि 500 likes कर लिए थे. लो, सरल सर के लिए मैकबुक आ रही है, नवीन सर के लिए बिरयानी आ रही है. If he gets 99.99, who? Dipankar or Saral sir? As 13 years experience was not considered, so shall we consider till 77 managers? No. Kshitij, don't do that. क्योंकि अगर आपने 77 किया ना, तो ये नंबर ऑफ इयर्स ऑफ वर्क एक्सपीरियंस है, दैट डजंट, आपने अज्यूम कर लिया ना कि वो इंटीग्रल वैल्यूज हैं, कि 12 इयर्स का एक्सपीरियंस होगा सीधे 13 का होगा, बीच में कोई ज्वाइन नहीं कर रहा. 13 years and less वाले में you can have 12 years and 10 months, 11 months वाले लोग भी है ना. So how do you know कि these 86 is exactly 13 years वाले? मतलब as in 86 पे जो people are standing, not all 86 are there, right? We have what? We have a total of 9 people who are there more than 12 years of work experience and up to 13. हमें केवल बोला गया 13 years से less चाहिए हमें. तो आप वो मत करना. So don't take up to 77. Yes, Varun, you can watch these sessions again and again, whatever number of times you want to. Okay, these sessions, yesterday's as well as today's session, it's gonna be there on YouTube forever. जब तक YouTube चल रहा है. Kshitij, if the question is asked accordingly, it will be CBD. Question asked accordingly मतलब जो questions आपके आंखों के सामने हैं, इसका आंसर CBD नहीं है, right? If the question had been that they would have specified that years of work experience is always integral, monthly salary are the ones that you see, and age in years that you see, तब तो ये बहुत ही मतलब अप्रोच काइंड ऑफ सिमिलर रहता पर बहुत डिफरेंट टाइप हो जाता है, बिकॉज नाउ यू विल हैव हीप्स ऑफ पीपल एट दैट अ पर्टिकुलर नंबर. इट्स नॉट गोइंग टू बी कंटिन्यूअस एनीमोर. Lovely. Thank you, people. Thank you for showing such love. Number of likes is 500. मतलब बहुत सारे लोग थे जो अभी ज्वाइन किए हैं. Yes. नहीं, लेकिन ऐसा भी हो सकता है लोगों ने ज्वाइन किया है, बट लोगों ने जो ऑलरेडी देख रहे हैं उन्होंने अपने पेरेंट्स का फोन लिया हो, अपने थैंक यू वेरी मच. थैंक यू ऑल ऑफ यू. इसी बात पे मैं गाना नहीं गा रहा. आई बिलीव क्षितिज का जो कहना था, एक सेकेंड मैं पीछे वाले क्वेश्चन पे जाता हूँ. क्षितिज, आई बिलीव सर आप भी बताइएगा, सिंस
here it is written that between 8 and 13. So there may be some people who have exact 13 years of work experience, right? So since we don't know about the number of people who have exact 13 years of work experience, probably क्षितिज सोच रहे हैं कि in that case answer can be cannot be determined. नहीं हो सकता क्योंकि जिनका जो because हमें वो this लेना range ही नहीं है. Yes. इसीलिए. So अगर क्षितिज हम in that case क्षितिज even if we'll take it up till 77, even if we'll take this part up till 77 also, so the common portion is this only. So in any case, like whatever be the number of people who have 13 years of work experience, in every case the answer will be rank 43 से लेके 62 तक. इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं है. पर अगर क्वेश्चन में ऐसा हो जाता कि इस इंटरसेक्शन पार्ट इज गोइंग टू क्रॉस 77, तब दिक्कत आ जाती. ठीक है. All right. I believe it's good. And now we are going to have a dance from Saral sir and a song from Navin sir. Okay. No. Don't worry. इतना अत्याचार नहीं होगा इन लोगों दोनों ही मर जाएंगे एक दूसरे को देख के. नहीं, मैं सोच रहा हूँ इनसे क्या करवाया जाए. मैं ताली हो जाऊंगा सर. One thing, for the next few minutes we have an open session for all of you. Okay, so anybody, if you want to ask any question related to your CAT examination, approach मत पूछिएगा because approach के लिए already गौतम सर ने session ले लिया है. So whatever things that we have not covered in our sessions, if you have any questions from that, please go ahead and ask. Any kind of questions. I mean, in the last few days, आपको कोई भी किसी तरह की अगर some motivational tips, anything that I mean that might be there in your mind, कि क्या करना है क्या नहीं करना है इन दिनों में, कुछ भी किसी भी तरह के सवाल अगर हैं. I mean, नवीन सर मनहारी डांस. ना मेरे ख्याल से तो सबसे बढ़िया है कि पहले तो खुद को यार अपनी पीठ थपथपा लो. 8 hours straight for 2 days each. I mean 8 hours each. Probably I would like to clap for all of you. बहुत बढ़िया. Absolutely. It's wonderful job not done an easy thing. by all of you. Wonderful job done by all of you. All of you, those who are sitting in front of us watching these 8 hours of continuous sessions on 2 days. You can achieve anything now. Okay, someone is asking that I mean pad का size क्या होता है जो आपको writing pad मिलता है. So generally you get those A4 sheets there जिस पे आप लिखते हैं, and you don't have to carry anything apart from your ID and your admit card. उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं लेके जाना अपने CAT के उसमें. You will not be even allowed to take your pen or pencil. हमारी वो ये भी निकलवा लेते हैं अंगूठी भी, कि आप ये भी नहीं पहन सकते हैं. कुछ टाइम के लिए फ्री कर देते हैं. कुछ टाइम के लिए हमें फ्री कर देते हैं. अच्छा महसूस होता है हमें भी. I don't wear any rings. अच्छा कोई वो ऋषभ वो देख लूंगा बस. है ना, अभी देखते हैं ऋषभ उस क्वेश्चन को भी. तो कोई और क्वेश्चंस मेरे ख्याल से अभी आप सबके लिए भी ताली. अच्छा हाँ, बजा दो यार, वहाँ बैठ के ही बजा दो. वैसे तो योर लाइक्स आर मोर देन ताली फॉर अस, मोर ओवर योर लव. 525. यू हैव बीन देयर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम विद ऑल ऑफ अस. ऑफ कोर्स दैट्स नॉट इजी. पढ़ने का इतना ज़्यादा मन करता नहीं किसी का, उसके बावजूद आप लोग बैठे रहे, तो दैट इटसेल्फ इज अ ह्यूमंगस एफर्ट. आई एम श्योर इट इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट. DILR सेट्स कहाँ से करने हैं अभी इन दिनों में? तो मेरे ख्याल से कुछ मत सोचो, जो कर चुके हो वो कर चुके हो. अब कुछ भी नया करने का नहीं है. ठीक है, जो भी आप लोगों ने तैयारी अभी तक की है, आई थिंक दैट्स मोर देन सफिशिएंट. Joydeep, mask and sanitizer like totally for your safety. I believe you must carry. मतलब it's not the requirement of CAT. You will be able to take CAT. You will be able to write CAT examination even if you don't have sanitizer or mask. बट मैं सजेस्ट करूंगा कि मास्क पहन के जाओ because COVID is not 100% over. Okay, you might have to take other examinations after CAT. So don't take a risk. Mask पहन के जाओ, sanitizer लेके जाओ. Keep sanitizing your hands. There is no harm in doing this thing. Someone is asking कि वॉच लेके जा सकते हैं कि नहीं? आपको वॉच लेके नहीं जानी है वहाँ पे. ठीक है, एंड यू विल बी प्रोवाइडेड द लॉकर आउटसाइड. वो ये भी पूछा था. ज्यादातर जगह होता है लॉकर वैसे 99.9% ऑफ द प्लेसेस. बिकॉज आप कुछ नहीं लेके जाओगे तो अपनी कार तो लेके जाओगे, उसकी चाबी तो होगी दैट यू हैव टू कीप आउटसाइड. तो मतलब उसके लिए मिलता ही है हर जगह पे लॉकर. आप लोगों को लॉकर मिलता है, अदरवाइज पाउच मिलते हैं. दे विल कैरी दिस. ऑल्सो एक और चीज मैंने जो नोटिस की थी, बेल्ट्स जो होती है लोगों ने पहनी होती है, वो भी बेल्ट भी निकल.
तो मतलब ट्राउजर भी पहन के जाना, तो थोड़ी सी जो ठीक साइज की हो, टाइट हो। वहां बेल्ट निकलवा ली तो एक हाथ कभी लगे ट्राउजर पे ही है और एक से लिखे जा रहे हो, वो कर नहीं पाओगे। तो बेहतर ये अपना करके जाना। पेड लॉकर नहीं होता है दीपांकर, फ्री लॉकर जनरली वो देते हैं पेड वहाँ पे। लॉकर विल हैपन इफ द लॉकर इज फुल या कुछ ऐसा इश्यू हो गया, तो फिर आपको सामने वो छोटे छोटे दुकान वाले वो 100 रुपए लेंगे और आपकी एक चाबी रखेंगे बस, हाँ, और वो भी रिस्की। and, रिस्क हो जाता है वो। हाँ, वो रिस्क हो जाता है। सो यू जस्ट कैरी एज मेनी लेस थिंग्स एज पॉसिबल। बेल्ट मत पहन के जाओ अगर पॉसिबल हो आपके लिए। Make sure that while you are entering the examination hall, you have only the necessary documents: your Aadhaar card, your identity proof, that's it, your admit card, that's it. अनुजा सिंपल हेयर बैंड विल डू, उतना नहीं है। खुले बालों में और ज्यादा दिक्कत है उनके हाँ, तो पॉइंट ऑफ स्मृति व्यू से। कार नहीं है तो इट्स गुड यार, मतलब कीज कैरी नहीं करनी पड़ेंगी आपको। सो यू विल बी रीचिंग योर सेंटर्स ऑन योर ओन यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट और व्हाटएवर। सो दोज हु विल बी कैरिंग देयर ओन कार्स एंड दे विल हैव द कीज विद देम, so those keys will have to be kept outside. So ऐसा नहीं है एग्जामिनेशन सेंटर के बाहर रखना होता है, एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर घुसने के बाद भी there is a provision to keep your keys there as well. अबे in some of the centers they do ask you to remove your shoes, so वो कंप्लीटली है। तो सॉक्स तो डेफिनेटली पहन के जाना, सॉक्स नहीं उतरवाएंगे, शूज विल बी रिमूव्ड। ठंड रहेगी, हालत खराब हो जाएगी, फिर आपका ध्यान नहीं रहेगा एग्जाम में। बहुत ठंड हो जाती है कभी कभी एग्जामिनेशन हॉल में। Yes, trousers are allowed as a part of dress code, no problem. रादर एक चीज है स्पेशली फॉर दी गर्ल्स, Slippers कि ज्वेलरीज अलाउड नहीं है, और कई बार ना गर्ल्स को याद ही नहीं रहता कि मैंने नोज ज्वेलरी पहनी है, नोज पिन है, या फिर ईयर रिंग्स पहने हैं, क्योंकि दैट्स ए मतलब पार्ट ऑफ देयर लाइफ, वो रोज ही पहनते हैं तो याद नहीं रहता है। तो ध्यान रखिएगा, इवन नोज पिन्स वुड नॉट बी अलाउड, राइट। तो वो वहां जाके परेशानी ना हो, बेहतर ये दिमाग में रखिएगा कि ईयर रिंग्स हैं, नोज पिन है, ये आपके रिंग्स हैं, ब्रेसलेट्स हैं, या की चेन है, सो या फिर सॉरी नेक चेन्स हैं, सो वो सब अलाउड नहीं होगी। यस देवांशी, वाटर बॉटल आप लेके जा सकते हो, मतलब दैट विल बी अलाउड। वाटर बॉटल है, हैंकी है, वो आप लेके जा सकते हो। एंड वाटर बॉटल भी ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, ओके, उसके ऊपर कोई रैपर नहीं होना चाहिए। सो इट्स बेटर ये ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल्स लेके जाओ। डोंट कैरी दोस मिल्टन्स और एक्सपेंसिव वाटर बॉटल्स। बिस्लेरी उठाओ, उसको ऊपर से कवर हटाओ, खत्म, और उसमें पानी लेकर जाओ। जैकेट नहीं पहनना स्मृति। एडमिट कार्ड में, हाँ देवेश कुछ पूछ रहे हैं, एडमिट कार्ड में सेम फोटो स्टिक करना। हाँ देवेश, ये ध्यान रखना, एडमिट कार्ड में आपको सेम फोटो स्टिक करना है जो आपका अभी ऑनलाइन वाले फॉर्म में है। और अगर आपके पास सेम फोटो नहीं है तो कोशिश करना कहीं से मिल जाए, परेशानी ना हो। फिर भी ना हो तो एक्स्ट्रा 2-3 फोटोज लेके चलना अपने साथ। जैकेट तो पहन सकते हैं स्मृति, दैट्स नॉट ए प्रॉब्लम। जैकेट की जगह बेटर है स्वेटर पहन के चले। हाँ स्वेटर पहन जाओ। Tala, definitely, but how much are you scoring this year? That matters, right? And people who are answering, who are asking कि अब last moment पे quant का कुछ बता दो, LRDI का बता दो, कुछ है नहीं। See, if you guys are already scoring good and suddenly there is a drop, आप अभी कुछ नहीं कर सकते। Don't panic, ठीक है? अब ये नहीं करना है कि लास्ट के 2 दिन आप सॉल्व कर रहे हो। गौतम बाबा का आप सेशन देख लो, उधर हमारे ही चैनल पर है। एंड इट हैपेंड व्हाट यस्टरडे, 2 days ago, संडे को हुआ है। And it was a proper session where he had discussed everything in detail कि क्या आपको करना है, क्या आपको नहीं करना है। Just follow it, okay? It may sound a little absurd for some of the things that he has said, but trust him, trust us. अभी आप जिस लेवल पे हो, randomly it will jump by a huge. It's not going to happen before the exam. It will happen on the day of the exam. Exam लिखते वक्त आपका jump होगा, वो अभी नहीं होगा। अभी कितना भी आप पैनिक करोगे तो। सो वॉट एवर यू आर रिवाइजिंग, वॉट एवर यू आर प्रैक्टिसिंग, थोड़ा थोड़ा करते रहो, पैनिक मत करो। क्वांट में यही है कि भाई डोंट सॉल्व न्यू क्वेश्चंस, जस्ट रिवाइज, लुक एट द फॉर्मूलाज, शॉर्टकट्स देखो। एंड सम ऑफ यू आस्क्ड, अभी जो सेशंस हम लोगों ने लिए यस्टरडे एंड टुडे, क्या लेवल था? ये एग्जैक्ट कैट लेवल वाले हैं। I don't believe even a single question was difficult than what you can expect in CAT, and it was even easier than what you can expect in CAT. Actually, few questions of arithmetic जो आसान हो सकते थे, जो अलजेब्रा के जनरली रहते, वो हमारे नहीं हुए, और वो हम करते तो आप भी बोलते कि क्या सर ये कोई क्वेश्चन है, राइट? तो वो लेवल के भी आते हैं। Some of the students are asking कि पेन लेके जाना है या फिर नहीं। No, don't carry pens. They will be providing you pencils or pens inside. Okay. Some are asking कि inhaler. So probably like if you Inhaler are allowed, asthmatic, so inhaler is allowed, definitely. Washrooms will be there inside. So like in the middle of the examination, if you want to use washroom, yes, you will be allowed to use washroom. तो अपना टॉयलेट सीट लेके मत जाना, वॉशरूम उधर है। नहीं शुभेंदु, रहने दो, धक अब मत करो।
I think we are also releasing some videos almost every day now. I mean small videos जिसमें एक वीडियो हम लोग शायद चेकलिस्ट का भी डालेंगे कि क्या क्या आपको लेके जाना है क्या क्या नहीं. जस्ट कीप फॉलोइंग अस, वो आपको दिख जाएगा उस पे वीडियो में ही कि किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है. एज समवन इज आस्किंग कितना पहले जाना है हमें सेंटर पे. सो जो उन्होंने रिपोर्टिंग टाइम दिया है, जस्ट ट्राई टू रीच बाय दैट टाइम. आई मीन डू नॉट थिंक कि नहीं रिपोर्टिंग टाइम तो 1 घंटा पहले का हम बैठ के क्या करेंगे. सो आई मीन इफ़ यू डू नॉट रीच बाय द रिपोर्टिंग टाइम, दे हैव ऑल द राइट्स टू से नो टू यू कि भैया आप नहीं आए रिपोर्टिंग टाइम पे तो आपकी गलती है. सो डू नॉट गिव देम द अपॉर्चुनिटी टू डू दिस. कोशिश कीजिए आप अपने रिपोर्टिंग टाइम तक पहुंच जाएं, राइट. और मेरे ख्याल से ये सारी चीज़ें ध्यान रखना कि कुछ भी ऐसी चीज़ें लेके मत जाइएगा, क्योंकि वो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है. वंस यू रीच देयर एंड लेट्स से यू आर ऑलरेडी इन अ हरी, लेट हो चुके हो थोड़ा सा, सडनली याद आया अरे मेरे पास तो ये रह गया, मैं तो कड़ा पहन रखा कोई. आई मीन सम पीपल वेयर ए कड़ा, दैट्स नॉट अलाउड इनसाइड. सो किसी भी तरह की मेटेलिक चीज़ें जो हैं, या फिर बेल्ट है नहीं याद रही और आप पहन के चले गए, कॉइन्स हैं जो आपके पास रह गए, तो काफ़ी इन चीज़ों के लिए मना कर देते हैं. यू कांट टेक अ पेन और समथिंग. सो कीप दैट इन माइंड. टाइम से पहुंचिए ताकि कोई गड़बड़ भी हो तो वापस जाके कुछ उसका कर सको, बट डू नॉट बी लेट, राइट. चेक योर सेंटर्स एड्रेस अ डे बिफोर. एक बार चेक कर लो गूगल मैप्स पे जाके कितना टाइम लगता है, कहाँ पे सेंटर है, और जिस टाइम पे आप जाते हैं उस टाइम पे चेक करना. मतलब अगर आपका एग्जाम है लेट्स से दिन में 11:30 बजे, right, and sorry 12:30 बजे, and you have to reach there by 11, so that's the peak time. Possibly you might have a traffic there. आपने रात को चेक करा 10 बजे, आपको लगा है तो 30 मिनट्स का रास्ता है, संडे सोच के मत निकलना, और सुबह निकले तो एकदम से 70 मिनट्स दिखा रहा है. सो दैट माइट बी पॉसिबल. एग्जैक्टली उस टाइम पे चेक करना ताकि ये सारी चीजें ध्यान में रखना. लास्ट टाइम हमारे सेंटर के बाहर भी बहुत ज्यादा भीड़ थी, बहुत भीड़ थी. सो इट वाज लाइक ह्यूज ट्रैफिक जैम आउटसाइड द सेंटर, सो इट वाज गेटिंग डिफिकल्ट टू पार्क द कार एज वेल. और हमारी तो वैसे नहीं लगती, हम तो नहीं डरते क्योंकि हमारे लिए वो इम्पोर्टेंट नहीं है, आपका करियर का सवाल है. डोंट मेक दैट मिस्टेक. सो मेक श्योर दैट यू रीच वेल बिफोर टाइम. Okay, people are asking tips for slot 1, slot 2, slot 3. So there is no extra tip. Whatever we are saying in union, you must follow all these things. Tension नहीं लेनी है. One is asking कि examination hall जो fear होता है उसको कैसे हम निकालें. तो कुछ नहीं, किसी को मत देखो. हाँ वरुण, just be calm, just be on your own. किसी और को मत देखो, किसी की बातें मत सुनो. कोई रिवाइज कर रहा है लाइन में खड़ा होके, कोई फॉर्मूले की बात कर रहा है, नो नीड टू हियर ऑल दोस थिंग्स. एग्जाम सेंटर के बाद तो सब कर रहे होंगे. डोंट लिसन. मैं तो कहता हूँ कि एक अपने साथ ना न्यूज़पेपर कैरी करो व्हाइल यू आर स्टैंडिंग इन द क्यू. जस्ट कीप रीडिंग न्यूज़पेपर, एंड जहां पे भी वो न्यूज़पेपर फेंकने के लिए गए उस न्यूज़पेपर को वहीं पे छोड़ दो. सो जस्ट लाइक बी ऑन योर ओन, बी व्हाटएवर, लाइक डोंट लिसन टू एनीवन एल्स. ओके. ये बहुत लोगों को डाउट है, मतलब बहुत लोग पूछते रहते हैं कि स्लॉट 3 डिफिकल्ट आएगा क्या, स्लॉट 2 डिफिकल्ट आएगा क्या. ये बहुत बिल्कुल अननेसेसरी बातें हैं. फालतू के रूमर्स भी बच्चे आपस में करते रहते हैं कि लास्ट ईयर तो ये इसमें टफ आया था स्लॉट 2 में, स्लॉट 3 में बैंगलोर ऐसा करता है. नो वन कैन प्रिडिक्ट इट बिफोर हैंड दैट व्हाट इज गोइंग टू हैपन अपार्ट फ्रॉम द कैट अथॉरिटीज. इफ यू हैव एनी चैनल देयर तो वहां से बात कर लो, वो लोग बता देंगे, लेकिन बाहर कोई नहीं बता सकता. और अगर कोई कह रहा है तो झूठ बोल रहा है, राइट. देयर इज नो सच पैटर्न कि कौन से पेपर में क्या डिफिकल्ट आएगा. किसी में क्वांट डिफिकल्ट आ सकता है, किसी में वर्बल, किसी में LRDI. बट ये एक चीज ध्यान रखना, इफ इट इज डिफिकल्ट फॉर ऑल द पीपल ऑफ दैट स्लॉट, एंड देयरफॉर इट विल बी नॉर्मलाइज्ड हायर. यू विल गेट एक्स्ट्रा मार्क्स फॉर इट, राइट. सो आई हैव सीन पीपल लास्ट ईयर, जो मेरा स्लॉट था LRDI आसान था, तो जिस आदमी का 60 स्कोर था उसका 54 मिला. फाइनली स्कोर कम कर दिया. दूसरे में जिसका 48 था उसका 52, 53 मिल गया. सो दैट हैपेंस. तो प्लीज कीप दैट इन माइंड. ये नहीं होता है, आपको लोग ये चिंता नहीं करनी है कौन सा स्लॉट मुश्किल है, कौन सा स्लॉट आसान है. दे ऑल कैन कम रैंडमली with any difficulty level. Just take out these things from your mind and chill now in these few days. And my voice of cricket, watching 11:30 first glimpse of cat advisable to watch for slot 2 या 3 के. देखो slot 2 वाले तो देख नहीं पाएंगे. 11:30 आप एंटर कर रहे होगे, और ये सब चीज पे ध्यान भी नहीं देना उस समय, राइट. पहले तो एक बार घुस जाओ. वो होता है ना कि when you are you're traveling by air, एरोप्लेन में बैठना है, एक बार सिक्योरिटी चेक इन हो जाता है तब जाके आप रिलैक्स होते हो, जब तक गेट तक नहीं पहुंचते. सेम चीज इधर भी है. सो उसके पहले कुछ भी हो रहा है, किसका कॉल आ रहा है, क्या हो रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है, राइट. स्लॉट 3 वाले, इफ यू आर नॉट ट्रबल्ड बाय रूमर्स और इफ देयर इज अ सर्टेन चेंज इन द प्लान्स, ये आपके नेचर में अगर है कि आपको घबराहट नहीं होती, यू जस्ट टेक इट द वे दे कम. लाइक हाँ ठीक है, चलो ऐसा कुछ होने वाला है तो वो अपना देख लेंगे एग्जाम हॉल में. इफ यू आर दैट काइंड ऑफ पर्सन देन डेफिनेटली वॉच इट. अदरवाइज अगर आपको डर लग जाता है छोटी छोटी बातों से,
कि अगर उस 11:30 में हो गया कि LRDI वाज वेरी डिफिकल्ट इन द फर्स्ट स्लॉट एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर, या लास्ट ईयर जब बैंगलोर ने कराया था, ये सुन के अगर आपको डर लग जाएगा, सोच लो, तो मत देखो। और ऐसे टाइम पे होता ही है, जब आदमी डर रहा होता है तो रस्सी भी सांप जैसी नजर आती है। सो व्हेन समवन वुड बी टेलिंग यू कि यार मेरे में तो LRDI डिफिकल्ट आया, लेकिन क्वांट बहुत टुच्चा था, बहुत आसान था, वर्बल आसान था, योर फोकस वुड बी ऑन LRDI कि वो मुश्किल आया था, एंड यू वुड बी लाइक कि नहीं मेरे में भी वही मुश्किल आएगा और मेरा तो वही वीक है, सो आई एम गोइंग टू गो डाउन, अब मेरा तो क्या होगा क्या नहीं। यू विल नॉट लिसन टू द पॉजिटिव थिंग्स बिकॉज यू आर ऑलरेडी अफ्रेड ऑफ दोज थिंग्स। दिस हैपेंस विद द पीपल। सो इफ यू आर कॉन्फिडेंट, so then look at the positive things and then move ahead. Do not look at the negatives. हर पेपर में कुछ मुश्किल कुछ आसान तो आएगा ही आएगा, तो ये मत सोचना उसका वो मुश्किल है तो मेरा भी मुश्किल है, और जो उसका आसान था वो मेरा मुश्किल आएगा ही आएगा। सो दिस इज नॉर्मली दैट इज देयर विद अस व्हेन वी आर ऑलरेडी इन अ फियर ऑफ इट, राइट। सो बेहतर तो यही है कि ना करो किसी से बात, ठीक है, पता ही मत करो, सीधा जाओ अपना एग्जाम दो, डोंट वरी, जस्ट इतना पूछ लेना कितने कितने क्वेश्चंस आए थे, सो दैट यू कैन जस्ट मेक सम स्ट्रेटेजी बिफोर हैंड कि क्वेश्चंस कितने थे, बाकी क्या था अंदर, क्या नहीं था, क्या डिफिकल्ट था, क्या आसान था, लीव इट फॉर द पेपर एंड डिसाइड देन एंड देयर। ओके, सो आई थिंक दैट शुड बी ऑल। एक स्टूडेंट ने पूछा है कि लाइक सुबह, लाइक इफ यू हैव फर्स्ट स्लॉट एंड यू आर नॉट हैबिचुअल ऑफ वेकिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड यू हैवंट डन एनीथिंग अप टिल नाउ, so make sure for the next 5 days you are sleeping early at night and waking up at 6:30 or whatever time you are planning to wake up on the day of the examination. So let's say if you have first slot 8:30 पे exam start हो जाएगा, reporting time is I believe 7:30 or 7 o'clock. 7:30. So you'll have to leave your house at 6:30 or whatever. So whatever time you're planning to wake up on 27th of November, for the next 5 days, make sure that you are waking up at that time. This is point number 1. To wake up early, you'll have to sleep early. You have to tune your body according to that. So this is the second thing that you must do. The third thing, your slot is starting from 8:30 to 10:30. So make sure that you are solving some questions, you are practicing some mock papers. Probably mock paper last के 5 दिनों में एक या दो mocks लिख सकते हो. But if you are doing some revision kind of thing in these last 5 days, so make sure that you are occupied, you are doing something, you are solving some questions from 8:30 to 10:30. So body clock अपनी change कर लो in these next 5 days. ओके एवरीवन, आपसे दो गुजारिश है लोगों की, एक तो एपी का क्वेश्चन और एक गाना। गाना नहीं चल रहा। अरे सुना, गाना चल इतना सकता है कह रहे हैं लोग तो कर। इस टाइम पे तो सर गाना important आपने है। लास्ट वाले उस सेशन में जो हमारा हुआ था उसमें कितना अच्छा डांस किया था, स्टेज मैंने डांस किया था हाँ। सर, तब सर वो कुछ और भी साथ में था ना। डांस तो खुद हो गया था। ओके, क्विक, Okay. see, this is the max you will get. One is the AP that you have, जैसे कि अगर ये 2 हो गया, फिर ये 5 हो गया, 8 हो गया, and then you have got 11, then you have got 14, and this continues. तो इसका जनरल टर्म अपन कैसे लिखते हैं? वो उसका पूछ रहा है डिफरेंस है एपी में। हाँ, वहीं पे जा रहा हूँ, तो मैं पैटर्न बता दूंगा उसका। So अभी right now the difference is 3. The difference is 3, right? Plus 3, as in one term minus the previous one. So how do we write this general term? General term अपन लिखते हैं, you write down this 2, you write down this 3. ये पहला वाले बस, only the first values. Forget about the subsequent values. यहाँ 2 लिखोगे, यहाँ प्लस करोगे, यहाँ पे आप लिखोगे n-1 upon 1. 1 होता है, 1 फैक्टोरियल होता है, 1 ही होता है ना। ये नॉर्मल एपी का होता है। What if I have AP level 2? Level 2 बोले तो the difference is an AP, right? पहला वाला मतलब पहली बार डिफरेंस लिया, कॉमन डिफरेंस बन गया। राइट नाउ the values that I'm going to take, they are not going to be in AP. उनका डिफरेंस AP में आने वाला होगा अभी, ठीक है। सो AP लेवल 2 की बात करते हैं। So let's take the values. Suppose this is 1, and then you have got 3, then you have got 8, and then you have 16, and then you have got 27. And if this continues, now if you look at the difference, this is 2, the difference is 5, the difference is 8, the difference is 11. ये constant तो नहीं है, this is not common difference. तो एक बार और difference ले लो, 3, 3, 3. अब क्या करोगे, आप बस पहले नंबर पे ध्यान दोगे, बाकी सबसे कोई लेना देना नहीं है। इसका जनरल टर्म हो जाएगा आपका पहला नंबर, दैट इज 1, प्लस नेक्स्ट नंबर 2, प्लस
3। ये लिख लो पहले आप, यहां तक कोई दिक्कत? पहले वाले नंबर्स लिख लो, एंड देन दिस वन इज गोइंग टू बी n-1 upon 1. This one is going to be n-1 into n-2 upon 2, multiplied of course. And you can use this for nth AP, nth level AP. मैं इसको level AP इसलिए बोलता हूँ कि मतलब कितने लेवल पे जाके the difference is going to be constant, as in common difference बनता है। ठीक है आयुष, I hope now this is fine, right? उस पे समेशन लग जाएगा। हाँ, सम ऑफ टर्म्स निकालना तो समेशन कर देना। ये याद रखना कि लीनियर इक्वेशन गिव्स यू एपी लेवल 1, क्वाड्रेटिक गिव्स यू एपी लेवल 2, क्यूबिक गिव्स यू एपी लेवल 3 एंड सो ऑन। सो 2 रिक्वेस्ट में से एक रिक्वेस्ट मैंने कवर कर लिया। चलो, थैंक यू एवरीवन। देखो, अगर वायरल नहीं करना है, वायरल अगर नहीं करना है तो नहीं सुना आ रहा है, और अगर वायरल करना है, नवीन सर की रिकॉर्डेड आवाज में गाना मालूम चला कैरी मिनाती सब में सारे के सारे वो डालते हैं ब्लॉग, वो मेरे से शुरू हो रहा है। चलो एक बार लास्ट टाइम सबको गुड बाय कह दें। All right, people. So all the best from our side to all of you for your examination, for your future, for your careers. All the best, everyone. Do good, have good. We are sure that you have, done a lot of hard work in this 1 year. तो उसका एक बढ़िया सा नतीजा निकलेगा on 27th of November. Just stay confident. Keep that in mind. You have to stay confident, and definitely things are going to be good for you. Definitely. Okay. Good luck, everyone. Okay. Bye bye. Signing off now. चलो, bye bye. Okay. Bye bye. All the best.